Hello friends, hello and welcome everyone. स्वागत समस्तंकु आज important session को welcome to this fantastic session my dear friend. Good evening समस्तंकु आरंभ रो गोटे निवेदन. Just I want to reach maximum aspirants जो माने OSSTET एग्जाम दवा को जाउछंती, B.Ed एंट्रेंस दवा को जाउछंती एवं all teaching exams पाई. बहुत दुख लगुची जेतेबेले गोटे सेशन आसुची यू आर आस्किंग फॉर सर एई एग्जाम पाई करंतु से एग्जाम पाई करंतु व्हेन pedagogy class मु आणुची सेतेबेले बी श्योर इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम B.Ed टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस टीचर एजुकेटर नेट. बी श्योर and this session is going to be very important for all of you. Just समस्ते पूरा ध्यान दबो ए सेशन रे काहे बहुत कष्ट रे गोटे सेशन आनिबा पई बहुत परिश्रम करबा को पड़े, बहुत माइंडसेट करबा को पड़े, बहुत टाइम बाहर करबा को पड़े, बहुत काम भीतर. So hope you will understand and we will make this session a mega session and ए सेशन रे बहुत किछि सिखिबा, पूरा पेडागोजी को पाखरु जानिबा. जेमिति पेडागोजी रे जेतिकिटी क्वेश्चन आसीबो से जो लेवल रो भी क्वेश्चन आसो हमें सक्सेसफुली क्लियर करिबा, क्रैक करिबा एंड पेडागोजी हमरो स्ट्रांग केमति हो. So this session is specially designed in order to cover everything that is there in pedagogy. So या पर मु बेसी किछि कहबिनी, मु केवल समस्तन को अनुरोध करिबी डू शेयर विथ योर फ्रेंड सब ग्रुप रे, स्टेटस रे, सोशल मीडिया रे जोट भी अच्छो डू शेयर इट सो दैट ए जो सेशन चलिबो वर्तमान ठू इट विल क्रॉस मिडनाइट, मध्य रात्रि को क्रॉस करके आगु को जीवो, गोटे दिन रु आ गोटे दिन पर्यंत जीवो, संध्या 6 रु राति केते हबो ठीक नाही. तेणु एही सेशन रो इंपोर्टेंस को समस्त बुझो and stay connected. Thank you for the support. समस्त आसी जाइजो, समस्त को धन्यवाद. रेडी हो जाओ, चलो तो स्टार्ट करबा जो सेशन. रिलैक्स समस्त पूरा भल से सिखिबा, पूरा बेसिक रु पूरा एडवांस पर्यंत प्रैक्टिस भी करबा, थ्योरी भी, थ्योरी विथ प्रैक्टिस. कौन कहूछ प्रस्तुत पूरा निया लगेबा पई रेडी. सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स प्रथमे व्हाट विल बी यस यस फ्रेंड समस्त रेडी पूरा. तो आम जो आमर जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेटा को डिस्कस करबा एवं तापर आगु को बढ़िबा. तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रे मु कहउतली क्वालिफाइंग मार्क्स कोन और नो नेगेटिव मार्किंग आमे जानि छे 45% रही क्वालिफाइंग मार्क्स बा 68 मार्क्स आउट ऑफ 150. ओके क्लियर. एंड समिति 35% बा 53 मार्क्स अछि आउट ऑफ 150 फॉर SC ST PH एंड SCBC कैंडिडेट्स. सो दिस इज वेरी क्लियर. एतिकी हमरो टारगेट एतिकी हमको अचीव करिवार अछि, या टू अधिक हमरो दरकार नै. दैट्स इट. एंड वैलिडिटी होची लाइफ टाइम, एतरे कोनोसी भाबिबार नै. अपर एज लिमिट पर्यंत बा लाइफ टाइम पर्यंत यार वैलिडिटी रही छै. ये रहिला कथा. तापर सिलेबस, सिलेबस रे हमें आज कवर करबा को जाउछे OSSTT रो कंप्लीट एंटायर सिलेबस. एंड ये पूरा हेवी वेट जोटा कि हमें कहउछे 50 मार्क्स. ये जो 50 मार्क्स रहउची, रिमेंबर इट इज वेरी इंपोर्टेंट. 50 मार्क भितर हमें केवल OSSTT रो सिलेबस नुहे, ता सहित CTET OTET टीचिंग एग्जाम सब प्रकार रो जूनियर टीचर, SSD टीचर, LTR OAB RHT रु धरिकी सब प्रकार रो टीचिंग एग्जाम्स को हमें कवर कर दबा. बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल CDP सिलेबस फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, TET B.Ed एंट्रेंस सब थी पाए. राइट. चलो ठीक अच्छे. थैंक यू समस्त सहित आउ थे शेयर कर दियो सो दैट समस्त पुणी आसी जिवे जो माने जॉइन करि पारि नाहंती. ओके ठीक अच्छे. तो आमे आज कौन करिबा,
आज जो सेशन रो लंबा सेशन रोम टोटल एंटायर जिनटा को कवर करदे एंटायर जिनस कंप्लीट आइडिया आसीज सो दैट आम इजिली आमर जहाँ टार्गेट अच्छी जो एग्जाम अच्छी ताकू क्रैक करने को आमको कहीं अटकई पारे ना एटलिस्ट फुल मार्क सीडीपी रे स्कोर करिबारु कहीं अटकई पारे ना। सो लेट अस बिगिन आमर जो सिलेबस अच्छी से अनुसार आम जा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मु स्टार्ट करी थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट तापर अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस लर्निंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग क्रिटिकल पेडागोजी ता सहित एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी रही सेमती एजुकेशनल मैनेजमेंट अच्छी एसडीपी अच्छी स्कूल डेवलपमेंट प्लान स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट एसबीएम सेमती असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रहिला असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड लर्निंग टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन असेसमेंट। सो ये हूँ तुम सिलेबस सब बड़ सिलेबस पेडागोजी एंड या भितर एग्जाम रे टीचिंग एग्जाम्स भी आसे। सो बी रेडी ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपोर्टेंट सेशन। समस्त को स्वागत एक्सप्लोरिंग गोल्स यूट्यूब चैनल को जो मैंने नुआ अच्छा निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने को भूलबनी एंड आज जो सेशन रही स्टार्ट करूँ डेवलपमेंट रु ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रु स्टार्ट करी एंड आगे को बढ़ी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम पढ़ा फर्स्ट पार्ट रे तापर आम थियोरीज को जीवा। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट। सो आसी जाओ समस्ते तापर आम पीवाईक्यूज भी करवा आज सेशन रे एमसीक्यू एनालिसिस भी करवा एंड सब प्रकार जहाँ रिक्वायरमेंट तुम अच्छे एग्जामिनेशन क्रैक करने से सब जिन डिस्कस करने को जाऊँ। ओके सो फ्रेंड्स हाँ समस्ते टिके फ्रेंड्स मान को काटी दियो पुणी थोड़े एंड डेवलपमेंट एंड डिबेट्स प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा एंड तापर आम डिस्कस करवा पियाजेंकर डेवलपमेंट थ्योरी आम डिस्कस करवा आज डिस्कस करवा आम सबू कौन आमर जहाँ थ्योरीज अच्छी से सब को डिस्कस करवा एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ ही दरकार थिला स्टार्ट करवा आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रु तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड लेट्स बिगिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रु जहाँ क्वेश्चन आसो इजिली एनालिसिस करके तुम मैंने करि परिबो। देख प्रथम जिनस हूँ ग्रोथ कौन आउ डेवलपमेंट कौन आउ से दीटा भितर डिफरेन्स कौन डिफरेन्शिएट करवा निहाती दरकार। को टाइप रही क्वेश्चन आसुची इनक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम ग्रोथ टा होची क्वांटिटी रो परिवर्तन टा क्वांटिटी बा परिमाण रे परिवर्तन से फिजिकल लाइक ग्रोथ हाइट साइज शेप बॉडी ऑर्गन्स रो जदी बड़ होउची बा हाइट बढ़ुची साइज बढ़ुची ये होउची क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड कैन बी मेजर्ड मेजर करी हबो मेजरमेंट रे आसीबो। ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और ए पर्टिकुलर एज पर्यंत चलिबो एंड तापर रही जिवो। बट देखो फ्रेंड्स डेवलपमेंट रे कोन होउची डेवलपमेंट टा फिजिकल हे पारे सोशल हे पारे इमोशनल मोरल हे पारे। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दीटा जाक हबो क्वालिटेटिव भी हबो एंड क्वांटिटेटिव भी हबो। इट टेक्स प्लेस टिल डेथ पर्यंत हुए एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल प्रति इंडिविजुअल रो रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग पैटर्न इज सेम मु बारंबार कहूची कोन सेम देखो एग्जाम रे भी आसीबो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सेम बट रेट इज डिफरेंट। सो पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो करे जने जन्म है तो इन्फेंसी तापर अर्ली चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड ए हिसाब रे ही जीवो। सो द पैटर्न इज द सेम बट रेट इज डिफरेंट कि आगो कथा कहवा शिखी गला कि टिके परे कहला कि आगो जिनस को कैच कर देला बा बुझी गला कि टिके परे बुझिला कि आगो चलीबा शिखी गला टिके कि परे चलला दैट्स इट एंड डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट भितर ये वीडियो पर तुम पढ़ा दरकार नहीं दिस विल बी द बेस्ट एंड या परे तुम केवल प्रैक्टिस कर एंड मुझे आज प्रैक्टिस करेबी तुम मन ओके। सो फ्रेंड्स देखो ग्रोथ कौन ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव इन नेचर डेवलपमेंट कौन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर बहुत आसिला। चलो टर्म ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस लाइक हाइट साइज लेंथ वेट डेवलपमेंट होची ओवरऑल चेंजेस राइट overall changes in a physical organ or the structure that results in improved functioning of the physical organ. So it has la overall change, it has la physical change.
Growth is physical change, development is overall change. Growth is purely physical in sense, development is overall, that is physical, mental, emotional, social, moral or any other kind of ame koi pariba. So development re sabu jinso asibo, right? Growth is only a part of developmental process, किंतु डेवलपमेंट इज ए कम्प्लेक्स एंड कंप्रेहेंसिव प्रोसेस. सब एटा गोटे क्वेश्चन आसे एमसीक्यू, या भितर 1000 एमसीक्यू लुचिकी अच्छी फ्रेंड्स. सो कंसंट्रेट पूरा रहिबो जदी या परे पढिबा को पड़िबोनी. जदी कंसंट्रेशन पूरा रहिबो ए टाइम रो जदी यूज पूरा कलो ताहले सेकंड चांस सेकंड टाइम आउ थरे देखिबा इज नॉट नेसेसरी. स्ट्रिक्टली कहूची, you don't need to go through any book, you don't need to go through any video, any other classes. This is the first and last, जदि भल से बुझी गलो. और जो मानकर फास्ट आगुरु हेई सारिछि, this is the last one. Yes, growth is limited to certain age, it stops when maturity has been attained. But development तुम माने जानिछो उम्र टर्म पर्यंत चले. उम्र टर्म पर्यंत चले, जन्म मा पेटरु प्रीनाटल, जन्म पूर्वरु टिल डेथ. तो टाइम ऑफ कंसेप्शन रु धरकी जते बेले पेटरे मार रहिबा तमे स्टार्ट हेलो एंड टिल द एंड ऑफ लाइफ ये डेवलपमेंट चलिए. किंतु ग्रोथ एट ए स्पेसिफिक एज और व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेंडेड इट विल बी स्टॉप. ओके, चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली. डायरेक्टली तमे ऑब्जर्व करि परिबो, मेजर करि परिबो ग्रोथ ता. फिता पकैलो मापि देलो एति की हाइट, यस केजी पल्ला ऊपर ठिया कर देलो, निकिति ऊपर देखिलो आजिकल. हाँ से अलग कथा, मु टिके पुराना जमाना रो लोक ठिया कर देलो जति के असला सति की केजी वेट. सो दैट्स इट, सरला. किंतु डेवलपमेंटल चेंजेस that result in improved behavior or functioning cannot be measured directly. तमे डायरेक्टली मेजर करि परिबोनी. ये होची डेवलपमेंट. आउ कोन अछि? ग्रोथ फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी साइज. किंतु डेवलपमेंट फोकस करे वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस, ए सबु जिंस रहिला डेवलपमेंट रे. ओके, ग्रोथ इज an external process, development is an internal process. मो टिके नियम कहि दउची, आज रो क्लास रो टिके नियम कहि दउची फ्रेंड्स. देखो किछि करिवनी, नाइदर यू नीड टू राइट इन ए नोटबुक टोटली यूज करनी, किछि लिखिबा दरकार नै. फर्स्ट जिंस. सेकंड जिंस, एठी गोटे वर्ड दीटा वर्ड रु बेसी लंबा कमेंट्स करबा दरकार नै. जते बेले मु डिस्कस करूची कोन जिंस कमेंट करबा को कहिबी सेते बेले ही कमेंट करबो. अदरवाइज यस बुझी होची चलची एमिति ही कमेंट्स मते दरकार. एठी कोनोसी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन रो मु गप चाहुनी. ओके, सो कंप्लीट फोकस रहिबो. चलो ठीक अछि. नो नोटबुक किछि लिखिबा दरकार नै, जस्ट फोकस. इट विल डायरेक्टली एंटर हियर, डायरेक्टली जीवो. आज अन्य रास्ता नाही, एठी पसिबा रही अछि. ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल, ये फंक्शनल. ओके, तापर growth is influenced by development is independent, it does not depend upon growth, right? So development is independent, how growth is influenced by development. तेणु किए बड़ जदि पचारे जीव ग्रोथ ना डेवलपमेंट किए बड़, निश्चित रूपे डेवलपमेंट ही बड़, राइट? एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल, ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल. सो ये जिनसटा को आइडिया कर दियो जे पूरा डिफरेंशिएट हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोन. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअसली चले फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. ठीक अछि. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कोन मु कहली, पैटर्न टा यूनिफॉर्म, सेम पैटर्न को समस्त फॉलो करते. रेट इज डिफरेंट, मु कहली रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, rate is different, but pattern is same. So same means uniform, eka gote pattern को समस्त डेवलपमेंट प्रोसेस टा को फॉलो करें. Development occurs an orderly manner and follows a certain sequence. This pattern is general, the same for all individuals. For example, a child crawls before he creeps and starts before he walks. चलिवा पूर्व समस्ते ठिया हुंती नहीं कि गुरुंडिबा पूर्व समस्ते पेटांती. तो ये ए प्रोसेस ए पैटर्न समस्त को समान.
principle of heredity and environment. Both heredity and environment have a consolidated impact on the growth and development of a child. तो दीटा जाकर इम्पैक्ट रहे कार हेरेडिटी आउ एनवायरनमेंट रो तो सेति पई तो क्वेश्चन आसे d इक्वल टू h प्लस e ना d इक्वल टू h इनटू e 1 हबो ना 2 हबो आंसर जल्दी फटाफट कहो यस ए क्वेश्चन जते बेले आसे पिला कंफ्यूज हो जानती कोटा हबो बोली इट इज नॉट एडिटिव इट इज मल्टीप्लिकेशन of heredity and environment. It is the product of heredity and environment. So development is based on 5 aspects, which is not an aspect that affect development. एमती भी क्वेश्चन आसी पारे या भीतर चारटा तीनटा ऑप्शन थिबो गोटे नथिबो तो देखि थाओ पांचटा एस्पेक्ट्स कोन डेवलपमेंट को प्रभावित करे फिजिकल एस्पेक्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट इमोशनल मोरल एंड सोशल क्लियर सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स दैट प्रभावित करे टिके स्लो अच्छो कि माइंड को टिके सुनो इट इज अ रिक्वेस्ट समस्ते फास्ट काम हला तमे वीडियो को शेयर कर दियो लाइक कर दियो बसिलो आसिलो बस नाउ इट इज योर ड्यूटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दिस के जॉइन करिवो न करिवो इट इज अप टू हिम और हर बट तमे जॉइन करिछो यू आर वाचिंग मींस यू शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज नॉट अ वीडियो. This is not only a lecture class. This is a final revision class where you will get everything. Okay. Principle of prediction. The predict kari हुए ना नहीं? Yes. Development is predictable. तुलसी दुई पत्र रो बस. Okay. So uniformity of the pattern and sequence of development. It helps us to know the uniformity. Okay. So principle of direction. एथुर गोटे क्वेश्चन तो पक्का आसे तुम जानिछ सेफालोकोडल प्रिंसिपल प्रोक्सिमोडिस्टल एंड स्पाइरल सेफालोकोडल मींस द डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए डायरेक्शन ऑफ हेड टू फुट और हेड टू टो द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड आर्म्स एंड देन लेग्स आफ्टर स्टैंडिंग बिफोर स्टैंडिंग तो हेड और आर्म्स ऊपर कंट्रोल फर्स्ट डेवलप करे सो द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टुवर्ड्स टो टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. Okay, done. Next is proximodistal. It is center part of the body to the other parts, means center to periphery. Right? बहुत बढ़िया. So proximodistal is central to peripheral. Spiral development leads from EG to complex sequence. So EG to complex टाको कहा जाउछि spiral. So these are the 3 principles or directions of development. Right? So cephalocaudal आसुची तो head to toe, proximodistal आसुची तो center to periphery, spiral आसुची तो EG to complex. ए sequence रे development हुए. This is a law. This is a rule. Okay. So principle of individual difference तापरे देखिबा. Individual difference is there in your syllabus. It is having a special part. Individual difference. मो सेटा को पूरा importance देके discuss करिवि. Because this is a very important part in your syllabus. कुआडे गला रे important कहूची आ नथिबो देखो नाही मो कहूची important कोन करिवो कहलो एथरे हां इंडिविजुअल डिफरेंस कुआडे गला अच्छी डोंट थिंक इंडिविजुअल डिफरेंस नथिबा गोटे सिलेबस बनि जिवो राइट सो इंडिविजुअल डिफरेंस इज देयर एंड इंडिविजुअल डिफरेंस काहे की आसे इंडिविजुअल डिफरेंस आसीबा पछर रीजन होउची हमर जो वैरायटी रहउची जो डाइवर्सिटी रोज कोडे वाला डाइवर्सिटी क्लासरूम डाइवर्सिटी कोडे वाला एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स नहीं एग्जैक्टली क्लासरूम डाइवर्सिटी थी ना एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी अच्छी ना एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी इंडिविजुअल डिफरेंस जो हुआ डोंट क्वेश्चन यू शुड नो अनुषया बेहरा डोंट क्वेश्चन यू शुड नो दिस मते कोन पचार मते पचारनी एटा ओएस पाइन ना नहीं इफ यू आर प्रिपेयरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस द इंडिविजुअल डिफरेंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन हेरिडिटी एंडोमेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस तो कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस आसे हेरिडिटी जो एनवायरमेंट जो
तम एनवायरमेंट मो एनवायरमेंट अलग तम हेरिडिटी मो हेरिडिटी अलग राइट दैट इज व्हाई and among the environmental influences the most important factor are food climate health conditions opportunities for learning motivation to learn social relationship codes of behavior set up by the social groups to which the individual belong the individual ro society jehetu alga तार बिहेवियर तार सोशल रिलेशन मोटिवेशन अपॉर्चुनिटीज हेल्थ क्लाइमेट फूड एवरीथिंग इज डिफरेंट तेणु निश्चित रूपे इंडिविजुअल डिफरेंस रही से अनुसार प्रभावित हम कौन कौन डेवलपमेंट यस सो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जदि कहबा देखो को पीरियडटा कोथरे जाउची एथरु भी क्वेश्चन आसुची प्री नाटल होची कंसेप्शन टू बर्थ बर्थ पूर्वटा होची प्री नाटल इन्फेंसी होची 0 ରୁ 2 इयर्स जोटा प्री सेंसरी मोटर स्टेज बोली कही जीन पियाजे अर्ली चाइल्डहुड 2 ରୁ 6 वर्ष जोटा प्री ऑपरेशनल 2 ରୁ 7 बोली कही पियाजे लेटर चाइल्डहुड 6 ରୁ 10 सेमती आडोलेसेंस 11 ରୁ 18 18 ରୁ अधिकाटा को सॉरी एडल्टहुड बोली कह जाओ सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड अप्रोक्सीमेट एज क्लियर या ऊपर क्वेश्चन गोटे आसे रेयरली आसीबो किंतु देखो एवरीथिंग इज रेयर बिकॉज एते विराट बड़ सिलेबस एंड हेवी वेट रहउची ओएसएसटी पई एंड इक्वली इंपोर्टेंस रखुची टीचिंग एग्जाम्स पई दैट मे बी जूनियर टीचर एसएसडी सेवक सेविका एबे न कहले पुनी पचारिबो तमे जेमती कमेंट करछो सर सेवक सेविका पई क्लास करंतु कोन सेवक पा सेविका लिखले जाय कि ता पई क्लास की यू शुड नो द सिलेबस यू शुड गो विथ द फ्लो अरे कोन एमती चली छी गुडा बी मैच्योर हां तो जानिबा दरकार जे कोटा बुझबा एवरी टाइम आई विल नॉट मेंशन दिस थिंग्स इन द थंबनेल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो एगुडा तमे जानिचो को टाइम रे को एज को आ जाए एतरु क्वेश्चन केते आसे न आसे तम माने जदि परीक्षा किछि देइचो आगरु तम मानकर आईडिया थिबो इन्फेंसी यूजेस सेंस टॉय एज एडॉप्टेशन मिमिक्री करे एको टॉय एज बोली कहा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे अर्ली चाइल्डहुड 2 ରୁ 6 वर्ष क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बोली कहा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले एज प्ले एज बोली बेसी कहा जाए टॉय एज का इन्फेंसी रे जाउछ इमिटेट एठी भी करे अर्ली चाइल्डहुड रे बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज सेल्फ सेंटर्ड ईगो सेंटर्ड प्री स्कूल एज प्री गैंग एज दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बट प्री गैंग एज बहुत रेयरली क्वेश्चन आसे गैंग एज बेसी क्वेश्चन आसे प्री स्कूल एज and school age and आपको pseudo maturity बोली कहा जाए लेटर चाइल्डहुड को false maturity troublesome age सब बेले खाली क्वेश्चन करतुवा विभिन्न प्रकार रो कंफ्यूजन रे थाए एंड गैंग एज लेटर चाइल्डहुड को कहा जाए 6 ରୁ 12 वर्ष इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम बोली कहिथिले हॉल एडोलेसेंस को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे हीरो वर्शिप आसी थिला पीवाईक्यूज देखिबो ओएसएसटी रो टीचिंग एग्जाम्स रो भी फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द सोसाइटी आंदोलनात्मक मनोभाव रहे आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक्सन करो स्टेज को पळेबो रोल कंफ्यूजन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड बोली कहा जाए एडोलेसेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड रो मझिरे थिवारो एटा को ट्रांजिशनल पीरियड बोली कहा जाए and most important yes critical period of language development early childhood जोटा 2 ରୁ 6 वर्ष भितर छुआ भितर लैंग्वेज रो डेवलपमेंट हुए प्रथमे वर्ड्स तापरे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस एंड तापरे डिटेल रे आराम से एक्सप्लेन करिवारो कैपेबिलिटी ता भितर डेवलप हुए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे वर्तमान पर्यंत अच्छे सिलेबस रे फ्रेंड्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग that is growth and development concept of and principle difference between growth and development factor influencing development we are discussing all these things now right समस्ते मु भाबुची बुझी पारुछो जे हम कोठी अछि तो हमरो डोमेन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जदि देखिबा चारिटा डोमेन्स अछि चारटा डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स एथरु मु गोटे गोटे करे डिस्कस करूची let's move to the first one cognitive learning and processing of information cognitive माने का सहित रिलेटेड त माने जानिछो हेड एठी
reasoning, memory, thinking, problem solving, critical thinking, imagination, learning and process of information. ए सब जिनस learning and process of information ये सब जिनस आछि learning होछि information gather करूछे imagine करूछे critical thinking, problem solving, reasoning, memory सब जिनस cognitive रे आछि language रे कोन आछि communication with others अन्य सहित केमिति communicate करिवा second learning and interpreting sounds टॉकिंग वोकैबुलरी रिटन लैंग्वेज स्किल ये सब जिनस लैंग्वेज डेवलपमेंट सहित कनेक्टेड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी तुम सिलेबस रे अच्छी नॉम चॉम्स्की आमर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सेटा भी अच्छी सो इन डिटेल सेटा भी आमर दरकार अच्छी नेक्स्ट होची फिजिकल फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल जानिच कौन कौन यार डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट रे होची हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो कैच करबा क्वेश्चन आसे जोटा हैंड और आई रो कोऑर्डिनेशन जो क्रिकेट खेलला बेले जो कैच करबा रो जो क्वेश्चन टा गोटे आसे ताको कनेक्ट करके सेटा और बैलेंस ये सब होची फिजिकल डेवलपमेंट होई छुआ तापर जो देखला सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड गेटिंग अलोंग विथ अदर्स अन्य सहित केमती मिसिबो अन्य सहित केमती जोड़ी हबो प्ले माध्यम रे सोशल रिलेशनशिप माध्यम रे सेल्फ एस्टीम अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन ये सब होची सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होप यू आर गेटिंग एक्सपेक्ट करूची मु तम मान को पाखरे मु पहुंची पारुची बोली एंड टिके बेसी सीरियस अछि आज मु तम मान को भी लागु थिवो जे मास्टर गीत गाई के पढेवा कथा कोन एते सीरियस अछि बिकॉज जेतोल टारगेट ओरिएंटेड मनुष्य हो जाए जे हाँ आज वीडियो इट should be very important for all of you. You should understand the importance of this video of this class. आउ तम माने मते केते सीरियसली नै छ मु जाननी बट मु तम मान को बहुत सीरियसली नै छ राइट जीवन रे किछि दरकार तो मो छुआ को डेवलपमेंट हो जाउ बस तेनो आज चाइल्ड डेवलपमेंट पढौछु बस बुढ़ा हो गले मेडिसिन खाई कि शोले कौन असुविधा बनता शीत दिन कंबल उड़ी शोता सो होप यू विल अंडरस्टैंड मी प्लीज कंसीडर टी कर मु तुम मान पाखे पहुँचवा चाहूँ चेष्टा करुँ प्लीज अलाउ मी जिते पर्यटन माइंड को ओपन न कर नथिंग विल हाँ माइंड केत काम करे इट इज लाइक ए पैराच्यूट कही पैराच्यूट पैराच्यूट जमी खोला रखिले काम करे बंद कर तो दुम किना पड़ो ओके चलो ठीक अच्छे थैंक यू आई अंडरस्टैंड कि तुम मैंने पूरा मन ध्यान दे कि पढ़ुच बर्तमान एंड शुणुच मत फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन फैक्टर सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करे तो फर्स्ट हूँ देख तुम अच्छी ना नहीं देख पुणी मत कह सर अच्छी तो देख फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस साइकोसोशल हेरिडिटी एनवायरमेंट डिजीजेस इंजुरी सिबलिंग्स एंड पियर्स लिखाई फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ओके वी आर गोइंग थ्रू दैट हेरिडिटी को फास्ट देखिए इट इज द प्रोसेस by which features and characteristics are passed from parents to the का पाखरु आसीबो हेरिडिटी कोन पेरेंट्स मान को पाखरु चाइल्ड पाखकु बिफोर द चाइल्ड इज बोर्न किछि जिंस ट्रांसफर हो जाए का माध्यम रे ट्रांसफर हुए द जीन नहीं कि जीन माध्यम रे जेनेटिक्स हमें पढ़ी छे जीन माध्यम रे बापा मां कर गुण गुड़िका छुआ पाखकु आस द color of the skin, eye, the height, body fluid, sorry, body build, को टाइप रो बॉडी हबो एंड ताई सहित इंटेलेक्ट एंड टैलेंट मध्य किछि मात्रा रे हमें पेरेंट्स मान को पाउछे आर ऑल फिक्स्ड एंड नो वन कैन चेंज देम बियॉन्ड ए लिमिट ताकू किछि चेंज करि परिबा बट बियॉन्ड ए लिमिट हमें चेंज करि परिबानी गोटे स्पेसिफिक लिमिट पर्यंत ही हमें हेरिडिटी को प्रभावित करि परिबा ओके थैंक यू प्रीनाटल एनवायरनमेंट प्रीनाटल टा कोन तमे समस्त पेटरे थिलो पेटरे को एनवायरनमेंट तमे पाइछो सेटा मध्य तमरो डेवलपमेंट ऊपर प्रभावित बा इन्फ्लुएंस करे लाइक फीटस जेतेबेले थिलो इन द वूम इफ द मदर गेट्स पुअर न्यूट्रिशन मां को जदी पुअर न्यूट्रिशन मिली इमोशनली जदी मां अपसेट अछंती और स्मोक्स किंबा ड्रिंक्स करूछंती और टेक्स सम मेडिसिन और सफर फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस
the growth of the child can be adversely affected ए सब मध्य प्रीनाटाल एनवायरनमेंट मध्य इंपोर्टेंट रोल प्ले करे न्यूट्रिशन फूड जोटा हम एटी देखिले तम सिलेबस रे फूड ना न्यूट्रिशन थिला चलो न्यूट्रिशन थिला ठीक अछि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन अछि तो इट्स ओके लेट्स मूव ऑन proper nutrition is essential for the healthy development of a child malnourished childs grow may be retarded or slow intelligence empty higher intelligence is associated with faster development while lower intelligence associated with retardation emotional climate of home madhya important role play करे जे छुआर डेवलपमेंट केमती हो इमोशनल क्लाइमेट केमती अछि घरे हेल्थ ऑफ द चाइल्ड जदि फ्रिक्वेंटली सी सिक होची रोगिणा हो जाउची सफर्स फ्रॉम सम डिसऑर्डर सेमतिया केस रे एंडोक्राइन फंक्शनिंग रे जदि डिस्टरबेंस अछि तो डेवलपमेंट इज लाइकली टू सफर डेवलपमेंट प्रभावित हो सेमति लेवल ऑफ स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट रू कोन मिलुची स्टिमुलेशन को टाइप रो ताको मिलुची अपॉर्चुनिटीज कोन मिलुची फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरेक्शन विथ अदर पीपल्स ये एहा मध्य प्रभावित करे डेवलपमेंट likewise socio-economic status kind of nutrition stimulation facilities opportunities genetic endowment the child get same is sex all children follow the same sequence of development however certain skills are faster in girls than in boys jodi girl kichita jinso girl re jaldi develop हुए as compared to boy and some other skills are faster in boys as compared to girls for example jodi कहिबा एटा एग्जाम रे भी आसे language acquisition is faster in girls and skills like jumping catching throwing are faster in boys language jaldi sikhi jibo chiote boy deri ho but skills like fast like jumping catching throwing esabu boy re jaldi develop karibo as compared to girls sex also a factor that decides the potential of a child in physical development boys grow up to taller heavier more muscular than girls so sex madhyam प्रभावित करे डेवलपमेंट को ओके सो दैट्स इट इन दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट मु भाबुची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट को हमें बेसी लंबा करवानी थैंक यू वी हैव टू कवर एवरीथिंग राइट थैंक यू लेट्स मूव ऑन एठी टिके कहि दोची केवल जोटा इंपोर्टेंट एंड एग्जाम रे तो आसुची क्वेश्चन गुडा सेति पई छाडी हबनी तो डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमें जानिले डेवलपमेंट इज स्पाइराल नॉट लिनियर एटा गोटे क्वेश्चन हमें रिसेंटली करथिले लिनियर नुह बोली लिनियर नुह तो केमतिया डेवलपमेंटटा सेटा होची स्पाइराल डेवलपमेंट इज स्पाइराल ओके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ठीक अछि सेमती एंड ये सेम पेस रे डू नॉट डेवलप सेम पेस थ्रू आउट ऑल लाइफ सारा सेम पेस रे होएनी काहे हमें पढिचे 6 इयर्स पर्यंत ब्रेन रो डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाए और 6 इयर पर्यंत मैक्सिमम जिंस पिला को जहां सिखेबा बहुत जल्दी से कैच करी थी और छुआर डेवलपमेंट हो जाए था ब्रेन और हमें जो तीनटा डोमेन्स पता पडुचे कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तारो तीनटा जक डोमेन्स आर इंटरकनेक्टेड ओके डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर जानिचे हम करिचे development is quantitative as well as qualitative both development proceeds from general to specific multi-dimensional process predictable at some extent काहे कि तुलसी दुई पत्र रो बासे जो मु कहली predictable development ता modifiable and plastic very elastic no किंतु modify करी हबो development proceed from heteronomy to autonomy development proceeds from gross to fine motor skill gross motor कोन फर्स्ट हमें बड़ मसल लार्ज मसल को कंट्रोल करि परिबा लार्ज मसल्स ग्रॉस मोटर स्किल जो स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होचंती दैट इज फाइन मोटर स्किल लार्ज मसल कोथरे थ्रोइंग क्लाइंबिंग डांसिंग रनिंग स्विमिंग ये सब होची ग्रॉस मोटर स्किल बट राइटिंग कोन राइटिंग स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होला तो फाइन मोटर स्किल्स राइट थैंक यू दीटा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट अच्छी सेफालोपोडल प्रोक्सिमोडिस्टल आम स्पाइराल भी देखीचे चलो ठीक अच्छे इंडिविजुअल डिफरेंस कथा आम जानिले तापरे इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न कहीं कि जने एबल होची और अनेबल होची लर्निंग पे तापर असला हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट रोल टा कोन अछि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रो प्रोडक्ट
or interplay, all or multiplication. Yes, development is predictive, predictable, progressive and orderly. Yes. तो आउ नेचर और नर्चर तो क्वेश्चन आसे केमती छाड़िबा हमें हाँ तो नेचर और नर्चर भितर फरकटा देखि दियो एतिकी ही मु आउ डिस्टर्ब बेसी करिवि नहीं डिस्टर्ब करूछि कि नहीं तो कि बुझी पारनो कि टिके कमेंट कर दियो मु तो विश्वजिता सेति पे कहूछि प्रेडिक्टेबल जते बेले कहूछि सेति में तुलसी दुई पत्र रो वास बोली कहि दउछि हाँ तेणु एठी कोन आउ रहिला सेतरे तुलसी दुई पत्र रो वासे पिला को टाइप रो हबो सेटा आगु जना पड़ जाए दैट इज प्रेडिक्टेबल सेति में डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल कहले त डाउट करिवर कोन अछि ओके सो समहाउ प्रेडिक्टेबल अगेन हाँ नेचर एंड नर्चर नेचर माने कोन नेचर माने गुण गुण कोठु आसे जीन रु ओके तो एटा हेरिडिटी सहित रिलेटेड एटा हेरिडिटी सहित रिलेटेड नर्चर कोन लालन पालन लालन पालन जिनसटा कोन रियरिंग ये का ऊपर निर्भर करे एनवायरनमेंट ऊपर करे तो नेचर टा जीन रु डीएनए रु मैच्योरेशन केमती होची बायोलॉजिकल एटा जेनेटिक मेकअप एटा इननेट क्वालिटी बा जन्म रु थाए जन्म रु जोटा थाए सेटा को कहले इननेट बा इनबॉर्न क्वालिटी ओके किंतु एटा कोन एनवायरनमेंट टा नरिशमेंट केमती मिलुची लालन पालन एक्सपीरियंस अपब्रिंगिंग भी सही सेंस रे सोशल कंट्रीब्यूशन सोशल वर्ल्ड कल्चर एजुकेशन कोन मिलुची ताको को सोशल वर्ल्ड रे रहउची को सोसाइटी रे बडुची को कल्चर को फॉलो करूची केमती एजुकेशन मिलुची ता द्वारा एनवायरनमेंट बा परिवेश केमती रहउची ओके ठीक अछि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रे इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड प्री एडोलेसेंस अर्ली एडोलेसेंस मिडिल एडोलेसेंस एमती करि परिबा एते प्रकार रो हम करि परिबा क्वेश्चन गोटे जोटे करिवो कि कल देखि केते क्वेश्चन अछि बाप रे हो एते क्वेश्चन हम करिवानी बट करो देखिबा केतेटा करूछ सेगुड़ा सब पीओआईक्यू अछि क्वेश्चन करिबा करिबा व्यस्त होनी मु राती 12 पर जाए क्लास आज अछि हला हाँ तो व्यस्त होनी दिस इज ए marathon session this is a 2 day session this is a whole night session जहाँ कोई पर ए 2 day session गोटे दिन तो सरी बनी तमे जहाँ करिवो मोर किछ नै इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल यस पेस इज डिफरेंट सेम पेस हबो कि ऑलवेज लिनियर डिसकंटिन्यूअस yes not proceeded at the same pace for all किंतु जदि पैटर्न था कौन होता सेम पैटर्न होता बुझेला learners display individual differences so a teacher should learner individual difference display करंती तेणु टीचर कौन करबा उचित बहुत बढ़िया थैंक यू provide a variety of learning experiences okay which one of the following is true these are PYQs
बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया. So here the right answer is play is, yes, play is significant for cognition and social competence. बहुत बढ़िया. Schools should cater to individual differences too. Yes, friends. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू. Yes, understand why students are able or unable to learn. इंडिविजुअल डिफरेंस न जानले आम जानी परिबन जे काहे की गोटे छुआर प्रॉब्लम कोन होची, काहे की से एबल और अनएबल. मैच्योर स्टूडेंट्स, समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज. तांकर नीड टाको बुझिबो ना तमे आ किछि दरकार नै से सब कर देबे कहले हबो कि. हाँ, रिजॉल्व इजीली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व कर देबे सब कॉन्फ्लिक्ट तांकर. केमति तमे निजे करि पाउछ कि आगो कहला. तमे मैच्योर एति कि हेलोनी कि जे तमरो निजर कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली रिजॉल्व कर दोछ तमे. इमोशनल सपोर्ट दरकार, समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट. आमे कोन करबा तांको पे सेटा भाबिबो जदि हेजिवो. ओके ओके, एटा ए क्वेश्चन टा करो, तापर आमे पुनी थ्योरी पढिबा, पुनी क्वेश्चन करबा, एमति चालिबो आज चालिबो समथि. A child coming to preschool for the first time cries profusely, प्रबल कांदे. प्रीस्कूल को प्रथम थर आछि. After 2 years, when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense muscle गुराक टाणी हो जाउछि, रागी जाउछि. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principle. ये जो परिवर्तन हला, प्री प्राइमरी रे कांदुथिला, प्री स्कूल रे कांदुथिला, किंतु प्राइमरी रे एक्सप्रेस कला टेंशन टा नॉट बाय क्राइंग बट नेक मसल टा स्ट्रेस हला. कौन हबो? डिफरेंट पीपल कौन सेही पिला परा. अरे द सेम चाइल्ड, भलो एमडी करियो. डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स. बहुत बढ़िया जो माने करियो, थैंक यू. ओके, आ गोटे करो. द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम आर. Individual differences of students in a classroom. Yes, we should celebrate diversity in the classroom. पर individual difference को हमें celebrate करिवा तो कौन गोटे positive जिंस निहाती थिवो. Disadvantageous नुहे, detrimental नुहे, inexpedient as they reduce the speed of curriculum. Nine advantageous as they lead teacher to explore a wide pole of cognitive structure is the right answer. D correct. Be positive always. CDP रो फंडा, CDP child development pedagogy teaching aptitude जेते बेले आंसर करूचो be sure to be very positive. जे जिते पॉजिटिव सीडीपी रे से सते अधिका मार्क रखी परियो. ह्यूमन डेवलपमेंट इज केबे एते थर कले तो भूल हबनी मु जानि छी. मझिरे ब्रेक मिलिबो व्यस्त होनी, मझिरे मिलिबो जे एते जल्दी मिलिनी हला. एते जल्दी ब्रेक कथा पचारोनी. बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर. यस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर. थैंक यू. अच्छा, एटा गोटे कर दियो. 10टा कर दबा कम से कम ना. हां, we all differ in terms of our intelligence, motivation, interest,
this principle refers to? बहुत सिंपल अछि. Yes, individual difference. Differ in terms of intelligence, motivation, interest हिसाब रे फरक पड़ुचे तो एटा होची individual difference. बस बस. कौन पड़ुचे करो. बहुत बढ़िया participation. Well done, friends, and 10 right answer each. General to specific is the right answer. Thank you. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. So we have covered this part, growth and development. Now we will go to theories of development. Okay. So theories of development को जीवा तो क्या पाक को जीवा first Piaget. तो डिस्कस करिवा जते बेले बी वेरी श्योर we are going very briefly. हमें Piaget को विषय डिस्कस करिवा. हमें विल्फोर्ड, गार्डनर, थर्स्टन, स्टेनबर्ग, वाइगोट्स्की ये समस्त विषय रे कोलबर्ग, एरिक्सन, नोम चॉम्स्की ये समस्ते अछंती हमर. देखुछ तो एमती किए नहांती जे नहांती माने केही. हां सही कथा तो केही नहांती जे नहांती. केही भी एमती नहांती जे नहांती. सो यस Piaget को पाक को पळेवा. कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच भल से जानिचे भल से बुझिचे. द मोस्ट कौन आम सब अधिका भाव में जहाँ चिन्हीचे. हाँ आम Piaget अंकल को. ओके चलो. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच जिते आसुची जीन Piaget को. जीन Piaget होउचंती एपिस्टेमोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एपिस्टेमोलॉजिस्ट तीनटा जाक. एंड ये स्विट्जरलैंड रो तो स्विस बायोलॉजिस्ट हार्ड इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी कौन स्टडी ऑफ नॉलेज. जानिछ समस्त. व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज. ओके ठीक अछि. हाँ फिलोसफी कंसर्न विथ द नेचर ऑफ नॉलेज बोली कहूचे. ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विथ द नेचर ऑफ नॉलेज बोली कह जाउची. एंड जते बेले Piaget को क्वेश्चन आसे देखिबो छुआ को से कोन कहिचंती के कहबो देखि कहलो छुआ को कोन बोली कहंती जीन Piaget. यस स्टार्ट हो आगु सब आंसर दबा स्टार्ट कर देलो. दैट इज द ग्रेट थिंग. थैंक यू. एक्टिव एक्सप्लोरर कोन कहंती. एक्टिव एक्सप्लोरर. लिटिल साइंटिस्ट. ओके ठीक अच्छी क्लियर. ओके सो आपको जीवा देखो Piaget डेवलप्ड प्रॉपर फ्रेमवर्क जो से कहले स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम चारटा इंपोर्टेंट टर्म देने. जहाँ को मु कहितली कोन थिला, आसीला, मिसिला, हला. थिला आसीला मिसिला हला स्कीमा जहाँ छुआर माइंड रे अछि. जेतेबेले से किछि नुवा जिंस एनकाउंटर कला लाइफ रे जोटा केबे ता जीवन रे आसी नथिला सेटा आसीला. आ ता आसीबा जोगु से नुवा जिंसटा ता मुंड दोहली गला बा इम्बालांस होला बा डिसइक्विलिब्रेशन आसीला. तेन जो नुवा जिंसटा ता जीवन रे आसीला जोटा थिला भितरे नथिला से जेतेबेले आसीला तार बैलेंस बिगड़ी गला. आ से जेतेबेले से थिला भितर बा स्कीमा रे मिसिला से बैलेंस जो बिगड़ी जाइतला से बैलेंस ता पुणी फेरी आसीला. तेनु हेला कोन बैलेंस हेला. बुझी पारला. सो थिला आसीला मिसिला हेला यार कॉन्सेप्ट जदि हमें देखिबा भल से जानि जीव. तुम माने गोटे एग्जांपल एटी जोटा अछि स्कीमा कैन सिंपली लाइक ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड व्हेन ही नोज हाउ टू ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद इन रीच और कॉम्प्लेक्स व्हेन ए साइंटिस्ट मेक एन एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट करथबा साइंटिस्ट पई भी स्कीमा अछि काहे से भी किछि नुवा पाइबो फाइंडिंग पाइबो. एंड छुआ जेतेबेले नुवा करी गोटे जिंसटा ऑब्जेक्ट को धरिला सेटा भी ता पई स्कीम. So it is very simple like grasping an object and also very complex like making an experiment or solving a difficult mathematical problem. Okay. तो जहाँ थिला से फर्स्ट टाइम जोटा करूची एक्सपेरिमेंट हो कि ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट हो स्कीमा. असिमिलेशन कोन एग्जांपल देखिबा
से छुआ कौन करुला सब जिनस को धरुला ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रास्प देम द स्कीमा ऑफ ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड असिमिलेशन जेतबेले से धरि नथिला केबे कौन जिनस को धरिबा शिखि नथिला जेतबेले धरि 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 विभिन्न जिनस धरिला एंड ग्रास्प करबा शिखिला दैट इज असिमिलेशन ता भितर सेटा आसिला ओके आसिला नुआ जिनस एंड अकोमोडेशन हला केतेबेले जेतेबेले से सब जिनस धरुतिला खेलुतिला सब जिनस को पिटुतिला तळे जेतेबेले से ग्लास बोतल टाकू तळे पिटिला सेतेबेले ग्लास बोतल भांगी गला इट विल ब्रेक तो ये भी तार कौन है स्कीमा रे जहाँ सब आसूला ये टी अलग आसला ये मुंडटा को इम्बालांस कला इम्बालांस है से जानिला जे काच जिनस को तले पिटले हेनी बाकी सब चलुला बट ये गोटे नुआ सिचुएशन जहाँ आसिकी मिशिला आसिकी अकोमोडेशन माने मिशिला ता माइंड रे जे नहीं काच जिनस को एमती करबानी व्हेन बाय एक्जिस्टिंग स्कीम द न्यू सिचुएशन इज नॉट फुल्ली हैंडल देन अकॉर्डिंग टू पियाजे गोटे डिसइक्विलिब्रियम आसीबो बा इम्बालांस आसीबो such imbalance can be reduced by focusing on the stimuli that causes the imbalance ये जो imbalance आसिला ताको केमती balance करी हबो through yes जेतबेले से जानी गला अंडरस्टैंडिंग डेवलप कला जे नाही एटा काचर जिंस एटा पिटिवार नाही बोली सेतेबेले सेटा बैलेंस आनला बा से जो स्टिमुली ऊपर स्टिमुलीटा कोन एटी पिटिबाटा स्टिमुली से स्टिमुली ऊपर से जेतबेले कोन कला फोकस कला जे एटा काचर जिंस एटा को पिटिले ये भांगी जीवो तेणु सी आउे इन फ्यूचर कलानी सो ता द्वारा कौन हम रिस्टोर हो बालांस जहाँ को इक्विलिब्रेशन हेला बोली मु कहली द डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रेशन गिव्स द चाइल्ड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप ये जो डिस्टर्बिंग है इक्विलिब्रेशन टा डिस्टर्ब है बस ये काच जिनस को पिटिला से जोटा शिखिला ता जो बालांस टा पुणी आसला अपॉर्चुनिटी देला से छुआ को टू ग्रो एंड डेवलप समस्त क्लियर है स्कीमा नुआ सिचुएशन नुआ जिनस गोटे कला ग्रास्प कला सब जिन जी जहाँ धरला देखो चाबी रिंग धरीद आंगुठी देख धरद सब धरवा ये धरवा शिखिला जो असिमिलेशन हो गला किंतु जिते सी गोटे काच बोतल टाक पिटिदेला से भितर अकोमोडेशन है मिसिला आसिकी जे ना काच को करार ना जहाँद्वारा इम्बालांस है स्टिमुली काच जेहेतु से पिटिली भांगी गला ये बालांसटा पुणी आसो के सी फोकस कर स्टिमुली एंड तापर इक्विलिब्रेशन रिस्टोर हम बैलेंस पुणी फेरी आस चार्टा जिनस कही या पर क्वेश्चन आसला ओके एंड असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन दुईटा जाक जो रोचे अडप्टेशन भी कह जाए ये दुईटा जाक मिसेक अडप्टेशन भी कह जाए है तो अडप्टेशन बेले बेले क्वेश्चन जो आसो से तुम अकोमोडेशन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो ही अडप्टेशन हुए अडप्ट कर नुआ सिचुएशन सहित खाप खुआए सी है कन्फ्यूज हेनी ओके नेक्स्ट है स्टेजेस जीन पियाजे चारिटा स्टेज देखिए एसपीसीएफ बहुत बढ़िया एसपीसीएफ एस रे सेंसोरी मोटर पी रे प्री ऑपरेशनल सी रे कंक्रीट ऑपरेशनल एफ रे फॉर्मल ऑपरेशनल तो एसपीसीएफ रु क्वेश्चन बेले बेले आसे कौन आसे ना सेंसोरी मोटर स्टेज को कौन कहा जाए किए कहबो कौन कौन क्वालिटीज यार ये ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट सब धरिबा शिखे चाइल्ड रिमेन्स कंफ्यूज रिगार्डिंग हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट एंड तारो एक्सपीरियंस थ्रू सी कॉन्सेप्ट्स को एक्सट्रैक्ट करे छुआ जो शून्य रु 2 वर्ष भितर अच्छी तो ये कौन हुए से सेंस ऑर्गन को बेसी गुरुत्व दिए ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस यार क्वालिटी बुझेला वेरी गुड तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कौन विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्ट सहित धरब खेल छुईब जानव ये जो जाकि पिठा होची बोली तावा ऊपर बसु पड़ो से टाइम तापर इम्बालांस आसो से जो स्कीमा है जो सब ऊपर बसुली तावा ऊपर बसीगली बस पूरा रेडी होता गरम जहाँ हवा कथा हो गला से इम्बालांस आसला से इम्बालांस रु बालांस आसला ना रे बाबू निआरे बसता जिनस लगे ना बालांस आसला इक्विलिब्रेशन है ये हूँ पियाजेंटर स्कीमा असिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस ओके ठीक अच्छे बहुत गुड़े जिनस रही भर प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो जीवा कौन हम
बस बस गरम खीरी पी दो बस. Develop ways to represent even objects through symbols, verbal symbols of language. एठी language development start होला. Language, yes, irreversibility of thought रहिबो. Irreversibility of thoughts. कौन irreversibility of thought माने जहाँ गोटे प्रकार भावित तक उल्टा भाई परिबन. ओके इगोसेंट्रिक रहिबो पहिले. आउ कोन होची इगोसेंट्रिक परे हां टॉय एज कोइ परिबा. टॉय एज बोली कोइ परिबा. नो इश्यूज वी कैन. ओके ये सब जिनस एनिमिज्म कौन एनिमिज्म होची से टेबुल रे जता मुंडो बाजी गला ना और टेबुल को तमे दिथर पिट दलो हे हम झियो मुंडर बाजिलु कहि दिथर पिट देले ता मन खुशी हां भलो हैला कहयो. सो ऑब्जेक्ट्स को भी बा नॉन लिविंग को भी लिविंग हिसाब रे ट्रीट करिवा. ओके चलो कंक्रीट ऑपरेशनल को जल्दी जल्दी लॉजिकल थॉट्स कैपेबल डेवलप हबो कोन सीसीएस कंजर्वेशन seriation conservation classification and seriation. एठी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आसीगला हबो कि नहीं एठी रिवर्सिबिलिटी आसीगला इरिवर्सिबिलिटी और रहिबन एंड याकू हां लेटर चाइल्डहुड बोली कहा जाए begins to think logically and rationally about problems which he faces. ओके ठीक अछि ऑब्जेक्ट्स विषय जानी पारे. कंजर्वेशन माने कोन ए जो लंबा सरू ग्लास रु पानीटा जतबेले ढाली दिया गला चौड़ा ग्लास रे सेतबेले से अधा हे गला कम भलिया लागुछ कि नाही से कहबो नाही हम बुझी गलो कंजर्वेशन अछि सेठी जतिक तिला एठी सेतिक तिला किंतु प्री ऑपरेशनल रे से बुझी पारे. ओके रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट डेवलप कला सेठी इरिवर्सिबल तिला एठी रिवर्सिबल. ओके ठीक अछि चलो आपको जाउछि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो माने सबुठ इंपोर्टेंट जोटा एग्जाम रे आसे कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म. हाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बा आउ कोन आसे हाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हुए कंक्रीट ऑपरेशनल रो बट फॉर्मल ऑपरेशनल रे ठीक पूरा ठीक रे हुए एबिलिटी ऑफ थिंकिंग रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग आसी जाए. हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग सेटा हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग एग्जाम रे आसे डिडक्टिव थिंकिंग को स्टेज रे डेवलप करे बहुत बढ़िया. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बा यस आइडेंटिटी क्राइसिस पासे हीरो वर्शिप पासे ट्रांजिशन पीरियड फॉर्मल स्टेज बहुत बढ़िया निवेदिता एटा को हम कनेक्ट करि परबा ता का सहित या पूर्व जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढु नथिले कि एटा कोन एटा एटा अर्ली एडोलेसेंस कहि परबा हम एडोलेसेंस कथाटा कहि परबा ए पीरियड का. डिडक्टिव रीजनिंग यस क्रिटिकल थिंकिंग एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एडोलेसेंस एज हाइपोथेटिकल थिंकिंग ए सब जिंस डेवलप करिवो. ठीक अछि थैंक यू. सोशली इंटरैक्ट इन ए डिजायरेबल मैनर सोशल हो जाए छुआ. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ cognitive development as proposed by theory of cognitive development as proposed by Jean Piaget. तो पियाजे को cognitive development रे sensory motor pre operational concrete operational and formal operational these are the four stages of development. okay चलो Vygotsky को पढ़िबा. Vygotsky तो अछंती जिबे कुआडे पियाजे अछंती Vygotsky मोस्ट इंपोर्टेंट लेव Vygotsky रशियन साइकोलॉजिस्ट. बेले क्वेश्चन आसे को कंट्री रो बोलिबी and से जो कंस्ट्रक्टिविज्म देइतले सेटा होचे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म व्हिच इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ पियाजे. सो जेतेबेले मने रखिता हो दी जण जाको कंस्ट्रक्टिविज्म कोन चाइल्ड निजे नॉलेज को निजे निजे कंस्ट्रक्ट करे हला चाइल्ड इज एक्टिव तांको हिसाब रे किंतु पियाजे कहिले कॉग्निटिव
बा माइंड रो डेवलपमेंट आगो हुए तापरे लैंग्वेज ये कहले लैंग्वेज रो डेवलपमेंट आगो हुए तापरे माइंड सो ये क्वेश्चन आसे वेरी केयरफुली आंसर करिवे एंड क्वेश्चन को बुझीबा निहाती दरकार सब पाठ जानी थांती जने जने भूल करके आसंती बिकॉज क्वेश्चन को बुझी पारंती आ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए सो ये जिन को अवॉइड करिवो ओवर कॉन्फिडेंट हबनी केबे भी हां बायोगोड्सकी आछि मु पढ़ी के आछि कर देबी ठीक ना प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा इंपोर्टेंस देकी वर्ड को पढ़िबो बुझिबो एंड आंसर करिवो ओके व्हाट a child can do today with assistance she will be able to do by herself tomorrow ले Vygotsky कर एटा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन आसे से जो मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफोल्डिंग रो कथा को नेकी ए स्टेटमेंट ता पूरा अछि सो व्हाट a child can do today with assistance जो असिस्टेंस ताकू कोन कहले से असिस्टेंस ताकू कहले से स्कैफोल्डिंग बा टेम्पररी सपोर्ट ओके एबे आसीबो पूरा डिटेल रे जदी स्टडी करिवा हमें मो एटा बेसी समय नियनी कहि दिए फटाफट कहि दिए कंस्ट्रक्टिविज्म रे मेन लोक होचंती पियाजे वाइगोट्स्की एंड नोवक ये तीन जन होचंती कंस्ट्रक्टिविज्म वाला मोस्ट पॉपुलर वन एंड एठी रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज को इंपोर्टेंस देचंती वाइगोट्स्की कर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग हाँ बड़ बड़ एग्जाम एक्जाक्टली सुना जहाँ कहले बड़ बड़ एग्जाम रे वाइगोट्स्की एंड पियाजे पूरा निज लोक निज भाई वाइगोट्स्की निज अंकल जीन पियाजे तापर भी धोखा देदेवे जेडी अंकल भी धोखा जॉन डीवी भी धोखा देदेवे सो वेरी सीरियसली सब क्वेश्चन को पढ़ी आंसर करार अच्छी एटी कनसेप्ट को मुझे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूसरी वेरी सिंपली जोटा कि सांगे सांगे सरीज आमको लाइन बाय लाइन जावा दरकार नहीं पियाजे कही आग इंपोर्टेंस अधिका कार माइंड रो वाइगोट्स्की कहले सोसाइटी रो कल्चर रो लैंग्वेज रो तीनटा जिनस कहले सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज सरला सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज ओके ये कहले जे छुआ इंडिपेंडेंटली जति की पर्यंत तार प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुची सेटा होची छुआर जोन जो जोनटा को कहा जाए जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट किंतु किछिटा जिनस रही जाए छुआ जहाँ इंडिपेंडेंटली करि पारेनी ता पई ताकू सपोर्ट दरकार कार सपोर्ट दरकार जे टिके अधिका जानी ता संग होई पारे ता बापा मां होई पारंती ता टीचर होई पारे जेतेबेले से सपोर्टटा मिलिला से गोटे एक्स्ट्रा माइल पर्यंत तार अचीवमेंट को बढ़ाई दिए से जो एक्स्ट्रा बढ़ाई देला सेटा होची कोन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बढ़ेला का जोगु टेम्पररी सपोर्ट जोगु टेम्पररी सपोर्टटा होची कोन कहीं टेम्पररी सपोर्ट कहीं से सब बेले से सपोर्टटा दरकार नहीं थरे दरकार हैला ताकू हेल्प मिली गला बा क्लू गोटे मिली गला बा हिंट गोटे मिली गला से करि देला से सब बेले से सपोर्टटा दरकार करेनी सेति पई कहले व्हाट ए चाइल्ड कैन डू टुडे विथ असिस्टेंस शी विल बी एबल टू डू बाय हरसेल्फ टुमोरो निजे निजे करि पारिबो तेनो ए जो सपोर्ट बा क्लू बा हिंटटा मिलिला टेम्पररी सेटा को वाइगोट्स्की कहले एटा होची स्कैफोल्डिंग आ एटा जे दिए से छुआ तो अधिका जाने ताकू एमकेओ बोली कहले इन डिटेल जदि कहबा मोर नॉलेजेबल अदर तेणु मोर नॉलेजेबल अदर रो स्कैफोल्डिंग जोगु बा टेम्पररी सपोर्ट जोगु छुआ तार जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट रो जो एक्स्ट्रा रेंज पर्यंत प्रॉब्लम टू सॉल्व करि पारे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पारे बा प्रॉब्लम सॉल्व करि पारे सेटा होची जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीटी बुझिगलो दीटा कांसेप्ट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग एमकेओ एतिकी हे गला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बुझिगलो एटा छुआ क्लियर फ्रेंड्स रेडी समस्ते कौन आज मध्यरात्रि क्रॉस करवा तो तुम जोश पूरा रही हो ना पूरा जोश रे देखा जो केते जण यस कहउछ आई वांट टू मेक इट ए 2 डे सेशन 2 डेज सेशन 2 दिनिया सेशन आज भी काली भी कम से कम 12 क्रॉस करवा जदी हे जिवो के रेडी अछ यस द्वारा मतामत दबा हेबे अच्छा चलो बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच and this session is important starting from B.Ed entrance to TET teaching exams समस्त को important है
ओके तो बाकी रहा स्पीच स्पीच रो डेवलपमेंट कौन हुए देख स्पीच विभिन्न प्रकार विषय वाइगोट्स्की कहबी कोलाबोरेटिव लर्निंग टा प्रथम बुझे दिए गुपचुप वाला एग्जांपल देवी तो हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट थैंक यू फॉर गदा गदा यस ओके मु कहूची कोलाबोरेटिव कौन कोऑपरेटिव कौन कोलाबोरेटिव कौन कोऑपरेटिव माने मोर माने तमरो टार्गेट अचीव करबा पय मु हेल्प करी बा मोर टार्गेट अचीव करबा पय तमे हेल्प करो दैट इज कोऑपरेशन तमरो किछि फायदा नै मु मोर टार्गेट को अचीव करबा पय तमे मते हेल्प करो दैट इज कोऑपरेटिव कोऑपरेट कलो मते बट कोलाबोरेशन कौन गुपचुप वाला रो एग्जांपल जोटा कौन होची कोलाबोरेटिव लर्निंग कहिला कि तू आलू चकटा करे तू गुपचुप बना तू तेंतुली पानी बना तू सर्व कर जने आलू चकटा जने तेंतुली पानी जने गुपचुप जने सर्व आ जने ठुला फुला आनिबो गाड़ी लगेबो इन टाइम एंड सफा सुतरा काम तो समस्ते मिशिकी गुपचुप ठेलाटा देले ये गोटे कौन कोलाबोरेशन जदि गुपचुप भल है ताले से आलू चकटा वाला भी क्रेडिट तेंतुली पानी वाला भी पूरी वाला भी माने जो बेलिबो जोटा छाणिबो जोटे आउ सर्विस वाला भी सफा सुतरा समस्त क्रेडिट सो दिस इज कोलाबोरेशन इफ सक्सेस ऑफ ऑल टुगेदर समस्त सक्सेस इफ जनकर फेल होला पूरा खराब हो गला पूरी फुलिलानी से आलू चकटा मस्त बादाम बादाम मटर पटर पूरा जाल बने के देइछ बेकार है गॉट इट सो दिस इज कोलाबोरेशन ओके रोल ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज आउ किछ कहबी नहीं मु केवल कहबी प्राइवेट स्पीच कोन इनर साइलेंट इनर स्पीच कोन जते बेले देखो फर्स्ट हला प्राइवेट स्पीच छुआ देखिबो गोटे काम कला बेले से निजे निजे कहउथबो काहे कि सेटा ताको गाइड करे फॉर फर्दर एक्शन नेक्स्ट कोन से करिवो सेटा को गाइड करबा पई से निजे निजे कहे एंड से साउंड ता बाहर को आसु थाए सेटा होची प्राइवेट स्पीच निज सहित कथा होची निज को गाइड करबा पई से हेल्प करूची बट दैट इज प्राइवेट किंतु बाहर को आसु साइलेंट इनर स्पीच धीरे धीरे जते बेले से बड़ हो जाए ग्रेजुअली से प्राइवेट स्पीच टा कन्वर्ट हो जाए साइलेंट इनर स्पीच को एबे भी हमें कहूचे साइलेंटली अरे हे सेटा कोन कले हबो एटा एक्जेक्टली आछी अरे सेटा कोन केमती कले हबो किंतु बाहर को साउंड टा आसुने हमें मने मने कहूचे दैट इज साइलेंट इनर स्पीच ओके प्राइवेट स्पीच helps us focus our attention regulate our strategy and plan our problem solving efforts yes ना नहीं यस निश्चित रूपे जो प्राइवेट स्पीच आम निज को कहवा द्वारा गोटे अटेंशन आसे स्ट्राटेजी बने एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स भी प्लान हुए भल हुए सो ये सब हूँ डिफरेंट टाइप लैंग्वेज बा स्पीच इंटरेक्शन तापर सोशल स्पीच विषय भी सी कहते सो चिल्ड्रन अडॉप्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोशल स्पीच एंड मेक इट देयर ओन प्राइवेट स्पीच तो सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच साइलेंट इनर स्पीच ये सब जिनस ऊपर से कहते जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मु कहली कोटा एटा जेडपीडी डन ओके स्कैफोल्डिंग कहली कोन टेम्पररी सपोर्ट कोड लगाई सपोर्टिव हेल्प एटा जे दियंती तांको कोन कहले मोर नॉलेजेबल अदर थैंक यू कोलैबोरेटिव लर्निंग कोन कहली गुपचुप ठेला सेट लागी गप लिखि दबन रे गुपचुप ठेला एठी कोलैबोरेशन का भीतर पेरेंट्स टीचर्स आउ चिल्ड्रन भीतर कोलैबोरेशन बुझे या द्वारा पेरेंट्स मान भी फायदा अच्छे मो छुआ पढ़ला छुआर भी फायदा अच्छी मु पढ़ी मास्टर भी फायदा अच्छी मु भल पढ़ेली चलो कोलैबोरेशन जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मु कहि सारी आ कहबिनी आगु चलली एंड दिस इज ऑल अबाउट वाइगोट्स्की इंपोर्टेंस देते स्कैफोल्डिंग को जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को मोर नॉलेजेबल अदर को ये तीनटा टर्म ऊपर गोटे क्वेश्चन वन क्वेश्चन इज कमिंग एवरी टाइम सो वंस अगेन बी श्योर फॉर दैट क्लियर ठीक अच्छे चलो तो एमकेओ किए कैन बी ए पर्सन हु लिटरली नोज मोर देन द चाइल्ड के भी बात ओके जे कि स्कैफोल्डिंग बा टेम्पररी सपोर्ट देबे तो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच आम पढ़ले गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को आम जीवा क्वेश्चन भी अच्छी डोंट थिंक कि क्वेश्चन नहीं बुझीपार ना क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे जहाँ पढ़ुचे वेरी केयरफुली देखुता वी विल गो फॉर एमसीक्यूज नाउ या पर एमसीक्यूज को जीवा हमें सो गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मालीपुआ बहिर नाव फ्रेम्स ऑफ माइंड एग्जाम रे आसे
कहवाक आज भूलीगली से कहूली गोटे प्लाटोंकर कौन प्लाटोंकर द रिपब्लिक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पौलो फ्रेरे आउ गोटे डिस्कस करते कह फ्रेम्स ऑफ माइंड कहीदेली गार्डनर आउ गोटे कौन थिला एमिल रोसो एमिल बुक राइटर के रोसो यस तो बहुत गुड़े इंटेलिजेंस कथा कहले बहुत गुड़े इंटेलिजेंस कथा कहले हावर्ड गार्डनर ओके 7 डिफरेंट टाइप्स बहुत जगह 8 डिफरेंट टाइप्स अच्छी कौन हम राइट आंसर how many different types of intelligence according to Howard Gardner हाँ 8 actually 8 ही करो एठी देखो कौन कौन अच्छी आ गोटे कोटा छाड़ी आम कह एक्चुअली बहुत जगह 7 भी अच्छी 8 भी अच्छी बट एठी कोटा आम छाड़ीचे देख इंटर पर्सनल अच्छी इंट्रापर्सनल बॉडीली काइनेस्थेटिक म्यूजिकल स्पैशियल ओके बा विजुअल एंड स्पैशियल लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक कोटा छाड़ी आ गोटे को बहुत बढ़िया नेचुरालिस्टिक आ गोटे रहा नेचुरालिस्टिक सेटा ये आड करदब है संपूर्ण है क्वेश्चन कर फटाफट कर केतेटा अच्छे मुझे देखीदिए रफली से हिसाब से आम स्पीड करवा हाँ टिके करवा 25टा तापर टिके अच्छी ब्रेक अच्छी हाँ आग 25टा कर दियो फटाफट पूरा स्पीड रैपिड फायर हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी जहाँ आम पढ़ले तारी ऊपर एटी आउ किसी ना बायोलोजिस्ट अच्छे एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे करते लर्निंग ऑफ लैंग्वेज साइंस इज फास्ट करिछि 2 to 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज करिवो जदि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो क्वेश्चन थिबो ताले कोटा करिवो अर्ली चाइल्डहुड ही करिवो अर्ली चाइल्डहुड करिवो ओके ठीक अछि फटाफट व्हिच लर्निंग थ्योरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नो डाउट यस तापरे जीन पियाजे तांकर पेपरटा साइंटिफिक पेपरटा केते एज रे प्रेजेंट करथिले at what age did Jean Piaget presented the paper at what age Jean Piaget presented the paper on scientific discovery बहुत कम एज रे करथिले तो एज ऑफ अराउंड 10 एठी 11 अछि तो 11 करबा हम 10 प्लस रे करथिले ओके बहुत बढ़िया effort of mental ability in between pre knowledge and new knowledge is known as मेंटल स्टेबिलिटी कथा पचारछि एबे हमें डिस्कस करछे जस्ट स्टेबिलिटी टाकू इक्विलिब्रेशन बोली कहबा मेंटल स्टेबिलिटी बिटवीन प्री नॉलेज एंड न्यू नॉलेज अकोमोडेशन कौन देख जिते भी अकोमोडेशन आसूची सेठी चेंज होउची
चेंज थिबो किंबा मॉडिफाई लिखाई थिबो ए दुईटा वर्ड जदि अछि ताले अकोमोडेशन सेंसरी मोटर पीरियड टा केते रु केते एज इजी वन देखो तुमर जदि 0 to 2 इयर्स अछि करबो नहले 0 to 18 मंथ्स जोटा सेटा ही हबो बर्थ टू 18 मंथ चाइल्ड एक्शन आर नॉट ट्रायल एंड एरर रुहेनी छुआ मैच्योर हो गला बस करो इट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज हाउ ट्रायल एंड एरर नो पूरा परफेक्टली करिवो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए गुड स्टेज फॉर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन कोऑपरेशन कंपटीशन लेटर चाइल्डहुड यस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रो एज टा इजी थैंक यू एसपीसीएफ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल सेंसरी मोटर 0 to 2 प्री ऑपरेशनल 2 to 7 कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 प्लस सो एटी कंक्रीट रो पचारिछ आंसर बी यस फ्रेंड्स आज क्लास सबू टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सहित सबू टीचिंग एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम जेटी सेवक सेविका एलटीआर and B.Ed entrance सबूथि important रहिबो and we will cover entire pedagogy today till the end of the session we will cover everything जहाँ भी अच्छी सिलेबस रे जहाँ भी आसीबो से सब जिंस को हमें कवर करबा को जाउछे Vygotsky is the right answer रशियन भाई हमरो yes who among the following may says that children adopt important parts of social skills and make it their own private speech এই লাइन एक्जाक्टली हमें पढ़ी छे this exact line and right answer होची Vygotsky belongs to which country हो देखिलो आसला डायरेक्ट क्वेश्चन कहतली exactly Russia the range of problem a child can solve if given some assistance is popularly known as जदि किसी assistance मिलिला ताहले जो रेंज पर्यंत छुआ जाई परिबो ताकू कोन कहआ जाय yes जोन proximal development no doubt and जो असिस्टेंस सेटा होची कोन असिस्टेंस ता जदि पचार थांदा हितांता स्कैफोल्डिंग बट एटी पचारिची कोन द रेंज ऑफ प्रॉब्लम पचारिची तो कोन बा जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट Vygotsky believed that cognitive development was most influenced by आज थ्योरी प्रैक्टिस सब सरियो यस तो Vygotsky सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज में कहते तीनटा जिनस को इंपोर्टेंट कहते जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी इज द मेजर ऑफ जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज ए मेजर ऑफ छुआर कौन जिनस को जिनस को मापे जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट टा मन रखदा टेम्पररी सपोर्ट होची स्कैफोल्डिंग हाउ मेजर द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर थ्रो जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तार केते क्वालिटी अछि से को पर्यंत जाई परिबो सेटा मेजर करूची yeah believed some tasks are too difficult for children to handle alone but can be done with the help of someone more skilled a task does such task yes fall into the zone of proximal development कहीं निजे छुआ जोटा करूची एका कले difficult too difficult for children to handle alone but can be done with the help of someone more skilled by MKO more knowledgeable other जतबेले हेल्प करिवो टेम्पररी सपोर्ट करिवो से सेटा अचीव कर दोची ताको हमें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोली कहूची यस थैंक यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू ऑफ Piaget regarding learning
लर्निंग विषय रे पियाजे कोन कहितले से स्टेज को इंपोर्टेंस देछंती पियाजे कहले एई स्टेज रे एटा ही हबो आउ अधिका हबोनी पियाजे कहले सेंसरी मोटर रे अछि तो नाइ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस प्री ऑपरेशनल रे अछि तो नाइ एठी कोन करिवो इगोसेंट्रिक रहइबो एनिमिज्म रहइबो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट रहइबो तेणु सी पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस अनुसार से लर्निंग टा प्रभावित हुए बोली कहले कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रो प्रोपाउंडर के डेरी कहीं करिया जनक विषय पढ़िଛ तार आंसर तो जेन पियाजे हो कार्ल रोजर इज ए साइकोलॉजिस्ट को घर कहलो कार्ल रोजर घर कोगा कौन देखले कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं कि कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखले आइडियल सेल्फ आउ रियल सेल्फ नहीं कि वेरी गुड बहुत बढ़िया which is not constructivist view of learning not a constructivist view only teacher can construct habo ki teacher construct karibe ki nai छुआ करिवो who advocated theory of multiple intelligence एबे जस्ट टिके पूर्व देखुथिले 8 प्रकार रो इंटेलिजेंस विषय कहिथिले 8 प्रकार रो इंटेलिजेंस आइडिया ऑफ मेंटल एज वाज अच्छा एटा कहलो एटा एग्जाम रे बहुत बेले आसे बहुत तरह से कर बिनेट after education of child psychology from whom did Jean Piaget take inspiration regarding child education चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़िला परे चाइल्ड एजुकेशन उपरे पढ़िबा पई बा जानिबा पई काठो इंस्पिरेशन मिलितला आइंस्टाइन एटा सबुठ सिंपल क्वेश्चन आराम से कर दियो तापर हमें आउट के थ्योरी पार्ट को जीवा एंड तापर ता सहित रिलेटेड पुणी हमें एमसीक्यूज को देखिबा which of the following intelligence consists of an individual's ability to enable him to know himself निजको निजे जानिबो तो इंट्रापर्सनल टू नो अदर थिले इंटरपर्सनल नहीं बहुत बढ़िया थैंक यू तेबे हमें थ्योरीज ऑफ एजुकेशन रे क्वालिटीज हमें टिके आउट के देखिबा क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर कोन हबा दरकार देखो बहुत टाइम रे एनालिटिकल क्वेश्चन आसे केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आसीबो बोली किछि माने नाही तो टीचर रो एक्चुअली कोन कोन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबा दरकार जो गुडा रहिले हमें पॉजिटिवली आंसर करि पारिबा फर्स्ट है गुड बिहेवियर गुड नॉलेज गुड पर्सनालिटी गुड टीचिंग तापर पंक्चुअलिटी फेयरनेस लाइफ लॉन्ग लर्नर हेतिबो केयर चीयरफुलनेस थिबो ऑनेस्टी थिबो सैक्रिफाइस थिबो एगुड़ा जो ऑप्शन रे थिबो मन रखिता एगुड़ा सब पॉजिटिव वर्ड्स टीचर रो क्वालिटी भितर ए सब जिंस रहिबा दरकार एतक अछि आ भितर किछि भी अछि दैट इज पॉजिटिव वन बोली जानि दिबो हला बिहेवियर नॉलेज पर्सनालिटी टीचिंग तापर हला पंक्चुअलिटी हां पेशेंस ऐड कर दो पेशेंस ड्यूटीफुलनेस हाँ आउ गुड रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स बा रैपो बिल्डिंग ये सब जिनस जदि अच्छी करिवो हाँ चलो ठीक अच्छे क्वालिटीज ऑफ आइडियल टीचर
जो देखिबा पर्सनालिटी केमती हवा दरकार कौन कौन रहिबा दरकार जनरल पर्सनल क्वालिटीज एम्पाथेटिक टीचर एज लीडर attitude भलो attitude towards the profession wide ranging general knowledge and being well versed in many subjects knowledge of the subject didactic knowledge educational methodology ऊपर जानिथिबे फोकस ऑन इंडिविजुअल पीपल को इंपोर्टेंस दउथिबे ए सब क्वालिटीज रहबा दरकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रेट टीचर तो एते दरकार नहीं आउ एगुडा देखौनी बट लीडर हेतिबा दरकार लीडर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन तापर तमरो स्टेनबर्ग कर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच तमर सिलेबस जदि कहबो भी देखै दउछि एडी देखो देखि परलो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच स्टेनबर्ग तमरो सिलेबस रे अछि सो दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू निहाती एटा भी बहुत गुडे इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो तमरो एग्जामिनेशन रे एंड एठु बहुत गुडे क्वेश्चन आसुछि सब प्रकार रो परीक्षा रे तो रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये एंड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेसर थिले कॉर्नेल यूनिवर्सिटी रे अमेरिकन नेशनलिटी ट्रायआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव एंड थ्री प्रोसेस व्यू ए जिनस ऊपर तांकर काम करथिले बट ट्रायआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज द मोस्ट माने नोन जोटा कि हमरो सिलेबस रे भी अछि हला बाबू निजे अछंती रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग वर्तमान अछंती एंड 1949 8 डिसेंबर रे जन्म ग्रहण करथिले रॉबर्ट स्टेनबर्ग ओके तो जो ट्रायआर्चिक थ्योरी देखो फ्रेंड्स बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो एठू तो टिके केयरफुली एंड भलो से मन ध्यान दे कि देखिथिबो ट्रायआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंपोनेंशियल एक्सपेरिएंशियल कंटेक्चुअल ये तीनटा जिनस क्वेश्चन आसियो कंपोनेंशियल एक्सपेरिएंशियल एंड कंटेक्चुअल सब थ्योरी तो जेतेबेले एगुडा आसुची कंफ्यूज कर दोउची काई कंफ्यूज कर दोउची कहली देखो एनालिटिकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस अलग अलग जिनस एनालिटिकल प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव तो एटू कोटा कोन स्टेनबर्ग्स ट्रायआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रे तीनटा सब थ्योरी रहिला तीनटा सब थ्योरी भितरु हमरो जोटा एनालिटिकल रहिला सेटा कोन इवैल्यूएशन सहित कनेक्टेड रहइबो एनालिटिकल टा हमरो एक्सपेरिएंशियल हे परिबो सॉरी एक्सपेरिएंशियल तो अछि कंटेक्चुअल हमरो कोटा हबो एटा कंपोनेंशियल सब थ्योरी हमरो जोटा सेटा होछि मेटा कंपोनेंट्स नॉलेज एक्विजिशन सहित कंपोनेंशियल सब थ्योरी टा कनेक्टेड नॉलेज एक्विजिशन सहित कनेक्टेड अच्छा कंपोनेंशियल टा एनालिटिकल हे परिबो एगुडा टिके केयरफुली देखिबो एनालिटिकल जोटा कंपोनेंशियल एक्सपेरिएंशियल टा हमरो क्रिएटिव हे परिबो तार अलग अलग ना रे लिखा जाइता विभिन्न जगह एंड कंटेक्चुअल जोटा सेटा प्रैक्टिकल हमें कहि परिबा कंटेक्स्ट जेटू प्रैक्टिकल तेनो एटा जानिबा निहाती दरकार हम कोटा कोन कहीं गोटे हिसाब रे तमे जानिथिबो क्वेश्चन रो अलग हिसाब रे आसीथिबो तमे जेतोले कंपोनेंशियल पढुचो सेतोले एनालिटिकल एक्सपेरिएंशियल कहउचो जेतोले क्रिएटिव एंड कंटेक्चुअल कहले प्रैक्टिकल ताकू कनेक्ट कर दबार ओके ठीक अछि तो ये क्रिएटिव प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल अच्छी तो एनालिटिकल जिते कहचे कंपोनेंशियल क्रिएटिव कहले एक्सपेरिएंशियल एक्सपीरियंस सहित रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल कहले कंटेक्चुअल तेणु ये तीन जिन को देखिबार अछि एंड कंपोनेंशियल सब थ्योरी रु बेसिकली क्वेश्चन आसे मेटा कंपोनेंट्स को कहीं कंपोनेंशियल सब थ्योरी जो रहिला या भितर पुनी तीनटा कांसेप्ट रहे गोटे मेटा कंपोनेंट्स गोटे परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स और गोटे नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट एटू मेटा कंपोनेंट
सबुठ इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे कंपोनेंशियल सब थ्योरी रु क्लियर तो यहाँ देखिबो कोन represents higher order executive process employed for planning analysis of problem selection of strategy monitoring of problems possible solution executing the strategy interpreting feedback about the performance तो ये problem को जानिबा एनालाइज करिबा स्ट्रैटेजी बाछिबा प्रॉब्लम सॉल्यूशन को मॉनिटर करिबा एंड स्ट्रैटेजी इंटरप्रेट करिबा और फीडबैक पाइबा ये सब मेटा कंपोनेंट रे जाउची एंड ये कंपोनेंशियल बा एनालिटिकल रे अछि एठू टिके क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि आ बाकी नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट कोन न्यू इंफॉर्मेशन विथ सम ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वे एक्वायर करिबा नुवा इंफॉर्मेशन ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वे नॉलेज एक्विजिशन परफॉर्मेंस होची मेंटल प्रोसेस यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क लाइक टास्क परसेप्शन कांसेप्ट आइडेंटिफिकेशन रेस्पॉन्स मेकिंग तो तमरो काम होची केवल देखो एतिकी एटा मु बुझौची देखो तीनटा सब थ्योरी अछि कोटा नुहे गोटे क्वेश्चन एमती आसीबो contextual experiential componential practical creative analytical एतिकी माइंड रखि दियो केउंटी नुहे आसी पारे ए तीनटा थिबो आ गोटे नथिबो किंबा ए तीनटा थिबो आ गोटे नथिबो दिस इज वन थिंग ये डायरेक्टली एमती क्वेश्चन आसुची किछि असुविधा करबोनी स्टैनफोर्ड करो ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसिला कंपोनेंशियल सब थ्योरी रो तीनटा सब थ्योरी कोन कोन फर्स्ट ला मेटा कंपोनेंट तापर हला परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट आकु भलो भाव जानता मेटा कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स और नॉलेज एक्विजिशन रे न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करिवो क्रिएटिव वे रे ओरिजिनल वे रे परफॉर्मेंस रे परफॉर्म करिवो बा मेंटल प्रोसेस करिवो बा एग्जीक्यूशन करिवो टास्क एग्जीक्यूट करिवो टास्क परसेप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट जोटा रहला मेटा कंसेप्शन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम प्लानिंग स्ट्रैटेजी मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन फीडबैक ये सब जिनस रोचे एथिरे तो कंपोनेंशियल बा एनालिटिकल जोटा हमें कहिले दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन एक्सपीरियंशियल टा क्रिएटिव कंटेक्चुअल टा प्रैक्टिकल एतिकी जानि था किछ दरकार नहीं एगुडा किछ दरकार नहीं एटा कंटेक्स्ट देखो एक्सपीरियंशियल होची इंडिविजुअल इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड विषय जानिबा एक्सपीरियंस करिवा आउ कंटेक्चुअल टा होची जोटा हमर प्रैक्टिकल बोली कुआ गला एटा इन्वॉल्व्स अडॉप्टेशन एंड सिलेक्शन ऑफ शेपिंग वन्स एनवायरनमेंट एतिकी केवल जानो क्वेश्चन नॉर्मली जोटा म कहिली तीनटा प्रकार रो ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो रहला सेठु आसीबो नहले ए तीनटा जिंस परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स नॉलेज एक्विजिशन और मेटा कंपोनेंट सेठु आसीबो एतिकी केवल जानिबा निहाती दरकार क्वेश्चन देखो एबे तमरो हेइ जबो प्रैक्टिस व्यस्त होनी एबे संगे संग हबो yes first question 2K19 OSSTET PYQ चेक करिवो न आज करिबा एबे 2019 रो OSSTET PYQ जमे करिबा आज ही करिबा एही वीडियो रे करिबा टोटल 50 टा जाक क्वेश्चन हमें करिबा PYQ व्यस्त होनी हेगला समस्त स्टैंडबॉक्स किछ असुविधा नै एबे करो कोटी असुविधा मत कहबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस इन कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा बे बहुत इंपोर्टेंस देकी कहते मेटा कंपोनेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ स्टैंडबॉक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कोर ऑफ स्टैंडबॉक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी जोटा मु कहली बारंबार कहली देखो कंपोनेंशियल सब थ्योरी किंबा एनालिटिकल कोई परिबो से कंपोनेंशियल सब थ्योरी ही सबटू इंपोर्टेंट मु कहली एनालिटिकल जोटा मेंटल प्रोसेस कंपोनेंट्स
यूज करिवो मेटा कंपोनेंट रो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस ये सब मॉनिटरिंग ये सब जिंस रहउची तेणु वेरी गुड इट इज मेटा कंपोनेंट सो कंपोनेंशियल रिप्रेजेंट्स हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस इन कंपोनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नंबर 3 ଆମର ଷ୍ଟେନବକ୍ସ theory of intelligence components of theory ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା which of the following is not a part of ଷ୍ଟେନବକ୍ସ theory of intelligence देखो जेमती कहउଥିଲି very simple and direct question yes exponential कोठी थिला दैट्स इट एतिकी केवल अवेयर रहिले काम हो गला खत्म आ ये गोटे दुटा क्वेश्चन आसीबो बी वेरी केयरफुल एंड बी रेडी which of the following part of Stenbock's theory of intelligence is related to individual's external world related to individual's external world practical contextual and practical थिला परा yes education of children with special needs should be provided अच्छा आराम से करो केवल स्टेनबॉक ही रहियो बोली किछ माने नहीं along with other normal students नहीं कि special need अच्छा एबे हमें विलफोर्ड करो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को जीवा कार किछ असुविधा अछि कि अछि ना नहीं पचारछु कि अछि देखि पारलो साइकोमेट्रिक अप्रोच विलफोर्ड क्लियर चलो सो विलफोर्ड कौन कले तांको एसोसिएट्स मानको सहित ये साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेवलप करथिले एंड सेठी से जेतोले काम करथिले मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ऊपर विलफोर्ड comments by identifying a factor called unique ability that is necessary to do well in definite task or test so JP Guilford तम मानकर सम्मुख रे and तांकर पूरा लाइफ अचीवमेंट्स एजुकेशन जेपी गुइलफोर्ड करो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तुम माने जानि छो बट ता पूर्व इन अदर वर्ड्स बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस psychometric approach to understand the nature of intelligence was given by Thurston, Guilford, Gardner तीन जन जाक देथिले and syllabus रे के अछंती Thurston, Guilford and Gardner नाहंती की पढिबानी जदि कहबो चलो so friends Guilford 3D model of intelligence called structure of intellect model तीनटा बेसिक पैरामीटर्स देथिले के कहि परिबो कि देखेबा पूर्व anyone structure of intelligence model SIO SOI sorry structure of intelligence SOI model বা 3D model of intelligence yes कौन कौन बेसिक पैरामीटर थिला operations component sorry content and products operation content and products वेरी गुड बहुत बढ़िया थैंक यू जो मैंने आगु कही ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट्स तो ऑपरेशंस रे कोन पांचटा जिंस अछि बेसी डिटेल रे एटा भी जिबा दरकार नै केमते क्वेश्चन आसीबो केमते करबा सेति कि हम डिस्कस करबा वी डोंट नीड टू गेट स्पेशलाइजेशन ओके ऑपरेशन पांचटा जिंस रहउची कॉग्निशन मेमोरी कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इवैल्यूएशन एटा एति कि केवल जानि थाओ कंपोनेंट सॉरी हमर जो कंपोनेंट्स रहला तीनटा राइट ऑपरेशन अंडर पांचटा मेन ग्रुप अछि कॉग्निशन refers to discovery and recognition memory retention जहां हम चिनुचे जानूचे पढुचे ताको रिटेन करके रखवा मेमोरी
generation of information from given information होउची convergent thinking. Divergent होउची creativity सहित connected. Evaluation होउची reach conclusion and decision as goodness, correctness, suitability and adequacy. ये होउची evaluation. Operation under रे पांचटा रहिला. Content होउची second way to classify intellectual factor. कंटेंट अनुसार जदि कहवा फिगरल कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट, सेमाटिक कंटेंट एंड बिहेवियरल. फिगरल कौन? मटेरियल परसीव्स थ्रू द सेंसेस, सेंस माध्यम रे जानले. सिंबॉलिक लेटर्स डिजिट्स माध्यम रे जानले. सेमाटिक verbal meaning or ideas. बिहेवियरल सोशल इंटेलिजेंस. केवल एतिकी if possible you can get the you can pick the screenshot नहीं पारिबो. ये वाला कंटेंट. तापर हमें नेक्स्ट पार्ट को जल्दी जीवा प्रोडक्ट्स कौन? प्रोडक्ट्स रे बहुत गुड़ा अच्छी 6 प्रकार यूनिट है पारे, क्लासेस, रिलेशन, सिंबल, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लिकेशन. किंतु तुम माने देखिबो एबे जानिबो केते सहज. क्वेश्चन भी बेसी डिफिकल्ट आसेनी. गुइलफोर्ड करो and his associates were working in the psychological laboratory in which university? एबे पढ़िले. कैलिफोर्निया. Which of the following is not the three way of classification of देखलो कोटा अलगा पचार देला सरला. हमें एबे रिसेंटली देखि तो माइंड रो अछि एग्जाम बेल को माइंड रे थिले हला. दैट्स इट. बेसी भीतर घंटी बनी बी श्योर एते डेप्थ को जाई कि क्वेश्चन सेट करिवेनी. से माने कहि छंती मते पीडीएफ मागी छंती मु देई देबी. तो से हिसाब रे क्वेश्चन आसीबो. प्लान इज द राइट आंसर. नु है कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट थिला हमर. Which is most important fundamental operation of learning process? कोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है. एक विल फोन करो क्वेश्चन ये भी. बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन. थैंक यू एवरीवन. कग्निशन ही हेड. तापर तमे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कोन करिवो से पछ कथा. फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ लर्निंग कग्निशन. ऑपरेशन ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कहिछि. क्रिएटिव आरे काहे की गलो फंडामेंटल कहिछि. तो सेत में कह क्वेश्चन जेतले पढिबो बल से पढिबो एंड रेस्पेक्ट दे की पढिबो. कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू संगे संग करो रैपिड knowledge. Psychologically, the stage of development with more adjustment problems is को stage of development रे अधिक adjustment problem हुए. Adolescence, very good. Period of stress and storm कहितले हल. Who among the following says that children adopt important parts of social speech and make it their own private speech? माने अछि त ना गोटे थ्योरी आ गोटे थ्योरी को नाही सेमती हबनी. यस वेरी गुड. स्पीच असला, लैंग्वेज असला, कल्चर असला, वाइगोट्स्की. एबे देखो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस ता केमतिया ये सब थी दरकार. इंटेलिजेंस कहले इंटरेस्ट, एटीट्यूड, डिजायर ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेटिव स्किल, स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये सब जिंस. इंटेलिजेंस आर ग्रेट इंपैक्ट ऑन साइकोलॉजी. इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. एटा गोटे आसे. हां चलो ठीक है. माइंड रे गुडा थाउ बेसी मु प्रेशर दवा चाहूनी तुम मान को. साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय थॉर्स्टन, गुइलफोर्ड, गार्डनर. कहिछि आगरो कोन साइकोमेट्रिक अप्रोच. अच्छा ठीक अछि. एल थॉर्स्टन को पाकु आसो. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन भी आसे को कंट्री रो एल थॉर्स्टन. According to this theory of intelligence, neither consists of two factor proposed by Spearman nor multi-factor developed by Thorndike. बुझलो. Multi-factor theory of intelligence was given by किए एडवर्ड थॉर्नडाइक. अच्छा आउ गोटे कहला theory of multiple intelligence was given by theory of multiple intelligence. एबे कहितली पढी चाम
एठी हावर्ड गार्डनर मल्टीपल हावर्ड गार्डनर ओके किंतु मल्टी फैक्टर आसले थंडाई बढ़िया तो ये जोटा देले थर्स्टन देले सेटा स्पीयरमैन को भलिया टू फैक्टर नुह कि मल्टी फैक्टर नुह थंडाई को भलिया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर को भलिया ये गोटे अलग देले ये थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन कहला कहला वर्बल फैक्टर गोटे न्यूमेरिकल फैक्टर मेमोरी फैक्टर स्पेस रिलेशन वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर perceptual speed factor inductive reasoning factor deductive reasoning factor problem solving factor the two factor theory spearman multiple intelligence theory gardner multi factor थॉर्स्टन तो एठी जो जिनस गुड़ा से कहले थॉर्स्टन को थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रे तो जहाँ कहते केवल देखी दियो वर्बल फैक्टर विषय कहले वर्ड आइडियाज विषय न्यूमेरिकल फैक्टर कहले न्यूमेरिकल कैलकुलेशन विषय मेमोरी फैक्टर कहले मेमोराइजिंग क्विकली विषय रे स्पेस रिलेशन स्पेशियल फैक्टर कहले थिंक ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स एट ए रैपिड रेट सेमती वर्ड फ्लुएंसी थिंक ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स एट ए रैपिड रेट जोटा कि इन्वॉल्व वेयर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड अच्छा एटा स्पेस रिलेशन एंड वर्ड फ्लुएंसी एका टाइप रो जिंस तापर परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली कोनटा जिंस जानिबा इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग जानिजो तम माने नहीं कि इंडक्टिव कोन स्पेसिफिक एग्जांपल रू कंक्लूजन ड्रॉ करूचे हाँ कौन कही एसआईटी स्पेसिफिक रू जते आम जनरल को जाऊे बा एग्जांपल रू जते आम बढ़ जाऊे रूल को जाऊे एटा हूँ इंडक्टिव तार उल्टाटा डिडक्टिव जीडीएस जनरल रू जते आम स्पेसिफिक को जाऊे किंबा रूल रू जते आम एग्जांपल को जाऊे बट एगुड़ा भी एग्जाम रे निहाती आसे इंडक्टिव डिडक्टिव इज ए मस्ट काइंड ऑफ थिंग बुझी पारुछ हाँ इट इज ए मस्ट काइंड ऑफ थिंग चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर अच्छा ठीक अच्छे तो आम क्वेश्चन को जी लेक्सिकल मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज एबे गोटे लाइन आमे पढ़िले मु राउंड कर देथि the capacity to acquire and apply knowledge is intelligence अच्छे बस सब जिनस से कहे थियोरी इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टाट हाँ जहाँ भितर बहुत गुड़े प्रैक्टिस पशिकी मिसिकी थाए हाँ थॉर्स्टन इज द साइकोलॉजिस्ट ऑफ एबे कले स्पीड टिके जाओ स्पीड टिके जाओ चलो 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 कौन अच्छे अमेरिका इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया सवाल मेंटल ऑपरेशन कंस्टिट्यूट ए ये एत गुड़े फैक्टर विषय में कथा तो ग्रुप फैक्टर ही हम ग्रुप फैक्टर हम जेहतु आम रिसेंटली थॉर्स्टन को विषय भी कथा तो देख यही जिन गुड़ाक एग्जाम आसे जो कग्निटिव कथा कौच से पियाजे जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौच से वाइगोट्स्की जो केवल सोशल कौच देख केवल सोशल कौच एरिक्सन जो इमोशनल कौच श्रॉफ जो मोराल कौच कोलबर्ग जो लैंग्वेज कौच नोम चोम्स्की मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे एमती डायरेक्ट आसीबो ओके दिस सेशन इज ए मास्टरपीस जे पढ़िला तार हला हला माने होछ तो गुइलफोर्ड साइकोमेट्रिक अप्रोच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेनबर्ग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोजर लाइक करने को भूली जाइए सेटा भी मु कहबी कि एंड आउ टिके फ्रेंड्स मान सहित शेयर जो मैंने करिन से काइंडली कर दियो बिकॉज दिस सेशन इज विल कंटिन्यू ये कंटिन्यू करिवो एबे सरिवार नै
It will be a non-stop session and it will cover everything that you need for OSSTET and for teaching exams and B.Ed. सब पूरा टोटल कंप्लीट हो 2 फैक्टर थ्योरी के देखिए स्पेयरमैन इज द राइट आंसर फोन को चार्ज रे लगे बस जाओ वर्बल फैक्टर रिलेटेड टू वर्बल कोई चीज यस कंप्रेhension पनिशमेंट इज ए क्वेश्चन टा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत तरह से कि नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल कहीं रीइंफोर्समेंट रो देखो जानी थाओ पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट भितर फरकटा एटा कांसेप्टटा बुझी जाइतले जहा क्वेश्चन असले एनालिसिस कर दबो पनिशमेंट रो सब बळे रिजल्टटा नेगेटिव बट रीइंफोर्समेंट रो से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो बुझी पारछ कोन कहूची पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो तार रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बुझी पारलो सो रिजल्ट कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो पॉजिटिव दउछ शाबाश वेरी गुड वेल डन कोन कलु निया लगै देलु मस्त पिला तू हमर शाबाश कोन छियो तू छप्पर फाड़ी देलु आज पर्यंत के एमदिया काम कर नथले बहुत बढ़िया शाबाश बहुत भलो पढु सो ये जो बहुत भलो शाबाश वेल डन एगुडा होची पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव कोन एग्जांपल तुम मानकु देइथिली मनकर शांति रे बसिक पढुछो क्लास करछो एक्सप्लोरिंग गोल्स रे गदिया दळंक सहित माती जाइछो निया लगै चलछो से समय गोटे बाहर गोटे डिस्टर्बेंस साउंड ते आसिला तमे चाहुनो निजको डिस्टर्ब करबा को कबाटटा बंद कर देलो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अवॉइड करबा नेगेटिव जिंस को अवॉइड करबा ओके सो ए दीटा जाकर रिजल्ट पॉजिटिव ही आसो एटा हम करिचे रिसेंटली करिचे विभिन्न क्वेश्चन कला बेला हम करिचे सो अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन प्रथमे हाँ अट्रैक्ट करबा अटेंशन तापरे जा टू मेक अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ गेट टुगेदर टा हबो गदिया दल सब आसीबे गोटे बड़ पार्टी गोटे हबो हां कुंभ मेला टाइप रो गोटे हबो तो अरेंजमेंट करिवार अछि अरेंजमेंट माने ऑर्गेनाइजिंग बुझलो ऑर्गेनाइजिंग according to Robert Stenberg 3 different types of acquired intelligence for creativity are एबे करो देखो अलगा जो मु कहितली से टाइप आसला क्वेश्चन एबे अलगाटा आसला देखो Stenberg's triarchic theory of intelligence analytical creative practical analytical critical बस बस ठीक अछि analytical practical is must तो मोर अप्रोप्रिएट कोटा हबो सिंथेटिक टा हबो देखो जेते बेला एटा आसुची सेते बेला एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल तो क्रिएटिव नाही सिंथेटिक अछि क्रिटिकल हबोनी तो ए हबो मोर अप्रोप्रिएट देखो केमती चेंज हो जाई पारे
बुझीगला तो एनालिटिकल जिते आम कहे क्या बुझे कौन कहली कंपोनेंशियल जोटा फास्ट थिला मन पका प्रैक्टिकल जिते कहली कंटेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल टा होची क्रिएटिव सिंथेटिक एटा को क्रिएटिव कर दियो क्रिएटिव बा एक्सपीरियंशियल क्लियर हम चलो जीवा को थैंक यू common technique to help people begin the creative processes brainstorming au kono ama jinsota anything that causes a reaction is called reaction response जो to ase stimulus through response aswa kono okay idea of practical learning means education should apply to the କରିଛି ଆଗରୁ ବି କରିଛି ଏଇ क्वेश्चन गुड़ाक एक्चुअली सेठू सब डिराइव होची हमर प्रायरचिक थ्योरी हला गुलफोर्ड कर थ्योरी हला गार्डनर कर थ्योरी हला डिफरेंट टाइप रो थ्योरी रो ही डिराइव हुए क्वेश्चन सो हियर इट इज रियल वर्ल्ड an aspect of pragmatism is experiential learning नहीं कि which says education should come through क्वेश्चन नहीं आंसर अच्छी किसी बार नहीं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग pragmatism कहूची education should come through experience pragmatism coach philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good citizens application of ideas knowledge and skills to achieve the desired result is called desired result पाइबा पई अप्लाई करूची आइडिया को नॉलेज को स्किल को सब लगेई दूची रिजल्ट पाइबा पई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा यस जॉन डीवी कहले स्टूडेंट सेंटर्ड एटा पुनी हमें पढ़िबा थ्योरी रे भी पढ़िबार अछि अच्छा किंतु एटा इजी क्वेश्चन जॉन डीवी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ ए टीचर रो रोल को टाइप रो डेफिनेटली जॉन डीवी कहचंती एंड एनसीएफ भी कहउची फैसिलिटेटर ही हबो एठी यस बहुत बढ़िया in cooperative method teachers act as a delegator means the teachers act as a and dash to the student बस बस सुनांगा यस दिव्यस्मिता कल्याणी कल्याण अच्छा जावियर चंद्रशेखर कौन आज कौन है माने एते जोर माती जाइछ पूरा वेरी गुड रिसोर्स डेलीगेटर मीन्स टीचर एक्ट्स एज ए रिसोर्स जेतबेले दरकार दियो आइडिया राइट नले आराम से चुपचाप बस किसी दरकार नहीं नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट इवैल्यूएशन भी आज अच्छी नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट जेतबेले कहूची इंटरव्यू प्रोजेक्ट क्विज हबो किंतु ऑब्जर्वेशन हबन राइट आगुरु भी एक क्वेश्चन आमे करिछि डिस्टिंग्विश द कॉल्स ऑफ बर्ड्स टू डिस्टिंग्विश द कॉल्स ऑफ बर्ड को बर्ड रो कोटा शब्द कोटा स्वर डिस्टिंग्विश करिबाटा कोन हाँ 5 AM आगुरु होतला एबे 1 AM होइछि चलो to distinguish the calls of birds perceptual learning is needed कौन दरकार perception दरकार perception कौन बुझছো तो
हाँ माइंड रे आसी शुणिच जानिच सेटा को यूज करूच परसेप्चुअल लर्निंग ओके अकॉर्डिंग टू स्किनरियन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज देखो एबे आसिला से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जोटा मु कहितली एग्जांपल देइतली एबे ताकू कनेक्ट कर देलो जदि मु खुशी हे जिवि मुगम्बो खुश हुआ कोई रिमूव करूचे किछि हम अच्छा ठीक अछि current positive reinforcement requires the individual to imagine performing a particular task or behavior followed by a अरे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टा गोटे काम तमे कल गोटे काम तमे कल पर्टिकुलर टास्क टे कल परफॉर्म कल तापर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट केते बेले पाइबो जेते बेले तार पॉजिटिव कन्सिक्वेंस थिबो ना गोटे काम कल जेते बेले भलो रिजल्ट आसिला सेते बेले तमे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साबासी पाइले पॉजिटिव कन्सिक्वेंस रहइबो यस A very useful principle of learning is that a new response is strengthened by very useful principle of learning कोटा न्यू रेस्पॉन्स टाको केमती स्ट्रेंथेन करि परिबा नुवा रेस्पॉन्स टाको हमें केमती स्ट्रेंथेन करि परिबा जे हां एटा आउथरे कर जते बेले ताको रीइंफोर्समेंट दबा सेते बेले से स्ट्रेंथेन करिबा बा आउथरे से करिबा पई ता भीतर आग्रह आसीबो यस कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट schedule is generally used कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट अर्ली स्टेजेस रे दरकार छोट छुआ को कंटीन्यूअसली रीइंफोर्स दरकार शाबाश भलो कलु बढ़िया हां पारिबु ए जिंस रिपीटेडली कहबा दरकार सेटा अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग रे कुआ जाय सब बेले नो who elucidated continuity theory of reinforcement in the post pronounced and consistent manner किए देइथिले एति कि केवल क्वेश्चन टा हला who proposed contiguity theory of reinforcement एडविन रे गुतेर ओके रीइंफोर्समेंट ऊपर आंकर थ्योरी थिला स्टिमुलस रेस्पॉन्स ऊपर थिला एंड कनेक्शनिस्ट थ्योरी तांकर आसीथिला कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग विषय से कहिथिला who referred to call classical conditioning by the name sign learning who called classical conditioning by the name of sign learning क्लासिकल कंडीशनिंग के देइथिले पावलोव देइथिले ओके से भी रशियन साइकोलॉजिस्ट तो ताको साइन लर्निंग किए कहिथिले यार राइट आंसर आई थिंक मोरर होची राइट आंसर बट चेक करिवो इट आई एम नॉट श्योर वेरी श्योर हां ओके हु प्रोपाउंडेड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग एटा एग्जाम रे आसे बहुत तर हु प्रोपाउंडेड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग एटा मैं एग्जांपल देकी भी कहे गाड़ी चलै की देखाए कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट
विक्टर ब्रूम नहीं जी, यस वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, हु सेड दैट, इट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दैट एनी एक्ट इज ए मूवमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। किछिटा क्वेश्चन हमर थाउ एमदिया जा द्वारा हमर स्ट्रेंथ ता बने की थिबो आउ पांचटा क्वेश्चन पर हमें पुणी अलगा पार्ट को जिबा। एटा भी गुथेर कहिसंदी। According to Guther, forgetting is not a matter of delay of old impressions and associations, but a result of inhibition of old connection by new one. According to Julian theory, under the pressure of needs and drives, the organism undertakes, जो प्रेशर थाए, नीड थाए और ड्राइव थाए, से ऑर्गेनिज्म कौन करे, एडॉप्टिव एक्शन आसे ता भीतर सब जिनस को एडॉप्ट करि जाय सहजरे। Hall believes that no conditions will take place unless there is need reduction. एटा मु डायरेक्ट कहि दउची काहे कि दिस आर नॉट एक्जेक्टली माने करबा बेसी टिके डिफिकल्ट होची तुम मन को पय। स्किनरियन थ्योरी, एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग अप्लाइज टू। यार राइट आंसर होची रेस्पॉन्स, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। इफ लर्निंग इन सिचुएशन ए मे फेवर, एटा कर दबो समझते। ए सिचुएशन रे जहाँ तुम लर्न करछ ताहा फेवर कला, इन्फ्लुएंस कला लर्निंग इन सिचुएशन बी, ताले ये को टाइप रो लर्निंग, को टाइप रो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बहुत सहज। जदि हेल्प करूची ताले इट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जदि कंफ्यूज करूची ताले नेगेटिव ट्रांसफर, और जदि किछि प्रभाव पकोनी ताले जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, if learning situation A has detrimental effect on learning in situation B, then we have, this is also very easy, and ये transfer of learning, negative transfer, yes। एबे ब्लूम्स डोमेन विषय टिके देखि दबा, हमर जेहेतु अफेक्टिव डोमेन हमर CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, देयर आर 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग, तीनटा डोमेन्स ऑफ लर्निंग अछि। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग विषय आम डिस्कस करवा, एंड तुम मान को मु गैप देवी, चिंता करिवार किछि नै। जो माने कंटिन्यूअसली 6 टारू क्लास करूछ, यू विल गेट ए गैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 आवर। जेतोले 3 घंटा कंप्लीट हे जो मींस आउ आधा घंटा पर यू विल गेट ए गैप ऑफ 1 आवर। सो 9 रु 10 यू विल गेट ए कंप्लीट 1 आवर रेस्ट। 10 रु हमें पुणी स्टार्ट करबा। ओके, हाँ, सो रिलैक्स एंड आराम से पढ़ो, किसी असुविधा नहीं, यू विल गेट अ रेस्ट, डोंट वरी। एंड यही वीडियो ही कंटिन्यू करिवो, दिस वीडियो ओनली। ओके, यही वीडियो ही कंटिन्यू करिवो एक्जाक्टली 10 टारू आगो को, 10 PM रु फॉरवर्ड टिल टुमारो। हाँ, चलो एबे ब्रेक नहीं, 9 टारे ही ब्रेक मिलिवो। चलो, कॉग्निटिव डोमेन जेतेबेले आसुची देखो, ये होची, दिस वाज द फर्स्ट डोमेन टू बी प्रपोज्ड इन 1956। फर्स्ट डोमेन टा 1956 रे कॉग्निटिव डोमेन आसीतिला। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विषय आम जो देखा, ताले ये देख आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहला फास्ट हो बेसिक, जिते एमती स्ट्रक्चर करवा ताले एमती आसीबो। नॉलेज फास्ट रहिबो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। गॉट इट? क्लियर? चलो ठीक अछि। अफेक्टिव डोमेन टा का सहित रिलेटेड, फीलिंग सहित रिलेटेड एंड इमोशन सहित रिलेटेड सब क्वेश्चन आसीबो। CAP cap, cognitive, affective and psychomotor, 3 domains are there. Cognitive is related to head, thinking, imagination, reasoning, memory. Affective is related to feelings, emotion. Psychomotor is related to what? अच्छा एटा देखि दियो, जेतबेले हमें अफेक्टिव डोमेन कथा कहूचे सेतबेले रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ए सब जिंस आसे। एंड तापर जेतेबेले साइकोमोटर को जिबा, इट इज कनेक्टेड विथ फिजिकल फंक्शंस। साइकोमोटर लेवल बा फिजिकल एक्शन, एग्जांपल डिसेक्टिंग ए हार्ट एंड देन ड्राइंग इट। हार्ट रो डिसेक्शन करबा और ड्रॉ करबा, ये होची साइकोमोटर एक्टिविटीज रहिला किछ करले किछ हम। तो एगुडा मु बेसी तमन को डिटेल रे कहूनी। तापरे गैग्नेस कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जानी था रॉबर्ट मिल्स गाग्ने,
आंको ऊपर भी क्वेश्चन आसी आगरू एंड 5 कंडीशंस ऑफ लर्निंग देथिले कौन 5टा कंडीशंस ऑफ लर्निंग गाग्ने देथिले देखो वर्बल जोटा होची वर्बल इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव डोमेन सहित इंटेलेक्चुअल स्किल कॉग्निटिव डोमेन सहित कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज तापर मोटर स्किल साइकोमोटर डोमेन रो एंड एप्टीट्यूड्स अफेक्टिव डोमेन रो these are the 5 different conditions of learning given by Gagnes conditions of learning माने रखता किए देथिले क्वेश्चन आसे 5टा conditions of learning सेमिति गाग्ने 9 level of learning 9टा levels of learning देथिले 5टा conditions of learning 9टा levels of learning ओके तापर जेरोम ब्रोनर तो माने जानिचो एग्जाम रे बार बार क्वेश्चन आसे ब्रोनर स्पाइरल करिकुलम कंसेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम किए देथिले ए गोटे क्वेश्चन निहाती आसे ओके चलो ठीक अछि जेरोम ब्रोनर स्पाइरल करिकुलम ब्रोनर तीनटा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थिला इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक ये भी क्वेश्चन आसे व्हिच इज नॉट one of the modes of representation as per Brunner तो इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक को छाड़ी के आ गोटे जहां देथियो प्रोडक्टिव दे देथियो ओके तो सेठी कंफ्यूजन हमारो चांस अछि क्लियर हां सुचिस्मिता कोन हला ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू फिजिकल एक्शंस आइकॉनिक होची विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज वाया विजुअल इमेजेस एंड सिंबॉलिक होची थ्रू वर्ड्स एंड सिंबल्स ओके मस्लोस हायरार्की ऑफ नीड हार्वर्ड गार्डनर कर मल्टीपल इंटेलिजेंस एटा ईयर भी आसे फ्रेम्स ऑफ माइंड केबे आस्थिला 1983 कोन देथिले मल्टीपल इंटेलिजेंस पढिचे डिटेल पढिचे आउट मन पकई ओके एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे से जो पढ़ुले एरिक एरिक्सन से थिले एंड जेरोम ब्रोनर से थिले तांका अंडर रे पढिचंती के हार्वर्ड गार्डनर तो ये भी क्वेश्चन आसे बेले बेले जे हु इज द टीचर ऑफ हार्वर्ड गार्डनर इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एरिक एरिक्सन एंड जेरोम ब्रोनर हाँ बस स्पाइरल करिकुलम चलो ठीक अछि आ बेसी किछि कहूनी इंटेलिजेंस मु कहि देछि आ विल नॉट नेचुरलिस्ट तभी आड हेछि कि एरिक्सन करो अच्छा एटा दिस इज इंपोर्टेंट वन तो ये जो आम सिलेबस डिस्कस करते एरिक्सन थ्योरीटा आम पढ़ा बर्तमान सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज ऑफ एरिक्सन एंड तुम ब्रेक पूर्व ये लास्ट डोंट वरी ओके ना जॉइन करी हबनी कहीं हम इफ यू वांट टू जॉइन एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन जस्ट गिव मी व्हाट्सएप मैसेज एप्लीकेशन रे 399 रे जॉइन करि परिबो किछि प्रॉब्लम नै ओके एंड कंबो सब्सक्रिप्शन ऑल टीटी एंड टीचिंग एग्जाम्स पय अछि बीएड एंट्रेंस पय अछि सब अलग अलग अछि कोर्स फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप करि परिबो 8917214900 ओके एंड वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे एप्लीकेशन रो लिंक अछि त माने डायरेक्टली सेठी जाके परचेज भी करि परिबो नो इश्यूज एट ऑल नाउ इट इज सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज ऑफ एरिक्सन 8टा स्टेज सेठी कि पढिबा वर्तमान बिफोर द ब्रेक एरिक एरिक्सन वाज a stage theorist who developed Freud's psychosexual theory and adopted it into psychosocial having both psychological and social aspect तो ये एरिक एरिक्सन का थ्योरी टा एक्चुअली सिगमंड फ्रूड्स का थ्रू डिराइव है एरिक्सन वी एक्सपीरियंस 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो एरिक्सन का जो 8 स्टेजेस थिला 8टा स्टेज विषय रे सेतरु फर्स्ट होची ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो एग्जाम रे क्वेश्चन मस्ट आसीबो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मस्ट आसीबो क्वेश्चन ओके सो देखो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 to 1.5 years infants must learn that adults can be trusted if treated poorly children may grow up feeling mistrust towards people तेणु एटी माँ पाखरे माँ पाख को जीव बापा पाख को जीव तापरे गाँ छुआ गोटे आसिकी आम घर को बुले नेबी कहले कांदिबो दिस इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ऑटोनॉमी वर्सेस तापरे धीरे धीरे सेही छुआ सहित जो ट्रस्ट डेवलप कर जीवो से ता सहित जीवा को भी राजी हो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट 1.5 ରୁ 3 मी डू इट स्टेज एटा
ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट कौन करिवो प्रेफरेंस देखिबो से ओके प्रेफरेंस हिसाब रे करिवो सेम एंड डाउट माने सॉरी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम माने लाजो भी लागुथिबो एंड करबा को भी चाहूथिबो तापर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी एज 3 to 5 लर्निंग टू प्लान एंड अचीविंग गोल्स इन्वॉल्विंग अदर्स अन्य को इन्वॉल्व करके गोल अचीव करबा को चेष्टा करिवो मो पई एटा करो बोली कहबो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी एज 3 to 5 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी 5 रु 12 आसिला चाइल्डहुड पूरा एंड एडोलेसेंस आरंभ पर्यंत से माने कंपेयर करबा स्टार्ट करनते चिल्ड्रन स्टार्ट टू कंपेयर देमसेल्फ विथ देयर पीयर्स ओके एंड सक्सेस हवा को चाहंती स्कूल वर्क करती सोशल फैमिली एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स रे पार्टिसिपेट करती इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियर फील करती जदि कंपेयर करती अन्य छुआ मान सहित जेहेतु तापर आसला तुम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जोटा कि एडोलेसेंस पीरियड टा पूरा रोल कंफ्यूजन माने हु एम आई व्हाट डू आई वांट टू डू इन माय लाइफ ए सब जिंस क्वेश्चन आसे मु कोन कले मो सहित पूरा बेस्ट हबो बेस्ट फिट्स तापर आसला इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन जोटी से स्टेबल हो गला स्टूडेंट प्रोग्रेस कला एंड लाइफ रे इंटिमेट रिलेशनशिप को आसला तो ये मैरेज एंड मैरेज पर स्टेबिलिटी लाइफ रे आसला इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन ये 40 रु 65 वर्ष पर्यंत मिडिल एडल्टहुड एटी से पेरेंटहुड बाता काम करे एंड सोशल रेस्पेक्ट को इंपोर्टेंस दिए सेल्फ इंप्रूवमेंट को इंपोर्टेंस दिए बेनिफिट्स को एंड पीपल अदर पीपल्स फिगर स्ट्रांगली बेनिफिट ऑफ अदर पीपल्स फिगर तापर हला ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर जतबेले लेटर चाइल्डहुड को सॉरी लेटर एडल्टहुड को हमें पहुंचुचे सेतबेले हमर गोटे फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और फेल्युअर मो जीवन रे एते सब करिछि बोली सैटिस्फाई भी फील हुए आ एटा करि पारलिनी बोली दुख भी आसे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर जो स्टेज रे वर्तमान मो अछि ये स्टेज रु बहुत ऊपर आउ गोटे स्टेज थिले भी एरिक्शन करो मु थांती नहीं कि हमर स्पेशल स्टेज एटा एनीवे तो ये थिला ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर एठी फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड फेल्युअर फील फेल्युअर विल often obsess with ideas of what they should have could have ए टाइम रे से माने चाहंती जे मो एटा करिछि मते प्रशंसा करंतु समस्त मते भलो बोली कहंतु समस्त हां आउ अल्प तो अछि आउ हमें पहुंची गले सॉरी सॉरी बाउ टिके तापरे हमें ब्रेक नवा जस्ट गिव मी सम मिनिट्स तापरे असले कोलबर्ग कर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल डेविड कोल्ब देथिले सॉरी कोलबर्ग नो कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कंफ्यूज होबनी डेविड कोल्ब अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट ये 4 स्टेज ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग देथिले चारिटा स्टेज ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग फर्स्ट होची कंक्रीट एक्सपीरियंस तापर हला रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन गोटे हला फील एंड वॉच थिंक एंड वॉच थिंक एंड डू फील एंड डू एमिति चारिटा स्टेज कोल्ब देथिले हाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन देखो मु टिके खाली कहि दूची हमरो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्किनर देथिले कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग किंतु थॉर्नडाइक रो लॉ ऑफ इफेक्ट सहित कनेक्टेड ये एंड रीइंफोर्समेंट व्हाट टा किए देथिले रीइंफोर्समेंट टा स्किनर रिफाइंड द लॉ ऑफ इफेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग रीइंफोर्समेंट लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक करो लॉ ऑफ इफेक्ट टा प्यूरिफाई हला रीइंफोर्समेंट द्वारा स्किनर का द्वारा तेणु एटा कंफ्यूज करे सब पड़े ओके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन प्रेज आउ किछि कोनी पूरा बेसिक प्रेज प्रशंसा कार्ल रोजर को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रोजर्स ह्यूमनिस्ट थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्टली आती पारे आउ किछि दरकार नहीं साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट
क्लाएंट सेंटर्ड एजुकेशन क्लाएंट सेंटर्ड थेरापी डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो क्लाएंट सेंटर्ड थेरापी किए देथिले कार्ल रोजर टीचर को रोजर फैसिलिटेटर हिसाब रे देखिथिले चलो ठीक अछि ये वर्तमान मु तमन को कहि देबा को चाहूची जे नेक्स्ट व्हाट विल बी देयर थ्योरीज हमें पढ़िले हमें सब थ्योरीज पढ़िचे नेक्स्ट व्हाट विल बी देयर हमर नेक्स्ट पार्ट रे हमर रहिबो हमें डिस्कस करबा पूरा 2019 रो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ता पूर्व मु गोटे जिंस आ कहिबी दैट इज हमर यस हमें कार्ल रोजर करे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़िले कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़िले एटा भी पढ़ी देजे सब जिंस राइट हमें बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग पढ़िबा बट ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक और लर्निंग सेंट्रिक ये जो पार्टटा अच्छी दिस ए वेरी इजी पार्ट बुझे लगे बहुत इजी पार्ट एटा हमें सहजरे ताको कवर करि परिबा किछि बड़ जिंस नाही एठी तो देखो पियाजेंकर एटा तो आमे करिचे एटा आमे डिस्कस करिबा बाकी अछि ओके हमर जो लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ए दुईटा जिंस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आउ बेले बेले ये जो लैंग्वेज लर्निंग जो LSRW स्किल अच्छी या ऊपर क्वेश्चन बेसी आसे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग या ऊपर क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी बेसी ता सहित एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस एक्विजिशन एंड लर्निंग दुईटा जिनस भितर फरक गोटे आसे आम जो सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज पढ़ुचे लर्निंग करने को पड़ो बट एक्विजिशन इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस बा नेचुरल प्रोसेस तेणु लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोली गोटे जिनस माइंड रे अच्छी ब्रेन भितर अच्छी बोली कहिले किए किए कहिले यस वेरी गुड नोम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विषय कही लैंग्वेज विषय कही आउ यहाँ जो मुझे कहते तुम मानक मोटर लर्निंग वर्बल लर्निंग कंसेप्चुअल लर्निंग एमती तीन टा जिनस अच्छी मोटर है वॉकिंग ड्राइविंग क्लाइंबिंग मोटर रे फाइन मोटर अच्छी आउ ग्रॉस मोटर अच्छी ग्रॉस मोटर रे जिते लार्ज मसल यूज होची फाइन मोटर जिते स्मॉल मसल्स यूज होची सेमती वर्बल रे स्पीकिंग साइन पिक्चर सिंबल कंसेप्चुअल रे थिंकिंग रीजनिंग इंटेलिजेंस ये सब जिनस रही तो चॉम्स्की पाखक मुझे जाऊँगी नोम चॉम्स्की जो आम रही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस गोटे ब्रेन भितर अच्छी बोली कहले एवरी पर्सन पोजेसेस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चिल्ड्रेन ओनली लर्न वर्बली एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अप्लाइज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस नो नीड टू लर्न ग्रामर से कहले जो मदर लैंग्वेज शिखुची छुआ को लैंग्वेज ओनली मदर टंग ओनली से कौन प्रकार ग्रामर शिखा दरकार नहीं ये ऑटोमेटिक ग्रामर शिखीज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस माध्यम ओके तो तांकर व्यू पॉइंट जोटा थिला ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रेन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन अलोन केवल इमिटेशन करके लैंग्वेज लर्न करि परिबेनी तापर समस्तकर व्यू कौन थिला बीएफ स्किनर कर व्यू प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एटी मु केवल कहबी मोटिवेशन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग ए लैंग्वेज दस लर्नर शुड बी मोटिवेटेड तो मोटिवेशन तो सबुति पई दरकार अछि एंड ऑडियो विजुअल एड्स रहिला आमे तापर इंटरेस्ट कोरिलेशन एक्यूरेसी प्रपोज ये सब जिनस रहिला एंड LSRW स्किल मल्टी स्किल अप्रोच तो एगुड़ा एते डिटेल आमको दरकार पड़ोनी आम नेक्स्ट आम जा आग को बढ़ा जिते एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी को पढ़ा एजुकेशनल मैनेजमेंट को पढ़ा टेस्ट कंस्ट्रक्शन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ये जो पार्ट आम बाकी रहा दिस विल बी ए वेरी इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन असेसमेंट दिस विल बी वेरी इंपोर्टेंट इनफॉर्मेटिव तेणु जो पार्ट नेक्स्ट रहा एलोंग विथ दिस मु स्टार्ट करी फ्रॉम दिस वन कोटा कहला एटा जो आमर 101 रु 150 पर्यंत 2019 रो OSSTET अच्छी OSSTET रो क्वेश्चन भी एनालिसिस करबा ता सहित थ्योरी रो पार्ट एंड प्रैक्टिस ये सब जिनस अच्छी
right? तो आप किसी क्वेश्चंस करके ही एंड करिवा, ओनली सम क्वेश्चंस। पर बहुत इजी अछि। माने ब्रेक करिवा, एंड नो ब्रेक करिवा। यस, बहुत बढ़िया। तो इट इज इंपोर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव न करके हमें कौन करवा कथा, कोलैबोरेटिव करवा कथा। बहुत बढ़िया। Teachers should understand the social, cultural, religious, linguistic diversity in our classroom to facilitate meaningful learning. बढ़िया। किए कहते children's thinking is qualitatively different from that of adults. Ink change ओके, ठीक अछि, कर दूँ। को कलर दरकार तुमको कोना? चलो, Jean Piaget is the right answer. During the period of childhood development, डेवलपमेंट केवे भी क्वांटिटेटिव केवल होगा नहीं, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होगा नहीं कि? यस, बढ़िया। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, a child centered classroom which one is which? चलो जहाँ भी कहो क्वेश्चन कौन कहूँ बुझो और आंसर करो। तो देखो ये कहला टीचर यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर, फ्लेक्सिबल एंड कैटर द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर सेग्रीगेट सेटा भी हबनी, तो एटा भी हबनी, तो आंसर कौन होगा कथा? बी होगा कथा, राइट, जोटा कि पॉजिटिव अछि। Children with dyslexia can be identified by? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है परिवो? रीडिंग तो अच्छी ना, राइटिंग टा डिस्ग्राफिया हवा कथा, बट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग देयर रीडिंग कर देले भी हे जाउची। रीडिंग तो इंपोर्टेंट, ठीक अछि। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ? यस, इट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डिवाइड्स असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क रे डिवाइड कर दोची जहां असाइनमेंट आपको दिया जायछि त। यस, इट विल बी सब गोल एनालिसिस। बहुत बढ़िया। राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन एनैक्टेड इन द ईयर? यस, 2016। स्पीड टिके करो। When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called?
C is right. Concrete thinking. According to experience, interpret question, analyze question, तो concrete होगा. Decision maker children analyze the problem, list the alternatives and design each option for its advantages and disadvantages. Since behavior reflects कोथरे फायदा अच्छी कोथरे लॉस अच्छी कोन डिसीजन नवा पूर्व अल्टरनेट्स देखुचंती सब जिंस तो एटा होची विजिलेंट. ओके यस. School is an institution of socialization of children where school children occupy the central position. बढ़िया. Concept of intelligence question IQ was developed by. Turn is the right answer. Very good. Pooja forgot to bring her tiffin to school and asked Fareen to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." It I would call it. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Pooja ro statement ta ko stage ro Pooja अछि बोली जनाउछ. Yes. Lawrence Kohlberg moral development रो को स्टेज रे अछि एक्सचेंज बा कन्वेंशनल स्टेज रे अछि. कन्वेंशनल स्टेज जोटा प्री कन्वेंशनल पास्ट हमर जो अछि रोछि अवॉइडिंग पनिशमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. एटी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन हमें कहि परबा. कोलबंग कर हमर जोटा रोछि सेकंड लेवल सेटा होछि कन्वेंशनल एक्सचेंज. यस. According to Jean Piaget theory of cognitive development, hypothetical deductive reasoning develops during. Yes, most important. Never discuss करिछि आज ए सेशन रे तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर. जदि जदि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव न होई कि कोन क्रिटिकल थिंकिंग हेतांता कंक्रीट हेतांता. Role of heredity and environment in human development is correct. Yes, right answer होछि heredity and environment both influence human development in a complex interplay. Both ro role roles. Yes, and it is the product of heredity and environment. Student shows the following signs in the classroom. एथु कोन जाना पड़छ? एंजाइटी around reading, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skill, difficulty with understanding and remembering. Indication of कोन? Yes, ये सब student with learning disability. तार learning disability अच्छी बोली दर्शौछ. Yes, not an effective strategy for teaching learning. Not effective strategy. Reproduction of knowledge. कहीं एटा memory सहित connected. Rote learning. नहीं कि study हो. Which of the following factor affect learning? सब होबो. Yes, very good. Family and neighborhood are so simple and easy. Family and neighborhood
को एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी सो एटी रहिले आमे वी विल मीट अगेन एट 10 pm जो माने वीडियो को लाइक करिनो समस्त लाइक कर दियो एंड टिके जो माने शेयर करिनो शेयर कर दियो सो दैट जो माने जॉइन करनांते से माने दफ्तर जॉइन करिवे एंड दैट विल बी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट अगेन बहुत इंपोर्टेंट पार्ट जोटा सिलेबस रो अछि हमें नेक्स्ट आमे कवर करबा को जाउछे असेसमेंट इवैल्यूएशन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग addressing classroom diversity educational management school management is सब जिनसो रहिबो so again this will be very important part in the next part at 10 pm exactly समस्ते 10टा बेलू पुणी थरे एही लिंक रे ही जॉइन करिवो exactly 10 pm रे तो तम माननकु गोटे घंटार ब्रेक दिया गला you can eat you can drink you can charge your phone and come back with recharge and निजर माइंड को भी रिचार्ज कर दियो रिफ्रेश हो जाओ पूरा पॉजिटिव वे पुणी थे आम स्टार्ट करवा आज स्टार्टिंग रु स्टार्ट हो राइट चलो थैंक यू पुणी देखा 10टा तो खाई पी की हाँ चलो ठीक बढ़िया वेरी गुड ताले अटेंडेंस पकेलो सब अटेंडेंस कम सरला कि आम ये थिले हो 21 कलर चेंज करियो कहबो नले हाँ चलो वार्म अप जल्दी 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 पूरा फुल कंसंट्रेशन full which one of the following statement is true about ability and ability grouping हाँ हाँ एते प्रणाम खाओ हाँ कंसंट्रेट करा टिके हाँ ओके वेरी गुड थैंक यू डाकी आसो बजिया दल टिके डाकी दियो मु टिके डाकी दउछि हाँ तो राइट आंसर होछि टीचर्स may use multi level teaching to cater to different ability groups कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस अछि तो वैरायटीज ऑफ छुआ अछंती ओके चलो ठीक तेणु मल्टी लेवल टीचिंग मल्टीपल वे रे हम पढ़ाइबा चलो ठीक अच्छे टीचर्स मस्ट believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learner teachers must believe in which of the following values in the context of dealing in the context teachers must believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learners क्या ऊपर विश्वास करबा दरकार पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस टीचर सब बेले पर्सनाली नवार अछि जिनसटा को जे पिला सक्सेस पछरे केमती टीचर रेस्पोंसिबल रहिबे यस बहुत बढ़िया many measures have been taken at instructional level to check the dropout cases in the schools run by government agencies which of the following is an institutional reason for children dropping out of these schools कहीं drop out होच रीजन कौन ड्रॉप आउट रो कारण कौन हाँ ताको बाहर छिड़ा कर दे ताको हाँ ताको 2 मिनिट बेसी ठिया करिवनी बुढ़ा छुआटा there is no alternative curriculum for children who reject compulsory curriculum offered
एक्चुअली कौन हुए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्लैकबोर्ड की टॉयलेट एमती नुह कि एक्चुअली कंपलसरी करिकुलम बा स्टैंडर्ड करिकुलम को समस्त को फॉलो करने को पड़े तेणु एमती गोटे अलग करिकुलम किसी ना कि अल्टरनेटिव करिकुलम किसी ना जहाद्वारा रखी हम बुझीपार तो यस द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट से ओबी भी आसला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वेरी गुड आरटी आसला राइट टू एजुकेशन इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट कोटा इमोशनल इंटेलिजेंस सहित रिलेटेड नुहे क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन इमोशन को क्रिटिसाइज करू जो हम कि ओके चलो 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 ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर स्क्वायर टे ड्र करने मु तो डिफिकल्टी फेस कर देखो कौन है गलानी एनीवे he she assumes that the student would also find it difficult to draw a diamond he she applies which of the following principle जदि जने स्क्वायर करि पारुनी ठीक रे से डायमंड भी करि पारिबोनी एटा को टाइप रो अजम्पशन आज ही पड़ी छे यस यस फॉलो करे ऑर्डरली सीक्वेंस तमे जदि स्क्वायर करि पारनो ताले डायमंड केमति करिवो जने सर्किल करि पारुनी तो स्क्वायर केमति करिवो बुझि पारछो ना नै तो ए सब जिंस गोटे ऑर्डरली सीक्वेंस डेवलपमेंट फॉलो करे से सी एटा ड्रॉ करि पारिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट यस कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट से कौन कले से कहले यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर समस्त गोटे सीक्वेंस करते यस देयर आर ए फ्यू चिल्ड्रेन इन योर क्लास हु मेक एरर्स which of these is most likely to be your analysis of the situation भाभी चिंती की कर ए क्वेश्चन गुड़ा बहुत एनालिटिकल अछि right answer hochi the children have not yet gained conceptual clarity and there is need for you to reflect on your pedagogy conceptual clarity tankoro nahi seti pai few children in your class who makes errors which of these is most likely to be your analysis because conceptual clarity tankoro asini need for you to reflect तो तुम निजर भूलटा कौन अच्छी पेडागोजिकल कनसेप्ट को केमती आम पढ़ेबा आमर पढ़ेबार शैली रे कौन असुविधा अच्छी से एनालिसिस करवा which of these is characteristic of child with learning disability जल्दी जल्दी समस्त आसीगले पुणी आम सिलेबस को जंप करवा एठू सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो मैंने आसी ना सहित टिके शेयर कर दियो समस्ते and which of these is a characteristic of child with learning disability बोली कहूची तो difficulty in reading fluently and reversing words yes socialization is a process of socialization कहले कौन it is acquiring values beliefs and expectation socialization माने value belief और expectation को acquire करवा बा connect करवा deal करवा which of the following statement best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky भाभी चिंती की करिवो ठीक हवा कथा निहाती relationship between development and learning as proposed by Vygotsky
Yes, very good. Development process lags behind the learning process. Development lags behind learning. तो सब बेले सी कहले डेवलपमेंट कहले डेवलपमेंट माने कग्निशन कग्निटिव डेवलपमेंट कथा कह एंड लैक्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस माने लर्निंग आग हम जमती कि लैंग्वेज शिखा आग लैंग्वेज लर्निंग एटा फास्ट आसीबो फास्ट हैला परे जाई कि डेवलपमेंट हम बा कग्निशन कग्निटिव डेवलपमेंट हम एटा वाइगोट्स्की कहते तार जस्ट उल्टाटा लर्निंग प्रोसेस लैक्स बिहाइंड डेवलपमेंट कहते किए पियाजेट राइट वेरी गुड. According to Gardner's theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most for being a self-aware individual would be निजको निजे अधिका चिन्हिबा. Yes. आसलो के समस्ते सब जल्दी आस हमर प्रैक्टिस चली जल्दी जल्दी जॉइन करो समस्ते पुणी जोरदार आगो को बढ़िबा एंड एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड थ्योरी और बाकी अछि बहुत हमको आज कवर करिवार अछि ए सेशन में. यस इंट्रापर्सनल निजको निजे जानू राइट. सो सेल्फ अवेयर हम इंट्रापर्सनल स्किल माध्यम रे हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. rationale behind inclusive education is that भाभी चिंतित करो आराम से. इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं की दरकार कहीं ना सोसाइटी इज हेटेरोजेनियस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेटेरोजेनियस सोसाइटी. हेटेरोजेनियस माने विभिन्न रकमर लोक अछंती तमे जीती तुम बेस्ट फ्रेंड भी सीमती नुह तुम निजक पचार हाँ तुम बापा माँ भी सेमती नुह अलग कथा कौन कह तेणु हेटेरोजेनियस अच्छी वेराइटीज लोक अच्छा तेणु इंक्लूसिव एजुकेशन दरकार नहीं कि individual difference. Amount and type of scaffolding to a child would change depending on the केते scaffolding दवा scaffolding टा कोन वाइगोट्स्की कहले एटा कोन टेम्पररी सपोर्ट कहा को केते सपोर्ट दरकार. यस यस वेरी गुड. ऑल आर यूनिक इन देयर ओन वे. यस यस इवन ट्विन्स भी समान नहंती आई बिलीव सर जहा कहले. ओके इट इज स्कैफोल्डिंग कथा कहा जाउची अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस. चाइल्ड को लेवल रो परफॉर्म करूची से अनुसार ताको केते सपोर्ट दरकार से अनुसार प्रोवाइड करा जिवा दरकार. ओके there are vast difference among students. Of these a teacher needs to be sensitive to. टीचर को जिनस ऊपर सेंसिटिव हवा दरकार जेहेतु डिफरेंस अच्छे अमंग स्टूडेंट्स. आराम से करि परिबो. यस तो बोथ 1 and 2 निश्चित रूप से डिफरेंस कॉग्निटिव एबिलिटी एंड लर्निंग लेवल ऊपर भी अच्छी लैंग्वेज कास्ट रिलीजन जेंडर कम्युनिटी सब ऊपर भी रोच. चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी struggle with some aspects of learning कोठी ना कोठी स्ट्रगल करूच. यस in a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky. Piaget और Vygotsky कंस्ट्रक्टिविज्म विषय रे कहितला कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे लर्निंग कोन हबो. बहुत सहज क्वेश्चन आराम से करि परिबो. कंस्ट्रक्टिविस्ट कहला माने कंस्ट्रक्शन होची तार नॉलेज रो एंड के करूची स्टूडेंट निजे करूची तो इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल. यस सबस थैंक यू. Which of the following statements about motivation and learning is correct?
लर्निंग और मोटिवेशन सहित कनेक्टेड क्यों स्टेटमेंट ठीक अच्छे मोटिवेशन एंड लर्निंग सहित रिलेटेड करेक्ट कोटा तो एक्सटर्नल रिवार्ड्स रे मोटिवेशन टा ठीक ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन टा ठीक निश्चित रूपे इंट्रिंसिक तो एक्सट्रिंसिक ठीक हबनी हाँ नॉट प्ले एनी रोल कहला मोटिवेशन तो आम भकुआ तुमको हाँ मोटिवेट करूछु वीडियो बनाऊछु मोटिवेशनल कथा कहूछु कोट्स आणुछु डिफरेंट टाइप रो एग्जांपल्स आणुछे एंड बेले बेले आमे भी काहाकू मोटिवेट करूछे आमे भी काहा द्वारा मोटिवेट होउछु सो ये मोटिवेशन निहाती दरकार बट इंट्रिंसिकली आउरी बढ़िया काठू नहले भी निजठू हवा दरकार एंड इनसाइड निज भीतर नहीं कि वेरी गुड environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup this statement is बोलसे देखो एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल कहीदेला डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक मेकअप दिस स्टेटमेंट इज बहुत बढ़िया शाबाश फ्रेंड्स समझते खाना पीना मस्त करिछो तो हाँ मकर संक्रांति स्पेशल इनकरेक्ट हबो कहीं डू नॉट प्ले एनवायरमेंट डू नॉट प्ले कहीदेला तो incorrect अछि since environmental factor contribute little in individual growth since there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development एटा निश्चित रूपे सी हबो कहीं लिटिल बोली कहीं कहबा हमें लिटिल नहीं 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 मेजर इन्फ्लुएंस रहउची डेवलपमेंट ऊपर एनवायरमेंट को ओके चलो बहुत बढ़िया हाँ मस्त से खाई दीचो खाना पीना खत्म था चलो बहुत बढ़िया शाबाश concept of private speech of children as proposed by Vygotsky the concept of private speech टा कौन Vygotsky थ्योरी पूरा पढ़ी देले आराम से करि परिबो शाबाश चिल्ड्रेन कैन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन निजो एक्शन को निजे गाइड करबा पई जो स्पीच को यूज करंती ताकू प्राइवेट स्पीच को आ जाए शाबाश A textbook of class 8 has following illustrations women as teachers maids while men doctor and pilots this type of depiction is likely to promote जदि वोमेन को टीचर आउ मेड चाकराणी हिसाब रे देखौची आ मेन को डॉक्टर आउ पायलट हिसाब रे देखौची ताले ये नो डाउट जेंडर स्टीरियोटाइप या वेरी गुड अकॉर्डिंग टू थियोरीज ऑफ मोटिवेशन a teacher can enhance learning by टीचर केमिति एनहांस करि परिबे लर्निंग को थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हिसाब रे आसो जल्दी जल्दी पूरा पळे आसो 50 पर्यंत दिबा तापर वी विल स्विच टू थ्योरी प्रैक्टिस एंड फाइनल प्रैक्टिस विल बी द OSSTT PYQ जोटा टीचिंग एग्जाम्स पाई भी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहइबो यस एंड B.Ed एंट्रांस बहुत इंपोर्टेंट रहउची तमन पई So yes friends, according to theories of motivation, a teacher can enhance learning केमिति by realistic expectation रखिबा द्वारा मु जदि एक्सपेक्ट करबी तमठू जहा रियलिस्टिक जहाटा जोटा एक्सपेक्टेड करा जाई परिबो माने करो दास बाबू को जेटो एक्सपेक्ट करूची मु से निश्चित रूपे 98% रखिबो ता बोली को मते सेटा एक्सपेक्ट कले हबो कि हां मोटू तमे एक्सपेक्ट करिवो जहा ले भी सही 38% ना मत दास बाबू सहित कंपेयर कले हबनी बुझेल तो सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिबार अछि काटू केते एक्सपेक्ट करबा अदरवाइज प्रेशर हिजो एबे मते कहबो तमे नाही से 98% रखि देला तू काहे कि 98% न रखिलु सेटा ही परिबनी रियलिस्टिक रख बस इन कोऑपरेटिव लर्निंग
older and more proficient students assist younger and lesser skilled students. This leads to that's why Uncle simple like 42. Higher achievement and self-esteem is the right answer, friends. Higher achievement and self-esteem. Nishchita. Correct. A teacher always helps her learners like the knowledge they have derived in one subject area with knowledge from other subject area. This helps to promote. Right answer होउची correlation and transfer of knowledge. बहुत बढ़िया करूच आज गोटे माने गोटे अलग माहौल बनैछ आज तमरो माहौल कि जीवन पाइछ. A teacher engages her learners in a number of group activities. बहुत गुडे group activities ले engage कर दैछ टीचर काको learner को, such as group discussion, group project, role play, etc. The learning dimension it highlights is तमे द्वितीय कुछ कहनी आखि पड़ जाइतला डाकी देली. लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी कहीं ग्रुप प्रोजेक्ट हो रोल प्ले हो सबुठी देख सोशल कहीं जड़े एकुटिया यहाँ किसी भी करें ग्रुप डिस्कसन हो ग्रुप प्रोजेक्ट हो कि रोल प्ले हो सबुठी टुगेदर जो टुगेदर गोटे कम हो तो निश्चित रूप सोशल. लर्नर्स आर advised to involve their learners teachers are advised to involve their learners in group activities because besides facilitating learning they also help in learning तो हो किंतु ग्रुप एक्टिविटी द्वारा लर्निंग सहित आउ कौन अधिक हो पार बहुत सहज. सोशलाइजेशन आउ कौन हम एबे तो डिस्कस सेटा ही करछ हम. एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट includes everything except. हाँ मधुस्मिता हाँ हाँ कौन हम सेल्फ डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कोटा इंक्लूड करूनी एनवायरमेंटल फैक्टर रे. अरे एनवायरमेंटल फैक्टर रे कोटा जाऊनी एटा एटा को फैक्टर हेरिडिटरी कहीं तुम फिजिक्स केमती हम तुम जीन डिसाइड कर जहाँ तुम पेरेंट्स को आस. ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस टा को स्टेज रे हुए पचार जल्दी करो. ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस टा 0 to 2 years. Sensory motor. Which of the following critique of theory of multiple intelligence? Theory of multiple intelligence रो नेगेटिव साइड टा कोन बा क्रिटिक कोन? एटा ए हबो multiple intelligence are only the talents present in intelligence as a whole. एमिति आउ कहा जाउनी जे मल्टीपल इंटेलिजेंस भाग भाग करके कोठी हिसाब करा जाए जे एटा तार अछि सेटा यार नाही हमर यार इंटेलिजेंस केमति अछि कहले हां एटा सेमति चलिबो एमति कहउछे ये भलो पढुनी से भलो पढुछ बट मल्टीपल इंटेलिजेंस को केते बेले प्रैक्टिकली हम देखुछे ना आज ए होल ही करा जाउछे सेटा ही यार क्रिटिक. ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट प्रमोट करिवो असेसमेंट को प्रमोट करूची हम इंटरनल फीडबैक पाउचे ठीक अछि. सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस रिफ्लेक्ट द टॉपिक टट किंतु टेस्ट स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल पागल कर दबो ना कोन फ्रिक्वेंटली टेस्ट करी करी बुझी पड़छो. एंड या पर हम थ्योरी को जीवा an inclusive school reflects on all of the following questions except
inclusive school reflects all of on all of the following questions except. So we believe that all students can learn. Yes. Do we work in teams to plan and deliver learning enabling environment? ठीक अछि. Do we properly segregate special children from normal? हमें segregate वा separate करिवा पाई inclusive education करिचे कि? No. So this is the right answer. Thank you. We adopt strategies catering for the diverse need of the students. ये भी ठीक अछि. So except जेहेतु कहिचे आंसर कोन हबो? C हबो. 3 हबो. बुझी पारलो? चलो ठीक अछि. एबे मु मोर टार्गेट को गली पुणी तमरो सिलेबस आ एठी लिखा जाइछि. देखो कोन लिखा जाइछि. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गोटे रहउछि एंड बहुत इजी पार्ट गोटे रहउछि. जोटो जहा क्वेश्चन आसले तम माने इजीली करि परबो. ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग. जोटो क्वेश्चन बार-बार आसे इंपोर्टेंट आसे. वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम हमरो अछि. जमते तुम मैंने देख लो वर्तमान स्क्रीन रे सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड आउ टीचर सेंटर्ड करिकुलम. टीचर सेंट्रिक हाँ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसेस देखिए कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी प्रोसेस अच्छी टाइप्स अच्छी. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड. सब्जेक्ट सेंटर को आउ कौन कहि परिबा हमें करिकुलम सेंटर. एई सेशन परे यू डोंट नीड टू go through pedagogy again. तुम माने जो पार्ट गुडा में कवर कर दोची यू डोंट नीड टू वॉच. जस्ट प्रैक्टिस कले हे जिवो एंड प्रैक्टिस भी आज आमे करछे. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन. तुम मानकर जदी इंटरेस्ट रहिबो मु मैक्सिमम कवर कर देबी. मैक्सिमम माने मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to give your kind attention and interest in this session so that it will be easy for me to continue and cover everything. Okay, so curriculum center कहि परिबा, subject center टा learning center कहि परिबा. आ कोन कहि परिबा learning center. हमें learning center विषय रे बेसी चर्चा सब बळे करूछु हला. learner centered और learning centered. learner रे तो child centric हे गला एटा. टीचर सेंट्रिक तो जना पड़ गला टीचर सेंट्रिक बोली. लर्निंग सेंट्रिक टा होची लर्निंग आउटकम. ठीक अछि. लर्निंग आउटकम को हमें फोकस करिवार अछि. ठीक चलो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जते बेले कहूची कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तमन को देखा जाउछ त एटा क्लियर अछि. त सब्जेक्ट सेंटर इट एम्फसाइज ऑन टीचिंग सब्जेक्ट मैटर. curriculum subject matter is selected and organized before the actual teaching and आपको organize करा जाउची. ता सहित सब्जेक्ट को मेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर कोन एथिरे सब्जेक्ट सेंटर रे कोन होची स्कोप ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज क्लियरली डिफाइंड. क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हेल्प द रियलाइजेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को रियलाइज करिवार हेल्प. ऑथोरिटेटिव कंटेंट देखो हम कहि दउछि एठी डायरेक्टली तुमको मेन पॉइंट को नै जाउछि. सब्जेक्ट सेंटर रे dominated by examination, narrowly conceived, emphasize on memory, bookish and mechanical, on psychological, rigid and uniform. देखो सब गुडा नेगेटिव अछि. सब्जेक्ट सेंटर बा करिकुलम सेंटर जते बेले कहउछि किंतु एटा लर्निंग सेंटर टू फरक अछि. लर्निंग सेंटर सहित आकु कंपेयर कले हबन. फॉलो बैंकिंग अप्रोच. बैंकिंग अप्रोच बुझछो त कोन माने जेमति तुम बैंक को गलो पैसा देलो पैसा आनिलो बा चेक देलो पैसा आनिलो हाँ बा डिपोजिट कलो रिसिप्ट आनिलो. सेमिति बैंकिंग अप्रोच रा एमती एजुकेशन टा नुहे किंतु बैंकिंग अप्रोच को फॉलो करछि. प्लान्ड बाय एडल्ट्स, सिंगल ट्रैक कम्युनिकेशन, हेवी एंड ओवर क्राउडेड. ये सबु जिंस टिके नेगेटिव लागुनी तुम मन को. सो सब्जेक्ट सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड आर डिफरेंट. डू नॉट कंपेयर देम. सब्जेक्ट सेंटर्ड कहि देले सब्जेक्ट को ही इंपोर्टेंस दिया गला. केमती कवर करबा, केमती एग्जामिनेशन दबा, केमती मेमोराइज करबा, ए सब जिंस आसी गला. बट लर्निंग रे कोन होउची लर्नर भी सेंटर्ड रे रहउची. मु कहि दउची देखो याकू छाडी देली चाइल्ड सेंटर को पळे आसो जानिबो. एबे चाइल्ड सेंटर्ड रे कोन हुए
करिकुलम इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस को होल ऑफ रे देख ली यस बैंकिंग सिस्टम वेरी गुड डिपोजिट एंड विथड्रॉ वाला नहीं समझ नो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम टा होची नीड छुआर नीड इंटरेस्ट और कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड को इंपोर्टेंस दिया जाए देख लो कौन तीन जिन कहली ये तीन जिन बहुत इंपोर्टेंट कैपेसिटी माने एबिलिटी ओके पार्टिसिपेटरी टीचिंग को इंपोर्टेंस दिए डिस्कवरी टेक्निक ऑफ लर्निंग को इंपोर्टेंस दिए देखी दियो तापर मु लर्निंग टा एट द एंड कहबी लर्निंग सेंटर टा चाइल्ड सेंटर बुझीगल क्या इंपोर्टेंस दौचे वेरी पॉजिटिव वन ओके एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स in the form of posing problems asking question collecting information doing experiment preparing ads सबु थिरे एक्टिव रोल रहिला कार एक्टिव पार्टिसिपेशन रहिला छुआर तो एटा तुम जानिचो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम टा काहे की इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल काहे की चाइल्ड रो साइकोलॉजी को हमें स्टडी करछे तारो इंटरेस्ट को नीड को एबिलिटी को एज को ग्रेड को लाइफ ऑफ द चाइल्ड देखो मु जानिछे तुम जानिछो ए वर्ड्स गुरा रिपीटेडली कान शुणिले कौन हम मुंड को जीव अटेंशन सहित जो शुणव मुंड को जीव ना ये पलैब मुंड को गले कौन हम एग्जाम जो बसी गोटे क्वेश्चन पढ़ ऑप्शंस गुड़ाक एनालिसिस कर से बहुत पॉजिटिव माइंडसेट सहित तुम आंसर को ठीक करदे बहुत भल प्रभाव पड़ो बैलेंस डेवलपमेंट को इंपोर्टेंस दिए कहीं फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल मोराल एगुड़ा एक बेले सडनली माइंड को आसेनी पढ़ी बार बार पढ़ी आस बैलेंस डेवलपमेंट कहले कार डेवलपमेंट तुम कह फिजिकल मेंटल इमोशनल देख लो कितना मन पड़ा तीन मोराल एंड सोशल माइंड को ही आसुनी सो केते जल्दी जल्दी करार अच्छे सेटा मु कहूँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट आमे यस प्रिपरेशन फॉर लाइफ चाइल्ड केमती प्रिपेयर हो पार तार एवरीडे लाइफ सहित चैलेंजेस ऑफ लाइफ को केमती डील करिवो एम्फसाइज ऑन एक्सपीरियंस चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एक्सपीरियंस को लर्निंग एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस दूची लर्निंग बाय डूइंग ये सब वर्ड्स आछे देखो धीरे धीरे ये नॉट ओनली कन्फाइंड टू टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू दिस ओनली ये टोटल पेडागोजी को धरिक बुलुची एंड पेडागोजी गोटे एमतिया जिंस तुम काठू भी क्या अलग करके छाड़ी पारनी आ छाड़ीदेव जदि ताहले बुझीपर यस लर्निंग बाय डूइंग आसला ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी आसीबो एक्टिव पार्टिसिपेशन आसीबो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आसीबो कंस्ट्रक्टिविज्म आसीबो लर्निंग बाय डूइंग आसीगला फ्लेक्सिबल इन नेचर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज फ्लेक्सिबल एंड adjustable to the needs of the students maximum freedom is provided to the child for free expression maximum freedom दिया जाउची चाइल्ड को एक्सप्रेस करि परिबो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करबा को चांस दिया जाउची ओन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन नॉलेज स्टूडेंट डेवलप नॉलेज स्किल वैल्यू रिटेंशन ऑफ नॉलेज केमिति ताको इंटरेस्टिंग करा जिवो इट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस लर्नर्स इंटरेस्ट लेवल एक्टिव एंगेजमेंट ये वर्ड गुड़ा खाली शुण ये वर्ड गुड़ा केते काम दब तुम निजे मत कह ओके तापर डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स includes challenges and games involving real life problems encourages the learners to think of solutions the problem solving skill automatic develop creative learning hela collaborative learning तापर आसुची कोलाबोरेशन कहीं से सोशल हो गला से माने मिसिकी कले लर्नर्स हैव टू इन्वॉल्व देयर पीयर्स सुपीरियर्स इन कंप्लीटिंग द एक्टिविटी तो ये सब देखो केते पॉजिटिव वर्ड्स रो गैदरिंग रे आमे पढुचे केते इंपोर्टेंट जिंस गुडा को पढुचे सेमिति डिमेरिट्स भी अछि टू मच इंडिपेंडेंट हे जानते छुआ माने एजुकेशन एज सॉफ्ट पेडागोजी नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ये सब देखा छुआ बेसी रडंती पार्टी करिवे टीचर सेंटर को तापर हम जीवा एठी देखो
टीचर सेंटर्ड रे एठी असुविधा कोन थिला जे हमको चेंज करबा को पड़िला आमे काहे कि टीचर सेंटर्ड रु लर्नर सेंटर को एंड लर्निंग सेंटर को गले टीचर पूरा इंपोर्टेंट रोल प्ले कला टीचर प्ले an important role in the development of the student he participate in a number of activities at the classroom level but students कोन हे passive recipient of knowledge exclusively students कोन कले केवल सुनिले during activities students work alone and collaboration is discouraged collaboration रहिलानी टीचर सेंट्रिक रो कैरेक्टरिस्टिक है टीचर तक एक्सीड स्टूडेंट्स तक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सब बेला एटा क्वेश्चन रे आसे टीचर स्ट्रक्चर अधिकार रहे एज कंपेयर टू स्टूडेंट तक अब पूरा होल क्लास सहित इंस्ट्रक्शन हुए तो एटा लेक्चर मेथड में फॉलो करू ओके ठीक अछि टेक्स्ट बुक ऊपर बेसी डिपेंडेंट है गले and classroom furniture is usually arranged into rows of desk or chairs facing chalkboard with the teacher's desk nearby तेणु गोटे नॉर्मल अरेंजमेंट ही रही तेणु टीचर सेंटर्ड करिकुलम रे मेरिट्स कोन रहउतला क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स सहज रे एटा काहे कि फॉलो करा जाय तमन को बारंबार कहि जेते बेले लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिबे भास्ट करिकुलम थी लेस टाइम सेते बेले एई मेथड को हम फॉलो करि जोटा टीचर सेंटर्ड करिकुलम बा टीचर सेंट्रिक मेथड बा लेक्चर मेथड बा ट्रेडिशनल मेथड एठी डिजायर्ड गोल को अचीव करी हबो साइकोलॉजिकली साउंड सब्जेक्ट मैटर कंटेंट सब्जेक्ट मैटर इज लॉजिकली अरेंज्ड टीचर फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी इज एनकरेज्ड कोऑपरेशन इज डेवलप्ड इजी एक्सेस टू रिसोर्स एक्सपर्ट नॉलेज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सब सहज रे हे परिबो किंतु असुविधा कोन लैक ऑफ कोलैबोरेशन टीचर सेंटर्ड रे क्रिएट्स बोर्डम पिला सोइबे लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन पिला प्रकाश करि परिबेनी मनर भाव को लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड टीचर ऊपर पूरा डिपेंडेंट हे जिवे शॉर्टेज ऑफ स्किल टीचर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स रहिबो ए सब जिंस देखियो को मिले तो मो बेसी समय नेबिनी मु कहूछ आई विल नॉट टेक ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स एबे देखो no need to make notes now just concentrate on the class so एठी कोन हला मु ब्रीफली जदी कहिबी टीचर सेंटर्ड child centered and now learning centered तमे एगुडा सब जानि टीचर सेंटर्ड जते बेले कहूचे एटा टिके कोन हे जाउची छुआ पाई डिफिकल्ट हे जाउची माने एक्टिव रहउनी इनएक्टिव हे जाउची इनएक्टिव चाइल्ड और सेटा ही सबटु बड़ प्रॉब्लम हे जाउची चाइल्ड सेंटर्ड रे चाइल्ड निजे कंस्ट्रक्ट करची नॉलेज को एंड एक्टिव रहउची एंड चाइल्ड को एक्टिव एक्सप्लोरर हमें कहि परिबो एठी और लर्निंग सेंटर्ड रे चाइल्ड को इंपोर्टेंस दिया जाउची बट ता सहित लर्निंग आउटकम को इंपोर्टेंस दिया जाउची लर्निंग आउटकम हाईएस्ट प्रायोरिटी नउची एठी लर्निंग सेंटर्ड रे तो inactive or passive child it is passive listener only it is active doer by explorer it is learning outcome की इंपोर्टेंस दिया जाउची चाइल्ड को भी इंपोर्टेंस दिया जाउची तेणु एटा को वर्तमान समय पई बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग बोली को आउची दैट्स इट एठी अब तमरो अधिक टाइम mo नेबी तापरे मु तमरो एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी को जीवी एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी ऊपर जेहेतु मु क्लास आगु करिछि ए पार्ट रो एलटीआर पई भी सो आकु मु ब्रीफली जस्ट तमन को टिके मने पकैबी जे एक्चुअली क्लासरूम डाइवर्सिटी कोन आ ताकू केमती हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देखुचे केमती टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करूचे ग्रुप लर्निंग स्मॉल ग्रुप लर्निंग इंडिपेंडेंट लर्निंग कहला adapting curriculum to the needs of the child with special needs of multilingual education ए सब जिंस ऊपर फोकस करिछि।
सो एक्चुअली आम जिते करुचे से फास्ट जिनस आम क्लासरूम डाइवर्सिटी को केमती देखुचे एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी आम केमती करुचे सो ओके समस्त डाउट क्लियर होची थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लाइक्स समस्त लाइक कर वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद हाँ लेट्स सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम चलो सेलिब्रेट कर दियो डाइवर्सिटी को आमर जो प्रकार डाइवर्सिटी एठी अछि वर्तमान क्लास रे हाँ गधिया दलंकर जो वेराइटी यही जिनस ही एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी रोच और मुझे जानी तुम सियाड़ कल आसो बोली हाँ टी आज कहीदि जे आज टी क्लास चलती हाँ एड्रेसिंग डाइवर्सिटी हाँ तापर पचर कथा हो गधिया दल अरे मन दे कि पाठ पढ़ हाँ कहीं एमती हो गोटे गोटे अच्छे जे अरे शुण लाइफ रे तमे एबे जदि टाइम टाको यूटिलाइज ठीक रे करिवो ताले व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड विल हैपन एज पर यू बुझुछ माने हाँ चलो कंट्रोल करो टिके एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड इन योर कंट्रोल हाँ कही देछ तो चलो ठीक वेरी गुड हाँ आगर तुम कही से एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी ओके सो एटी कौन करिवो नो हु योर स्टूडेंट्स आर माने नो हु योर स्टूडेंट्स आर माने कौन हाँ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हु योर स्टूडेंट कौन हाँ चलो वेरी गुड तो एटी छुआ को केमती जानिबो छुआर नीड को जानिबो छुआर इंटरेस्ट को जानिबो छुआर एबिलिटी को जानिबो हाँ ठीक है चलो बहुत बढ़िया having diverse group of students simply means recognizing that all people are unique in their own way ये जिनसटा कहूतला all the people are unique in their own way निज हिसाब रे निजे स्वतंत्र their difference could consist of their reading level athletic ability cultural background personality religious belief and so on बहुत गुड़े कारण थाई पारे तो टीचर कौन करिवे टीचर्स का रोल होची एनकरेज वैल्यू एंड प्रमोट डाइवर्सिटी जोटा सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कहलो तुम ओके अरे लाइव अगेन एट 10 सेटा लिभा हैनी तुम मते कहूना सर सेटा अच्छी बोली सेटा लिभेई दियंतु बोली काहे तो कहूना के पिला आस्ते भाबते लाइव नुहा बोधे कहउते पळुछु और 10टा तो हेलानी कोन लाइव होउनी कहउते अरे गया दल के कहबो एटा तुम कहबो ना मु करबी टिके कहि दबो ना बुढ़ा लोक भूली जाउछि हाउ टेक द टाइम टू लर्न अबाउट योर स्टूडेंट्स बैकग्राउंड को जानिबा इंटरेस्ट को जानिबा एंड लर्निंग स्टाइल को जानिबा राइट दिस विल अलाउ यू टू क्रिएट an environment that is conducive to each individual student conducive environment माने कौन तुम बढ़िया कहटा मत से पचारिया को भल लगे कहले देखि conducive माने कौन किए कहबो फ्लेक्सिबल वेलकमिंग आ कौन कौन कह कंजेनियल सुइटेबल ओके ठीक अच्छे it will provide you knowledge about the psychological and emotional situation of every learner तो every learner रा हमें जानिबा bring different people to the class एगुडा कले तांको भितरे इंटरेस्ट आसीबो आउ आमे कोनोसी प्रकार रो डिस्टरबेंस करिबानी टीएलएम कथा तमरो सिलेबस रे बेसिकली यूजिंग वेराइटीज ऑफ टीएलएम को इंपोर्टेंट रहिछि यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर को इंपोर्टेंट रहिछि तो टीएलएम जेतेबेले आमे यूज करिबा को टाइप रो टीएलएम यूज करिबा कोन करिबा क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो टीएलएम यूज कले क्लियर होतो क्लैरिटी आसुतो छुआ भल से बुझी पर फर्स्ट सेकंड हेल्पफुल इन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग लर्निंग और ट्रेनिंग रो पॉजिटिव ट्रांसफर हे परतो राइट जहाँ भी पॉजिटिवली पिला पाखे पहुँचुव तापर हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरेस्ट अटेंशन इंटरेस्ट भी आसुव अटेंशन भी आसुव ओके तापर आसला गुड सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस रो भलो गोटे सब्स्टिट्यूट एटा कोटा टीएलएम का तुम डायरेक्टली पृथ्वी बुले के आनी परियोनी अमेरिका नहीं परियोनी ग्लोब रे संगे संगे नहीं पहुंचे दो तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस रो गोटे भलो सब्स्टिट्यूट ओके
आशीष कहूँ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एविल इफेक्ट ऑफ वर्बालिज्म केवल वर्बाली 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 कहले छुआंकर इंटरेस्ट आसबनी तेणु ताकू इंटरेस्टिंग करवारे मजेदार करिवारे अटेंशन आनिबारे टीएलएम रो बड़ भूमिका अछि अरे इजी एप्लिकेशन एक्सप्लोरिंग गोल्स आप रे जो माने जॉइन करि पारिबो एट जस्ट 399 रुपीज मते व्हाट्सएप करि पारिबो जॉइन करिवा पाई एई नंबर भोग देखिदेला विश्वजीता हाँ से देखियो बोल तो छाड़ी लिंक टेलीग्राम रे करुच्ची कौशल्य ओके तापर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंप्रेशन और इमेज आनिबो टीचर को प्रति गोटे इंटरेस्ट आसीबो पाठ प्रति इंटरेस्ट आसीबो सब्जेक्ट प्रति लव आसीबो प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट टू लर्नर्स रीइंफोर्समेंट भी इंपोर्टेंट पार्ट गोटे पढ़ेला बेले राइट हेल्पफुल इन मीटिंग नीड ऑफ एक्सेप्शनल की हु इज एक्सेप्शनल के कहो जी नॉर्मल नुह सी एक्सेप्शनल जो माने एवरेज लर्नर नुहंती जो माने स्पेशली एबल्ड हे परंती क्रिएटिव नहीं गिफ्टेड हे परंती किंबा स्लो लर्नर हे परंती सेमानकर जो नीड टा अछि सेटा को भी सॉल्व करी हबो ओके हेल्पफुल फॉर अप्रोप्रिएट क्लासरूम इंटरेक्शन एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट and ता सहित सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करियो हाँ बस बढ़िया तो ये सब टीएलएम रो फायदा हेल्पफुल इन सैटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जेतु इंडिविजुअल डिफरेंस होची समस्त केमती बुझी परिबे से हिसाब रे टीएलएम को डेवलप करा जाए टीएलएम रो क्वालिटी कोन जानिचो लो कॉस्ट नो कॉस्ट किंबा लो कॉस्ट हेतिबो वर्ज्य वस्तु तैयारी हेतिबो लार्ज साइज हेतिबो क्लियरली विजिबल हेतिबो आ कांसेप्ट को इजी करि परथो इंटरेस्टिंग करि परथो ये सब होची मेन क्वालिटीज ऑफ ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बुझेला providing opportunity for use of progressive methods and techniques helpful in making maximum teaching हाँ अब मैक्सिमम सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करि परथो तमे आखिरे देखिलो सेति पई तो कोन को जाय एवीएस ऑडियो विजुअल एड ऑडियो विजुअल एड टा होची बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल काहे कि हाँ बेस्ट आउट ऑफ ओएसटीएल काहे कि हमें ऑडियो विजुअल को कहले काहे कि से कान को भी आखि को भी दीटा जाक कला आ जतो हमें कहूचे फील्ड ट्रिप को बेस्ट माने फील्ड ट्रिप रे नवाटा होची बेस्ट वे ऑफ टीचिंग बोली कहूचे फील्ड ट्रिप रे काहे कि नले प्रैक्टिकली देखले समान प्रैक्टिकल हेले कोन हबो आहुरी अधिका सेंस ऑर्गन से माने टच कले से माने स्मेल कले से माने फील कले से माने सुनिले से माने देखिले से माने चाखिले हाँ तो जोटी जोटा दरकार मैक्सिमम सेंस ऑर्गन जते बेले यूज हबो सेति पई फील्ड ट्रिप इज इंपोर्टेंट कोन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कोइ परिबा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कोइ परिबा हाँ लर्निंग बाय डूइंग कोइ परिबा प्रैक्टिकली ये तो टोटल इन्वॉल्वमेंट हमर जते अधिका सेंस ऑर्गन रो हबो हमें जते इन्वॉल्व हबो जते एक्चुअल वे रे देखिबा सेते भल से लर्निंग हे परिबो बट एक्चुअली ऑलवेज नॉट पॉसिबल तेनु ताको रिप्लेस करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल असला जेमति वर्ल्ड बुली परिबोनी तो ग्लोब को बुली के देखि ओके सो एंड वर्किंग एज ए गुड मोटिवेटिंग फोर्स हेतिबो सेटा इंक्वायरी हैबिट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड छुआंको भीतर डेवलप करिवार हेल्प करिवो एगुडा सब भलो टीएलएम रो माने क्वालिटी सब एगुडा सब भलो टीएलएम मानकर क्वालिटी ले कलो करो केतरा क्वेश्चन अछि देखुछि तापरे स्टार्ट करबा न असुविधा गदा क्वेश्चन रे 50 टा अछि हो करो किछिटा करो नॉट ऑल
हाँ तापर पुणी थियोरी ये मिसिक अच्छे किसी असुविधा नहीं फटफट कर एगुड़ा जानी आम एविएट्स मुझे कहबी एगुड़ा तो देखीच आप्लिकेशन तो देखी समस्ते जो अच्छा एक तो करदेल कौन हम डायग्नोस्टिक टीचिंग ओके रिमेडी ऑफ स्टूडेंट्स कुछ रैपिड फायर करवा हाँ चलो ठीक अच्छे पूरा रैपिड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मोटिवेटेड टीचर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अच्छा टीएलएम आम कहीं यूज करवा क्लारिटी हो सब्जेक्ट बुझीपर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग हो पार इंटरेस्ट एंड अटेंशन डेवलप हो पार डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर इवेल्युएटर वर्बालिज्म आम बाहर कर गोटे टीचिंग लर्निंग मटेरियल एग्जांपल दि जाए जो से टुमोरो विल बी टुडे इज एंड यस्टरडे वाज एमती हिसाब रखिंट जो बुलेदेले जो जोटा रही पूर्व दिन परदिन से जानीपर छुआ इंटरेस्टिंग वे पढ़ी पारे एंड अटेंशन भी आसो तो नीड ऑफ टीएलएम एगुड़ा आम देखिले आम केवल टी देखा टीएलएम्स गुड़ाक एग्जांपल आम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड एरेजर रू धरिकी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड चॉक मार्कर आईसीटी ऑडियो विजुअल विजुअल ऑडियो प्रिंट रिसोर्स स्केच ये सब जिन आसो यहाँ गोटे टाइप स्टेथोस्कोप आमर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग करने इंडिया मैप से इंडिया बुली पारे तेणु इंडिया मैप देखिए एमती फिल कर कौ जगह कौन अच्छी सो दैट इज ए काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑडियो विजुअल एड पर्पस कौन सब इंपोर्टाट हूँ ऑडियो विजुअल एड जोटा इंटरेस्टिंग करे लर्निंग को कहीं एनरिच टीचर्स ओन टीचिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर कंक्रीट इंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आउ इफेक्टिव कौन कौन कहली इंस्ट्रक्शनल रोल इंटरेस्ट अमंग ग्रुप इफेक्टिव प्रोसेस एविएट्स रे कौन हुए परसेप्चुअल और कनसेप्चुअल क्लैरिटी आसे अटेंशन नियंती छुआ माने इंटरेस्ट आउ मोटिवेशन न्यू लर्निंग रे हेल्प करे सेव एनर्जी टाइम बोथ टीचर आउ स्टूडेंट्स कर आउ इंडिविजुअल डिमांड्स को मीट करि पारे आउ यूजफुल फॉर एजुकेशन ऑफ मासेस एका बेले के बहुत पिला को कौन करि पारे एजुकेट करै पारे राइट सेमती कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड एबे कहउतली जोटा कौन होइथिबो मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल होइथिबो मोटिवेट द लर्नर सिंपल एंड चीप लार्ज साइज अप टू डेट आउ इजीली पोर्टेबल गोटे जगह आउट जाको सहज रे कैरी करके नै होतो हला रेडी एतिक बुझिगलो समस्त ये हूँ टीएलएम रो क्वालिटीज गुड टीचिंग एड हेइथिबो केमिति टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेइथिबो कोन थिले ए सब तार क्वालिटीज या ऊपर क्वेश्चन नियाती आसे रैपिड फायर तुम कह न कह मु चलली yes enhance knowledge of learner and supply extra information replica imitation copy of real thing जितेबाला भी आंसर मॉडल ही हम फटाफट कर जिते स्पीड पार्च जिते फास्ट पार्च जिते तुम जिते प्रकार इंद्रिय अच्छी सबको आणिकी ये लगे दिव आज ब्लास्ट करवा निया लगे आई जस्ट नीड योर सपोर्ट हाँ चलो 11 बाजिला आम पूरा जोरदार भल भाव करवा इनक्लूसिव क्लासरूम उपर क्वेश्चन निहाती आसीबो टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपर क्वेश्चन निहाती आसीबो आउ एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट सहित ये कनेक्टेड एंड ए पार्टरू निहाती क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो एंड मस्ट आसीबो सो पूरा फुल कंसंट्रेशन तुम मते दे दियो यस तो मुझे तुम मान डिस्टर्ब करी टोटाली आम क्वेश्चन को जावा डायरेक्ट यस चल चल मो देखा कार केते दम अच्छी किए केड़े बड़ पेचा आज टेस्ट हम चलो time bound testing program for students should be implemented in school so that remedial program can be adopted on the basis of feedback from the students from the result feedback ru ame remedy को टाइप रो क्लास करके आमे तांकर प्रॉब्लम को सॉल्व करबा सेटा देखिबा
teacher who can apply principles of educational psychology एजुकेशनल साइकोलॉजी माने चाइल्ड केमती पढ़िबो तार साइकोलॉजी अनुसार केमती पढ़ेबा तेणु इंडिविजुअल स्टूडेंट रो नीड को केमती एडजस्ट करके हमर मेथड टा को बनेबा एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बढ़िया ओ तमे गधिया की मु भाबिली की केते बड़ पेचा कहूची अच्छा गधिया भीतर की बड़ पेचा अछि सेटा देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचर गुड टीचर रो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक he puts more do's than don'ts बहुत हाँ कर yes you can do it yes you can do it करि पारिबु कर एमती कहे अरे ना तू करना तो द्वारा हबनी एमती कहे नहीं so he puts more do's than don'ts yes there is an intimate relationship between the अरे तमे जानी न बड़ पेचा किए तमे जानी न हला जो मास्टर तुम आगे बसचे ना तार तार पढ़िबार समय आरंभ होला वर्तमान पढ़िबार समय आरंभ होला 11 PM my study hour started now this is my study hour बुझिल हाँ ये सही लोग सही तो तेरा सामना सामने आ यस फ्रेंड्स राइट आंसर होची स्कूल एंड सोसाइटी जो कह ना गोटे गोटे थांती जो राति हेले तांकर जो येटा वाइल्डनेस टा आसे से जो एनर्जी टा आसे भूत वाला हाँ भूत बनी जानती राति हेले जानवर बनी के बुलाती दैट दैट वन हाँ यस which of these four conditions that must exist in a classroom before any motivational strategies can be successful ମୁଁ କେବେ କହିନି ନା ମୋର ଷ୍ଟଡି ଆୱାର କଥା ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ା ନ କହିଲେ ଭଲ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ କେମିତି ପଢ଼ା ଯାଏନି teacher must be supportive person four conditions that must exist in a classroom हाँ सुनी चलो सुना सुनाऊंगा government policy on education regards education a unique छटा परा कहली 11 छटा कहली परा चिकू ना केते शुअंती को पता छटा बी राइट आंसर इन्वेस्टमेंट if your students ask you a question in the class what would you do अभी समूह भली पढ़ा चेष्टा करनी इंडिविजुअल डिफरेंस पुणी अच्छी ना नहीं एनकरेज टू आस्क मोर क्वेश्चन निहाती एनकरेज करवा आउरी जदी डाउट्स अछि पचार डिस्कशन रे पार्टिसिपेट करबा को कहबा जदी तार क्वेश्चन जो से पचार थिला सेटा बंद हो आ तार डाउट्स ता डाउट भीतर रही जो तो ता डाउट क्लियर करबा निहाती दरकार नहीं नहीं शुभलक्ष्मी समस्त देहरे से जाए जड़े जड़े था राति अनिद्रा होगी जिद करके पढ़ी दिखती बट तापर कौन हुए से पर दिन बेकार हो जाए पूरा सो डोंट डू लाइक दैट मोर कौन पूरा रुटीन थिला सेटा एंड डे टाइम रे भी मु सोउथि सेति पई पढ़ी पड़ती प्रॉपर ट्रेनिंग क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय प्रॉपर ट्रेनिंग या चलो कॉम्पिटिटिव टा भलो न देखो
क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिविटी जोटा अच्छी जो ट्रेन ठीक मिलगला ना से जो क्रिएटिव पोटेंशियल क्रिएटिविटी आहरी बढ़ी तो इम्प्रूव कर क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर हाँ अर्ली अर्ली मॉर्निंग वाला बहुत बढ़िया जब सुभद्रा यहाँ कर ना यू आर बेस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन रे आम क्रिएटिव आंसर दे परिबा कहीं आम आमर वे रे लिखि परिबा से क्वेश्चन को आम निजर तरीका को आपणई परिबा तो क्रिएटिव हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन आम द्वारा अर्ली मॉर्निंग हुए से आम बाध्य होकर रात पढ़ू अर्ली मॉर्निंग होता जो तो दैट इज द बेस्ट समस्त जानते हाँ early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise they always succeed किसी गारंटी नहीं कि सब बेले सक्सेसफुल हे एटा कैरेक्टरिस्टिक इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड सक्सेसफुल न हो पारंती बट जेते थर फेल हेले भी तापर उठिबार शक्ति तांको पाखरे थाए किसी गारंटी नहीं कि से माने ऑलवेज सक्सेड हेबे हला राइट the number of responses of same sort made in unit time सेम रेस्पॉन्स गोटे यूनिट टाइम भितर सेम रेस्पॉन्स टाको हम बारंबार कले स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स बोली कहूचे स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव स्पीड करबा पर चलो यस प्राइमरी एजुकेशन पय आस्तला तो आउ एगुडा मु कहबिनी किछ नै हां वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स बेसिक थिंग गुडा को ओके टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड आम मेन पॉइंट आड़े जीवार अच्छी बाकी तो मुझे एटा ब्रेक करी एवं engage in dialogue with students and value their perspective to cater to individual difference को हमें केमती डील करिबा engage हवा तांको सहित तांको कथा सुनिबा and value करिबा तांको तांको नीड को बुझिबा yes thank you assessment is purposeful if assessment केते बेले purposeful हो चलो आसो कौन करूछ कौन पूरा कंसंट्रेट करो पूरा जी जान दियो आज या परे जो पार्ट तक मु जाउची दैट विल बी द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट it serves as feedback for the students as well as the teacher yes very good बहुत बढ़िया research suggests that in a diverse classroom a teacher's expectation from her students as they are learning एक्सपेक्टेशन रो कोन रोल अछि एक्सपेक्टेशन जदि रहिबो टीचर कर स्टूडेंट ऊपर मोर एक्सपेक्टेशन तम ऊपर रहला एतर एलटीआर धमाकार सहित क्लियर करिवो तो या द्वारा कोन हो निश्चित रूपे गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़िबो सो हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग इज द राइट आंसर राइट Having a diverse classroom with children from varied social, economic, and cultural background enriches the learning experiences of all students. This statement is first, जिते variety of social, economic, and cultural background को आछंती छुआ तो निश्चित रूपे एटा भल कथा enrich the learning experience of all students. Correct, correct, correct because children learn many things from their peers. Correct because students make fun in their classroom. नहीं learn is more important than fun. And fun सहित जदि लर्न नहीं था ताले तो और बढ़िया था सो बी ऑलराइट बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर yes 21 right answer he can feel underestimated and bored if the class activities are not challenging enough अंडर एस्टिमेट और बोर फील करिवो गिफ्टेड छुआ जेतु सब जानि तो चैलेंजिंग होबा तापै निहाती दरकार क्लास एक्टिविटीज ओके ए टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंटरी क्लासरूम बाय
इफेक्टिव लर्निंग दे पारिबे टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंटरी क्लासरूम केमिति इफेक्टिव लर्निंग को एनहांस करबा जहाँ पढ़ेबा ताको रियल लाइफ रे कनेक्ट करबा ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू बी बेसी इंपोर्टेंट कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स बढ़िया शाबाश which of the following statement about children are correct को स्टेटमेंट गुडी को करेक्ट अछि Children are passive recipient of knowledge ना भूल अच्छी problem solver scientific investigator active explorer BCD is the right answer खत्म कहानी सिंपल थिला खाली एटा passive recipient कर देला active explorer करथिले ठीक है तांता जेमते डी रे अछि ओके primary school children will learn most effectively in an atmosphere बहुत बढ़िया participation thank you all for this fantastic response many thanks and ଯେତେବେଳେ टीचर पढ़ो थाए तुम मन करो रेस्पॉन्स ता बहुत वैल्यू दिए ताको तार टीचिंग को एंड थैंक यू फॉर द वैल्यू एंड राइट आंसर होची वेयर देयर इमोशनल नीड आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड माने 25 नंबर पर हमें अलगा आडे टिके गति करिबा रास्ता बदलेबा डायरेक्शन बदलबो यस child watched growing fly and say a bird what does it suggest about the child's thinking এটা তো ফার্স্ট হলো परसेप्शनल थिंकिंग या पूर्व गोटे क्वेश्चन करते जो आइडेंटिफाई करि पारुची विभिन्न चढ़ईकर राब को तो ये परसेप्शन ओके प्रीवियस स्टोर्ड मेमोरीज भी अच्छी लैंग्वेज भी जानी से बर्ड कहला आ कनसेप्ट ऑफ ए बर्ड भी जानी से बर्ड क्या किया जाए उड़ी की जाउथिबो राबुथिबो देखि से जानि से सब डेवलप करछि अच्छा फ्रेंड्स समस्ते एते ट्रस्ट रे पेडागोजी रो फुल कवरेज रो क्लास रे अच्छो जेहेतु एते विश्वास अछि आमे नेक्स्ट पार्ट टाको जिबा पूर्वरु ठीक है तुमको पेडागोजी रो एक्चुअली आइडिया दे दूची पेडागोजी रो आइडिया एटा कि देखो फास्ट जो जिनसटा हला सेटा हला पेडागोजी रे फुल मार्क रखी हबो ए विश्वास रो पेडागोजी रे फुल मार्क रखी हबो इट मीन्स मु ओडिशा एजुकेशन सर्विस ओईएस एग्जामिनेशन रे पेडागोजी आसे एजुकेशन नाटा किंतु पेडागोजी भी आसे एजुकेशन भी आसे एमएड लेवल रो आसे एमए एजुकेशन लेवल रो आसे मास्टर्स डिग्री लेवल रो आसे से क्वेश्चन गुडा को एंड मु जेते बेले हाई स्कूल टीचर भी देइथि सेते बेले भी वेटेज टिक अधिका थिला पेडागोजी रो टाइम रे 2021 रे इनिशियल अपॉइंट टीचर रे तो सेते बेले जो सब क्वेश्चंस आसे ताको नॉर्मली मु गोटे ज्ञानी छुआ बोली तुम भाबनी कि गोटे मु महान लोकटा प्रबल पड़ी तमरी भाया गधियाटे प्योर कथा कमाल करने बहुत गुड़े पढ़ा दरकार ना एक्जाक्टली दरकार नहीं कि मु ओडिशा एजुकेशन सर्विस एग्जामिनेशन रे 150 रु 110 रु अधिक रखी एक्जाक्टली मार्क मन पड़नी कि 120 रु कम 110 रु अधिक केते गोटे मार्क रखी तो से भी बहुत भयंकर क्वेश्चन आसे मास्टर डिग्री लेवल रो तुम मैंने जानू केते लेवल रो क्वेश्चन आसे एबे देखो केवल जहाँ आम पढ़ुचे जी क्लास से को भल भाव शुणीदे कौन हम गोटे पॉजिटिव माइंडसेट को लेकिन जो क्वेश्चन को आम एनालिसिस कर पारे ठीक है क्वेश्चन को बुझी जाओ देखो आउ एनालिटिकल क्वेश्चन ही अधिका ये एनालिटिकल क्वेश्चन जिते बड़े आसे सी तुम मुंड को दोहलाए मन रखी कनसेप्ट जी जानिच एनालिटिकल क्वेश्चन ताठू अधिका आसे माने मेमोरी बेस्ड रो एनालिटिकल क्वेश्चन अधिका आसे मेमोरी बेस्ड रो भी जहाँ आसे ताहा एनालिटिकल सहित मिसिकी आसे डायरेक्टली आसे टिके जेमति बुले कि वाइगोट्स्की कथाटा पचारथिबो कि पियाजे रो कथाटा पचारथिबो ओके हाँ तुम मैंने भावुच जे मो 95% वाला छुआ बुझ पड़छ कि
भावुच मो लाइफ रे मु दशम रे टिके जहाँ ठीक ठाक रखी तापरे कौन कह छाड़ तापरे B.Ed रे ठीक ठाक रखी एनीवे छाड़ सेगुड़ा अलग कथा किंतु मो कहवा कथा जे यू कैन डू द बेस्ट बहुत बढ़िया करिपारिबो तुम केवल निज ऊपर विश्वास करवा स्टार्ट कर दियो मोर जदि टिके टिके परीक्षा लागिगला केमती कौन पढ़ी होईगला सी जो क्रैक है जो परिश्रम है भी जो मोटिवेशन आसला भी द रीजन इज यू तुम मैंने जान जो मैंने आगु अच्छा हाँ तो सीटा ही निज ऊपर विश्वास कर देखो बहुत जिन हो जाए लाइफ ओके तो ठीक अच्छे बर्तमान मुझे क्वेश्चन रू आउ गोटे पार्ट को जाऊँगी सेटा है इवालुएशन इवालुएशन पार्ट रे असेसमेंट एंड इवालुएशन मु टिके कहला परे आमे तापरे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करबा पीवाईक्यूज कला परे सेशन को एंड करबा ये रहिबो वर्तमान पूरा एजेंडा आजिर ए सेशन रो तो ये जो इवालुएशन जिनसटा रहिला असेसमेंट एंड इवालुएशन ये दीटा जिनस तुम सिलेबस रे बहुत गुरुत्वर सहित लिखा जाइए देखिपर तुम असेसमेंट एंड इवालुएशन जोटा रही इवालुएशन फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक ये सब जिनस रोचे ता सहित ये टीचर मेड टेस्ट है रूब्रिक पोर्टफोलियो पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट प्रोजेक्ट असाइनमेंट एगुड़ा आम आगुरी भी डिस्कस कर यस पूर्वी एग्जैक्टली तुम यू गिव इंपोर्टेंस टू योरसेल्फ एंड थिंक दैट यू कैन डू इट ओके सो देखो तुम इवालुएशन आउ असेसमेंट दुईटा जो जिनस आसे बड़ बड़ लोक भी कन्फ्यूज होती कौन एक्चुअली जिनस तो ये कन्फ्यूज हबार ना आमको इवालुएशन जो देखा आम डायग्नोस्टिक रिमेडियल प्रोग्नोस्टिक ये तीन टार क्वेश्चन आसले कौन कर डायग्नोस्टिक हूँ फाइंडिंग द प्रोब्लेम प्रोब्लेम टाको फाइंड करवा खोजा ये हूँ फाइंडिंग द प्रोब्लेम फाइंडिंग द प्रोब्लेम माने ये इवालुएशन द्वारा फाइंड कर प्रोब्लेम और रिमेडियल टीचिंग देकी दूर कर रिमेडियल टीचिंग से अनुसार दूचे तार एरिया ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी का फाइंड आउट होचे तार प्रॉब्लम का फाइंड आउट एग्जाम क्लियर करके स्टेडियम रे सार को सह पिक क्लिक करवा ड्रीम ऑफ मेनी गदिया अछि हां तुम पिक उठे सारी छ सुना अंडा तुमको कांग्रेचुलेशंस बट से पिक रे मु सैटिस्फाई नाही आगो को आ गोटे पिक भी उठेवार अछि मते सेटा दरकार हेलो तो कंटीन्यूअस लर्नर से मु समस्त को कहूची जे कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ विथ टाइम जिते बड़ पर्यंत समय अछि यू कैन डू ए जिनस जदि विश्वास अछि ताहले करि चल रिमेडी गिविंग सॉल्यूशन रिमेडियल टीचिंग जोटा कहली आ प्रोग्नोस्टिक होची प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्नोस्टिक रु आमे जानि परिबा जे पिला भविष्य रे कोन करि परिबे ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन टू हेल्प इन डायग्नोसिंग वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स तो इवैल्यूएशन काहे की करा जाय वीकनेस को डायग्नोज करबा पई देखो केतेटा खाली सुनी थाओ कान रे पड़ी थाओ ये जते बाहर कथा ठीक बाहर जो डायग्नोज वीकनेस ऑफ स्टूडेंट प्रेडिक्ट फ्यूचर अचीवमेंट को प्रेडिक्ट करिवो टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट रो एटीट्यूड और स्किल को टेस्ट करिवो ओके सर्व एज मीन्स ऑफ इंप्रूविंग स्कूल कम्युनिटी रिलेशन लर्नर्स ग्रोथ इंटरेस्ट पोटेंशियल इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर ए सब जिनस करि परिवो अच्छा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन determine the knowledge and skill of students possesses which are necessary at the beginning of instruction placement evaluation beginning oh sorry extremely sorry मु कवर करके अछि मते कहलोनी कि गला एत को पार्ट रे बहुत डिफिकल्ट हो गला तुम मन को पय देखिलो एते पढै देली एति पढै छी किछ नै ठीक अछि डायग्नोस्टिक रे मु कहली डायग्नोस्टिक टा कहली फाइंडिंग प्रॉब्लम्स रिमेडी प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस वीकनेस ऑफ स्टूडेंट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ स्किल लर्नर ग्रोथ इंटरेस्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स और प्लेसमेंट रे कहली नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स जोटा स्टूडेंट भीतर अच्छी व्हिच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके तो आउ गोटे जिनस एठी देख फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मो एतक जिनस तुम को कहि दूची देख फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गोटे
मु कहि 3F रो कथा कोन कहि 3F फॉर्मेटिव रे कोन होउची फॉर्मेटिव रे तुमको फीडबैक मिलियो फॉर्मेटिव रे असेसमेंट फॉर लर्निंग को आगे आ एटा उठा फॉर्मेटिव तो फॉर्मेटिव रो F फीडबैक रो F असेसमेंट फॉर लर्निंग रो ठीक है ओके एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैरेक्टर कोन देखो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही हुए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन at the beginning of teaching learning process diagnostic formative summative and portfolio gola सरला करो रे की को teacher evaluate the learner at the beginning of the teaching learning process फिर तुम छाड़ी दीछ पोर्टफोलियो एटी तो हबो आंसर तो पोर्टफोलियो दीपक हबो कहीं क्या कुछ नहीं पोर्टफोलियो देख के इवैल्यूएट करबो अपन डायग्नोसिस तो हबो बुझिलो formative during teaching learning process diagnosis to find the specific area of difficulty formative during teaching learning process diagnosis भी during teaching learning process दीटा diagnosis करिबा to get to know the specific area of learning difficulty diagnosis रे जहाँ diagnose कले से अनुसार हमें remedial program को हमें करिबा and formative होची normal टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती क्वेश्चन आंसर चलती डिस्कशन चलती दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुए बट समेटिव होची एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एट द कंप्लीशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके it occurs frequently during the course of instruction its results are made independently immediately known to the learner संगे संगे immediately जानी परिबे teachers observation it may sometimes take teacher observation भी पारे reinforces ओके reinforce करिवो ऑप्शन ठीक है पोर्टफोलियो हबो कहली परा कोन कोन ऑप्शन ठीक छी कोन होउची आंसर कोन देइची को तापर एनालिसिस करिवा इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस तालो आंसर फॉर्मेटिव को एग्जाम रे आस्तला क्वेश्चन टा को तापर मु कहि characteristic of formative evaluation बुझी गलो एटा result are made immediately known to learner टीचर ऑब्जर्वेशन भी हेई पारे टीचर क्वेश्चन भी हेई पारे आउ ये फ्रीक्वेंटली हुए occurs frequently during the course of instruction okay चलो summative evaluation it is the type of evaluation which takes place after students have completed units of works or modules at the end of each term or year रो एंड रे बा कंप्लीशन रे बा कोर्स रो कंप्लीट ले बा यूनिट रो कंप्लीशन रे जो टेस्ट हुए सेटा होची समेटिव इवैल्यूएशन ओके the information it gives indicates progress and achievement usually in grade related to numerical terms तो सब बड़े ग्रेड रे मिलिबो परसेंटेज रे मिलिबो मार्क्स रे मिलिबो तेनु ये न्यूमेरिकल टर्म रे ही इंडिकेशन रहइबो okay it was coined by Mitchell Scriven 1967 छाडी दियो समेटिव इवैल्यूएशन आउ कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक रहइबो ये तो हम जानले समेटिव इवैल्यूएशन कोन एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट द कंप्लीशन ऑफ ईच टर्म और ईच ईयर और सेमेस्टर एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन ए सब समेटिव इवैल्यूएशन जोटी ग्रेड मार्क परसेंटेज इन न्यूमेरिकल टर्म रे असाइन करा जाय कैरेक्टरिस्टिक्स कोन टर्मिनल इन नेचर कहला comes at the end of the course of instruction judgmental कहीं की judgmental कहीं की छुआ केते अचीव करछि सेटा जणा पडुछि तारो रैंक जणा पडुछि तारो ग्रेड्स जणा पडुछि तो judgmental हला it views evaluation as a product process नो एटा product final
प्रोसेस कौन फॉर्मेटिव टा प्रोसेस हे पारे डायग्नोस्टिक टा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुए इट कैन नॉट बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली ओके तापर आसला सीसीई कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस माने रेगुलर conducted throughout the year to achieve all round development पाई continuously करा जाए comprehensive कौन सबू aspects को देखा जाए mental emotional physical aspects of students progress that is all round development एठी भी रहला and तापर रहउची evaluation variety of tools and techniques are used to assess and evaluate the students progress तेणु ये होची continuous and comprehensive evaluation सीबीएसई आनिला सीसीई केबे आस्तिला right continuous and comprehensive evaluation implemented from the year 2009 by CBSE okay very good criterion reference test आउ कौन थिला norm reference test अच्छा एठी मे बी लिखिनी continuous comprehensive evaluation लिखिची formative लिखिची summative diagnostic assessment evaluation perspective assessment of learning for learning and as learning एटा तो जानले हमें of learning होची summative for learning होची formative as learning होची diagnostic करि परिबा subject based learning in constructivist perspective project assignment एगुडा सब assessment tools and techniques अच्छा ठीक अछि ओके तो एटा जानिबा निहाती दरकार क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस भी क्वेश्चन आसीबार मोस्ट प्रोबेबल चांस अछि जेतेबेले क्राइटेरियन रेफरेंस आछि त मन को जणा अछि आगर भी मु कहिछि सब बेले मन रखिबो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रे कोन रहिबो फ्रेंड्स जोठी फिक्स्ड कोन फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया कि बाबू तू 60% रखिले पास तोर दास बाबू को झियो सहित संपर्क नाही बुझेला सो अन्य माने कोन परफॉर्म करूचंती डजंट मैटर का पुओ का झियो कोन कले मु जदी 60% रखली मु क्वालिफाइड खत्म कहानी मोर आउ का सहित कंपटीशन नाही सो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड जहां रखा जाय 60% मु क्वालिफाई कर देले मोर हे गला सरला जेमते ओएसएसटी कहला जे हां तू एति के रखले क्वालिफाई दरकार नाही आउ किछि तो ए सब जिंस होची कोन एग्जांपल्स ऑफ तारो एग्जांपल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जोटी कंपटीशन नाही कंपटीशन रहउची कोठी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जोटा होची बीएड एंट्रांस जॉब रिलेटेड टेस्ट सीबीटी एलटीआर एग्जाम दबो एगुडा कोन एगुडा होची नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जोटी परसेंटाइल भी आसी पारे can be measured in percentile system एठी कंपटीशन अछि रेफरेंस टेस्ट कंपेयर्स नॉर्म रेफरेंस कंपेयर स्टूडेंट्स नॉलेज एठी 10 बाबू को झियो साहु बाबू को झियो बुझेला सेठी बाबू को झियो स्वाई बाबू को झियो किए कोन कला कि नंद बाबू को पुओ कि प्रधान बाबू को पुओ कि झियो बुझिएला नै कोन कहूची तो एई क्षेत्र रे तमरो डिपेंड करिवो किए केनती स्कोर करिछि कि महापात्र बाबू को पुओ पढ़ देला अधिक कर तो पारिबनी एनीवे गला ये हला कंपैरिजन रहउची ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा एटा मु आ बेसी डिस्कस करनी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड सीबीटी टा कोतरे जाउची हमरो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नॉर्मल रेफरेंस ना क्राइटेरियन नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट जाउची ओके चलो तापर एटा तमरो गोटे गोटे लाइन रे देखि देथाओ कोन असुविधा अछि diagnostic test it is preferred to know where the learner is lagging behind diagnosis kole ko jaga re specific area of learning difficulty specific area of learning difficulty बुझि पारलो prognostic test कहला it is kind of test done anticipate future outcome भविष्य रे कोन होबा को जाउची ये होची prognostic test ये कहूँ आगामी दिन रे यार कौन हम
ये तुलसी द्विपत्र बासुची ना कुंडई हेलानी बुझिपारछ ना तापर हला एप्टीट्यूड टेस्ट it helps to know the potential of the learner after the course, right? Achievement test it is done to measure the extent to which the objective of the course is achieved. Aptitude test actually say entry behavior but potential in a specific subject. Proficiency test this test aim to assess the general ability of a person at a given time. Proficiency test भी हमें करी परिवार से जो क्वेश्चन टा से पचाड़ते हैं जो ऑप्शन लेता नथिला तो अलग रखा. Got it? So this is very important thing. Diagnostic specific area of learning difficulty by learner कोठी lagging behind बा पछरे अछि. Second prognostic future anticipate करियो. Future outcome कौन है पर. Aptitude potential of the learner in a specific area, specific subject. Aptitude teaching aptitude जमती है. Example दे परिबे मु interview and teaching aptitude. समझे achievement test केते अचीव करूची and proficiency test ability of a person in a given time. Good test रो characteristics कौन होगा दरकार नहीं कि गुड टेस्ट रो गोटे characteristics कौन तो गुड टेस्ट रो characteristics एटी निहाती एग्जाम रे बहुत आसे. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी constantly coming thing examination. तो रिलायबिलिटी होची कंसिस्टेंसी वैलिडिटी होची इंटेंट टू मेजर और जहां मापिबा पई ताको तयारी करा जाउची से मापुची कि जदि मापुची ताले वैलिड बारंबार अलग अलग सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स टी प्रयोग करके एका प्रकार रो रिजल्ट मिलुची कि रिलायबल बा कंसिस्टेंटली गिविंग द सेम रिजल्ट. ऑब्जेक्टिविटी माने अलग अलग टीचर माने इवैल्यूएट करले भी मार्क्स रे परिवर्तन हो नथिबो. बुझी पारछ कोन लिखिछि नेवर गेट वेरिएशन ऑफ स्कोरिंग बाय सेवरल टीचर्स. एटा निहाती दरकार कारण सेही परीक्षा लक्ष्य पिला देले 5000 रो ए टीचर देखला 2000 रो से टीचर देखला 7000 रो से टीचर देखला सब अलग आइ तेणु सेटा जदि समान रहिला ताहले ऑब्जेक्टिविटी जोटा एमसीक्यू रे चेंज होबनी केबे ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी स्टूडेंट रो स्किल डेवलपमेंट ए सब को ठीक रे यूजफुल केते होची सेटा मापिबे. एटा कहली जस्ट के पूर्वरु फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव जोटी फीडबैक मिले छुआ को टीचर को भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव जोटा एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहां गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू दिए ग्रेड्स दिए मार्क्स दिए परसेंटेज दिए. एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट दी प्रकार पर ठीक पारे. सेल्फ असेसमेंट कोन निजो को निजे मिरर आगे ठिया कर देलो एंड असेस कलो. पीयर असेसमेंट होची निजो फ्रेंड्स माने तुमको असेस कलो. एसबीए रो भी क्वेश्चन आसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट एति की जानि थाओ जे कंडक्टेड बाय स्टूडेंट्स ओन टीचर. एटा एटा निहाती जानिबा जिंस स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट डिफरेंस टा कोन सब बेले हमें जानि छे जे स्टैंडर्डाइज टेस्ट सब नियम को फॉलो करे माने जो वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी जो देखिलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट ये सब रहे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे. दशम मैट्रिक परीक्षा ओएसएसटी परीक्षा ओटीटी परीक्षा तमरो एलटीआर रो परीक्षा ये सब जिनस वृत्ति परीक्षा ये सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट काहे गोटे बड़ मास रो छुआंग पई करा जाय. नीट एग्जामिनेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन योर सेंट्रल B.Ed एग्जामिनेशन स्टेट B.Ed एग्जामिनेशन स्टैंडर्डाइज्ड. Content is appropriate to assess all students. Specific content addressed in a class. Teacher made test तम मास्टर तम पई तयारी करिछि से जा पढै सेटा परीक्षा करियो. मु एबे तमु कोन पढैली ता ऊपर टेस्ट कर देली संग संग क्वेश्चन कर देली तमे कर देलो दे देलो
दैट इज टीचर मेड टेस्ट बट जिते पूरा LTR रो एग्जाम होची सेते दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट काहे कि असेस ऑल स्टूडेंट्स items have been researched to reliably predict an outcome. Items have not been researched. There are standardized administration and scoring rules that cannot be modified. Teacher decide how to administer and score. Teacher सब एटा decide करियो केमते मार्क देबे केमते क्वेश्चन करियो सब. Score comparison can only be made to the group who took the same test in the same condition. किंतु एटा scores can be compared to नॉर्म ग्रुप्स विराट ग्रुप रे कंपेयर करा जो जो सब रूल्स रेगुलेशन को स्टैंडर्डाइज फॉलो करे टीचर मेड टेस्ट टीचर निजे आम मास्टर आम पे करछन एथरो क्वेश्चन आसे एग्जैक्टली यही जिंस ही क्वेश्चन आसे जहां तुम स्क्रीन रे देखु छबे कि टूल्स एंड टेक्निक्स रे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक कोन क्वांटिटी आसिले ओरल टेस्ट रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल रिटन तीन प्रकार एसे टाइप ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव रिकॉल टाइप रिकॉग्निशन टाइप हे पारे एठी क्वेश्चन आसे एटा जे ऑब्जेक्टिव टाइप रो रिकॉल रे कोन जाउची रिकॉग्निशन रे कोन जाउची मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स प्लीज राती अध होबा को जाउची किंतु कंसंट्रेशन अधा न होई पूरा इवन डबल होबा नियाती दरकार बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन अच्छी रिकल कले मन पकईले एंड फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स बेले बेले रिकॉग्नाइज रे कंफ्यूज कर दिया हम एमसीक्यू रिकॉग्नाइज बुझी पड़छो एमसीक्यू रिकॉग्नाइज टाइप हो कहीं चिन्हिबार अछि कोटा आंसर चारटा ऑप्शन देइछि हमको ट्रू फॉल्स दुटा ऑप्शन अछि ता भीतर कोटा चिन्हिबार अछि चिन्हिले रिकॉग्नाइज रिकल मने पकेइबा मने पकाइबा रिकॉग्नाइज चिन्हिबा चिन्हिबा रे कोन हुए चिन्हिबा रे हम पाखरे ऑप्शन अछि मैचिंग टाइप क स्तंभ ख स्तंभ चिन्हुचे हम किए कोठी जीवो क्लासिफिकेशन टाइप किए को टाइप रो एनालॉजी टाइप से जिंसो किए कोथरे रहिबो किए का सहित सिमिलर मल्टीपल चॉइस टाइप बुझी गले ट्रू फॉल्स टाइप ए सब रिकॉग्निशन रे जाउछ रिकॉल रे सिंपल रिकॉल टाइप एंड फिल इन द ब्लैंक सब क्वेश्चन आसे फिल इन द ब्लैंक ता पचारिबो फिल इन द ब्लैंक ता को टाइप रो क्वेश्चन कहबो रिकॉल रिकॉग्निशन शॉर्ट टाइप और रिटर्न ऐसे टाइप हम देखो एपटे पळे आसले ये सब गला क्वांटिटी क्वालिटेटिव टेक्निक रे देखिबो सब तक आसीबो सब हीरो गुडा सब आसीबो जोडा कंफ्यूज करंती तुमको सब मुंडा टेण करछनी जो मान क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट रेटिंग स्केल पोर्टफोलियो इंटरव्यू सोशियोमेट्रिक क्वेश्चन ये सब कोठी जाउछन क्वालिटेटिव टेक्निक रे जाउछन क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन रे जाउछन अच्छा देखिबा से मन को जो माने मुंडा टेण करंती क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स रो आरंभ कली तो सब बड़े देखिबो एठु जतबे क्वेश्चन आसीबो स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज ए कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन जोटा स्कूल रे मेंटेन करके स्टूडेंट मान को पय रखा जाय इट कंटेन्स फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस मिड टर्म एंड फाइनल मार्क्स एडॉप्टेशन एंड अटेंडेंस सब जिंस डिटेल रखे डिटेल कोन रखिला छुआर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट रो एकेडमिक प्रोग्रेस मिड टर्म फाइनल मार्क केते एडॉप्टेशन अटेंडेंस केते थिला सब फैक्चुअल रिपोर्ट को रखिबाटा होची क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्लियर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को एमती रखा जाय नेम ऑफ द स्कूल मंथ एंड ईयर ऑफ जॉइनिंग क्लास मंथ एंड ईयर ऑफ लिविंग एटा तो रहिबो ता सहित तार डिटेल्स हो रहिबो ऑक्युपेशन बापा मां कोन करंदी सब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देखो हेल्थ हिस्ट्री तार हेल्थ हिस्ट्री कोन हाँ से कौन कौन करुच्ची कौन करूनी कौन तार डिजीज कौन थिला नथिला सब जिंस एवरीथिंग तो हेल्थ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तार केबे कौन हेतिला कोठ रहउची घर कोठी पेरेंट गार्डियन गार्डियन की एवरीथिंग रहिला तो हेल्थ विषय रे तार एटा रहिला
anecdotal record सेमती कौन ये भी descriptive and narrative cumulative देखिलो cumulative रे डिटेल रहला anecdotal रे भी डिटेल रहइबो फरक कौन specific behavior or interaction occur anecdotal records inform teachers as they plan learning experiences provide information to families and give insights into एटा पूरा educational background ता तार रखियो डेवलपमेंटल डिले रु धरिकी फैमिलीज एक्सपीरियंस सब जिन तार रोच जमती एनेक्डोटल रेकर्ड देख से प्रति मिनिट रे प्रति घंटा रे कौन कौन करिछि स्कूल रे सेटा को डिटेल रे डेट वाइज लिखा जाइछि एतिकी तारिख रे या करछि एई टाइम रे एटा करछि कौन कौन करछि एवरीथिंग इन डिटेल क्यूमुलेटिव रेकर्ड पोर्टफोलियो कौन पोर्टफोलियो असेसमेंट रे वर्क एक्सपीरियंस रहिबो डॉक्यूमेंट्स रहिबो जोगुड़ा कि तार सपोर्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग एकेडमिक गोल पॉजिटिव जिंस सब तक रहे पोर्टफोलियो से कौन कौन अचीवमेंट करछि ता लाइफ रे तमरो जेमती करिकुलम बाइटा सीवी सीवी बा पोर्टफोलियो कहउछ तो से जो पोर्टफोलियो माने अचीवमेंट टोटल लाइफ रे कौन कौन तमे करिछो से सब जिंस जेते बेले मिसै के रखा जाय सेते बेले ताको लर्नर रो अचीवमेंट जहाँ सब एकाठी रहा एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस रहा एग्जामिनेशन वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सब रहिले ताको पोर्टफोलियो कर जाउछि यस पॉजिटिव एंड अचीवमेंट्स तापर चेकलिस्ट तुम बुलिया को बाहरलो तुम पासपोर्ट नहींच ना नहीं टिक मारल सनक्रीम नहीं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं ना नहीं मनी नहीं ना नहीं मेडिकेशन कैमेरा गुड बुक गोटे टूथब्रश नहीं ना नहीं मोबाइल फोन नहीं ना नहीं केतेटा आइटम थिला केतेटा नेली केतेटा नेलिनी चेक करदेल टिक मारिदेल ये हूँ चेकलिस्ट एटी बेसी समय देवी रूब्रिक स्कोरिंग गाइड गोटे स्कोरिंग गाइड कौन रूब्रिक typically an evaluation tool or set guidelines used to promote the consistent application of learning expectation learning objective माने learning standards in the classroom or to measure their attainment against the consist set of criteria गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया अछि जे केते कोन रहिबा कथा हला फिक्स क्राइटेरिया अछि ए रुब्रिक्स कहउछि जे ए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस अछि यही अनुसार से छुआ केते जाए जाइछि बा केते अचीव करूछि जोटा एक्सपेक्टेशन सेट गाइडलाइंस बा एक्सपेक्टेशन हमर अछि मने कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमर 10 भितरु से 7 रे अछि तो ये होछि तार स्कोरिंग गाइड बा रूब्रिक तार इवैल्यूएशन टूल एटा गोटे गाइडलाइन हमर जहा अछि बा सेट गाइडलाइंस जहा अछि बा एक्सपेक्टेशन जहा अछि से अनुसार से को जगह रे पहुंच तार लेवल कौन स्कोरिंग गाइड ऑब्जर्वेशन जानिछो एटा नॉन फॉर्मल रे सब हम कहउछे एटा दी प्रकार रही पारे पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेंट लिखि दैछि से अलगा कथा पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कौन ऑब्जर्वेशन जते बेले तमे आज ए टीचर मन कर फुटबॉल खेली की पिलांक सहित खेलुछो एंड तांको ऑब्जर्व करछो के केमती खेलुछ मन कर तमे पीटी टीचर तमे पिलांक सहित खेलुथिबा समय रे ऑब्जर्व करछो जे के केमती खेलुछि दैट इज पार्टिसिपेटिव यू आर आल्सो प्लेइंग विथ देम जते तमे भी पडिया भीतर तांक सहित खेलुछो जते तमे बाहर चेयर पकई के बसी के देखुछो सेटा होछि नॉन पार्टिसिपेटिव बहुत बढ़िया एग्जांपल अमूल कुल देइछन्ती देखो रुब्रिक्स रे कोन होछि माने गोटे डांस कंपटीशन अछि कि सम कंपटीशन अछि सेठी से तारो नाचिबार शैली को देखि कि मन करो सेथरो 3 मार्क रु केते रहउछि सेमती कॉस्ट्यूम्स केमती पिन्धिछि ताकू 3 मार्क्स रु केते रहउछि परफॉर्मेंस रे आउ रहिला 4 मार्क तो एमती डिवाइड करके कोठी केते मार्क सेटा देइकी हमें करि परिबा जे सी एक्जेक्टली 10 रु केते रखिला डिफरेंट पार्ट्स रे डिवाइड कर देइजिबा ओके तो ये देखो पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव जोटा ऑब्जर्वेशन मो कहउतली तार एग्जांपल एटी पार्टिसिपेटिव रे टीचर इज विथ द स्टूडेंट्स एंड बाहर ठिया की ऑब्जर्व कर नॉन पार्टिसिपेटिव तो एटा आउ डिटेल जाउनी इंटरव्यू फेस टू फेस डिस्कशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई को कहा जाए इंटरव्यू राइट
इट इज माने एम्प्लॉयर्स जते बेले एम्प्लॉई बाछंती वर्क आउट हाउ वेल यू विल फिट इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन सेते बेले इंटरव्यू करंती क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन एट योर इंटरव्यू इज वाइटल इंटरव्यू तुम माने भी देखियो लाइफ रे बहुत प्रकार आमे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे इंटरव्यू दउछे तो सेटा भी प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड रोची स्ट्रक्चर्ड आउ अनस्ट्रक्चर्ड रोची अनस्ट्रक्चर्ड बा नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर बा डायरेक्टिव इंटरव्यू जार किछि रूल्स रेगुलेशन रोची क्वेश्चनरी कोन हाँ सोशियोमेट्री वाला सोशियोमेट्री कौन मेजरमेंट ऑफ रिलेटेडनेस टू लर्न द इंटरेक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्रुप ये होची सोशियोमेट्री असेसमेंट ऑफ बिहेवियर विद इन ग्रुप भितर बिहेवियर को असेस करछे सोशियोमेट्री सोशल केते हम सोशियोमेट्री एटा जणा पड़छ ना देखो व्हेन एक्टिंग एज ए ग्रुप टुवर्ड्स ए स्पेसिफाइड एंड और गोल गोटे ग्रुप रे काम करिला बेले हमर जो रोल रोची इंटरेक्शन रोची विद इन द ग्रुप तार बॉन्डिंग केते अछि टू मेजर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कोहेसिवनेस मोरल एंड बॉन्डिंग एटसेट्रा इंप्रूविंग कम्युनिकेशन केमती अछि टू शो द पैटर्न्स ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विथ ईच अदर तो सेटा सोशियोमेट्री बोली कहा जाय केते हमें सोशल ताको मेजर करया जीवाटा को सोशियोमेट्री रोची सेमिति हमें क्वेश्चनरी रे रोची कोन इज ए मीन्स ऑफ गैदरिंग सर्वे डाटा from a large number of people क्वेश्चन पचार के डाटा कलेक्ट कले क्वेश्चनरी द्वारा हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करि परिबा कैन गैदर डाटा ऑन फैक्ट्स फीलिंग्स एंड ओपिनियंस कार ओपिनियन कोन अछि कार फीलिंग्स कोन अछि कार फैक्ट्स डिफरेंट फैक्ट्स भी हमें कलेक्ट करि परिबा क्वेश्चनरी माध्यम रे डाटा कलेक्शन करा जाय बेसिकली हमें रिसर्च रे क्वेश्चनरी यूज करछ ओपन वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चन एटा तुम माने बहुत भलो से जानिछो क्रिएटिव आंसर को टाइप रो क्वेश्चन दे हबो कहलो जल्दी फटाफट हमें को टाइप रो क्वेश्चन रे क्रिएटिव आंसर दे परिबो देखो बहुत बढ़िया ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें क्रिएटिव आंसर दे परिबो सोटी हमर रेस्पोंस कोन हो क्रिएटिव हो तो रेस्पोंसेस में भी एम्बिगुअस अलगा हो फरक रहो मोर रेस्पोंस जा तमर न होई पारे ओपन एंडेड रे किंतु ग्रेट फ्रीडम पाइबो तमे ओके टाइम कंज्यूमिंग हो तुम निजर आइडिया को यूज करिवो मोर वर्क फॉर रेस्पोंडेंट्स तुम आंसर कर दो जे देखियो ताकू भी बेसी टाइम लागे क्लोज एंडेड रे कोन होय लेस एफर्ट दरकार लेस फैसिलिटी विथ वर्ड्स बेसी वर्ड्स दे परिबोनी डिफिकल्ट टू डेवलप क्लोज एंडेड क्वेश्चन डिफिकल्ट डेवलप करवाटा एटा सहज ओपन एंडेड टा recommendation of for designing close ended question use open questions in preliminary interviews or pre-test रे आमे open questions use करूचे close ended question use open questions अच्छा तो ओपन क्वेश्चन एतिक जानता ओपन एंडेड क्वेश्चन टा क्रिएटिव हे परिबो बेसी वैरायटीज ऑफ वे रे हम क्रिएटिविटी यूज करके दे परिबा अलग अलग रेस्पोंड आसबो समस्त एंड फ्रीडम मिलिबो क्लोज एंडेड रे फ्रीडम नाही लेस एफर्ट दबा को पड़िबो लेस फैसिलिटी टू यूज वर्ड यू कैन नॉट यूज क्रिएटिविटी एंड रेस्पोंस प्राय समान आसीबार चांस अछि सेठी सब जिंस दे देला एग्जांपल दे देला क्लोज एंडेड रो वाज योर ट्रिप सक्सेसफुल तमे यस कहबो नले नो कहबो नहीं कि किंतु व्हाट डिड यू मैनेज टू अकम्प्लिश ऑन द ट्रिप कहले तमे वैरायटीज रो आंसर दे परिबो वैरायटीज ऑफ वे रे रेस्पोंड दे परिबो व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग तमे बहुत किछि कहि परिबो बट डिड यू हैव ए गुड मीटिंग यस नो रे आंसर दो परिबो so this is close ended and this is open ended where you can use creative answer जते बेले भी क्लोज एंडेड वर्ड इज आर डू वुड एमती आसीबो व्हाट व्हाई हाउ थिले ओपन एंडेड एंड क्रिएटिव आंसर तुम माने देई पाइबो दैट्स इट हां रेटिंग स्केल रो एग्जांपल और कोन तमे तो जानिचो एटा देखिले भी कर दबो राइट जमते हमरो एप्लीकेशन को रेटिंग्स दउचो तुम माने 5 स्टार वेरी गुड नहीं कि मनकर गोटे होटल को जाइछो तुम बुलिबा को सेठी तुमको सब भल लागिला गुड देलो कि वेरी गुड देलो बहुत बढ़िया देलो नहीं कि मनकर पार्किंग रे सुविधा नथिला बहुत भलो तो ओके ठीक ठाक बोली दे देलो क्लीनलीनेस तुमको लागिला जे
बहुत बढ़िया थिला तो वेरी गुड देल ए जिनस गुड़ाक हूँ कौन रेटिंग स्केल जोटा आम एवरीडे लाइफ रे भी यूज कर ओके सो या परे द लास्ट पार्ट को मु जाउची आई एम गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन तो आउरे बहुत गुड़े जिनस थिला रही गला बट स्टिल जेहेतु आम पाखे टाइम कम अच्छी सो आम 50टा जो क्वेश्चन अच्छी से आरंभ करुच्ची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस किए कहि परिबो दीज आर पीवाईक्यूज ऑफ 2019 OSSTT PYQs of 2019 OSSTT not a characteristic of intelligence boys are more important than girl कहला more intelligent than more मुश्किल कथा है गला छाड़ीबनी तमे नहीं कि हाँ very good identification poverty is derived the word puberty is derived from the Latin word puberty word टा Latin word कोठू derive करा जाय the word puberty is derived from which Latin word puberets is the right answer puberate pubertas बा आ गोटे गोटे जगह तुम देख PAUPERTAS ओके ना ये मत लगुच पोवर्टी पोवर्टी डिराइवेशन हाँ यहाँ पोवर्टी ये भी गोटे लाटिन वर्ड पोवर्टीटा गोटे लाटिन वर्ड पोपर पोपरटास रु डिराइव होती प्यूबरटास होची प्यूबर्टी ये भी लाटिन वर्ड ओके एनीवे आगु जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन्फ्लुएंस एडोलसेंस सेल्फ कंसेप्ट एडोलसेंस मानकर सेल्फ कंसेप्ट which of the following conditions influence appearance ru janibo friends appearance is the right answer yes which of the following statement is not correct about development not correct about development nature of development is determined at the time of birth coach जन्म रू डिटरमाइन हो केमती डेवलपमेंट हम एटा तो केवल हेरिडिटी केस जदि केवल हेरिडिटी प्रभावित करता हाँ करता किंतु व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट तो डेवलपमेंट अलाउज ए डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न ठीक अच्छे each phase of development has characteristic behavior all in हाँ तो डी केमती हम तुम राइट भाभी चिंती करो परफॉर्मेंस टेस्ट of intelligence is mostly useful for पांच नंबर मत लगुच भी यस बी लगुच इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एमती कौन समस्त तो हो पार परफॉर्मेंस टेस्ट ना चलो ठीक अच्छे डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विथ सहज क्वेश्चन आराम से करो यस अरिथमेटिक स्किल रे डिफिकल्टी टेलीविजन कम्स अंडर बहुत सिंपल क्वेश्चन
वेरी गुड ऑडियो विजुअल कहीं साउंड भी अच्छी और देखी भी पारुचे लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट बिगिन्स फ्रॉम लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टार्ट हुए very beginning to birth grade. Yes, multilingual education is for multilingual education का पाई दरकार जार लोकल लैंग्वेज और बुक रो लैंग्वेज अलगा तो लोकल लैंग्वेज और बुक रो लैंग्वेज अलगा कार ट्राइबल चिल्ड्रन आमे करि परिबा एठी आंसर यस ट्राइबल चिल्ड्रन को ट्राइबल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज अलगा रहे एंड बुक लैंग्वेज अलगा रहे तो तांको पाई मल्टीलिंगुअल एजुकेशन निहाती अधिका दरकार रहइबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट नॉट ए स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीरियड ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वेशन किसी कोई नथले से पियाजेट करो हां सेंसरी मोटर थिला परसेप्चुअल थॉट सिंबॉलिक थॉट थिला इंट्यूटिव थॉट थिला किंतु अरे साइलेंट ऑब्जर्वेशन कथा से कोई ना सुडी centrally sponsored scheme on school education is centrally sponsored quota पीएम पोषण वर्तमान रो ना मिड डे मील स्कीम और पीएम पोषण स्कीम यस स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन रो स्टेक होल्डर को माने सिंपल अछि स्टूडेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स an example of physiological motives is these are OSSTET PYQs physiological motives for example physiological quota food ta physiological no doubt it is food theory of hierarchical order of needs ranging from physiological needs to self actualization need was given by आराम से करि परिबो केते simple question है so physiological need safety need love and belongingness self esteem and self actualization by Maslow one basic factor influencing learning is कोटा इन्फ्लुएंस करे लर्निंग को रेडीनेस बहुत बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कोई स्टेप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट कोई कैरेक्टरिस्टिक अलगा एंड स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन अलगा ये स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग रहिबो नहीं कि तो बहुत बढ़िया possibility of biasness of the teacher is most in planning preparing tryout evaluation very good these are the 4 steps of test construction आंसर होचे ऐसे टाइप रे बायसनेस रो चांस होची काहे कि समस्तंकर आंसर अलगा हो इंडिविजुअल डिफरेंस रहइबो ऐसे टाइप टा ओपन एंडेड क्वेश्चन इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स इज कॉल्ड बहुत सहज एबे जस्ट डिस्कस करी छे at the end of teaching learning process at the completion of the summative national curriculum framework 2005 has been prepared by so the question Odoria Subhadra Ratikant Manas Vikas Santosh Dirgeshwari and Shriyati is the right answer in which of the following grading methods grades are provided on the basis of the relative position ranks of the students in their class or group
को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम रे ग्रेड्स गुडा को स्टूडेंट मानकर तांको क्लास रे पोजीशन हिसाब रे दिया जाए. Yes, it is relative grading method. Relative grading method. Absolute हो. Grades on the basis of the relative position of the students in their class or group is known as relative position कहला. तो relative grading हो. Got it? What is the time? समय केते अछि? ठीक है, समयटा केते अछि कहला? मो घंटा रे तो 0000 ही. समय रे अच्छा राति 12 हो. गधे दଳ ପୁରା ଆଜି ଜାଗୃତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି. ନକ୍ଚର୍ନାଲ animals. ଓହୋ ହୋ. Good. Okay. Which of the following is an advantage of rubrics? Okay. Advantage of rubrics. ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗାଅ ନହେଲେ ହବନି. ଶୀତ ଲାଗିଲା. ଶୀତ ଲାଗିଲାରେ ନିଆଁ ଟିକେ ହେଲେ ଲଗେଇଦିଅ. ଟିକେ ଲଗାଅ. ବହୁତ ବଢିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ. ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ କୁ ଜାଳି ଦେଇଛ ପୁରା. Today it is the term of exploring goals. Yes friends, बहुत बढ़िया participation. Thank you all for this performance. मजा आसला पुरा मजा आसला. निया टिके जे पॉइंट बाबा टिके पॉइंट दियो. Yes. And कहिची कोन advantages of rubrics रो कथा कहूच. Wow, fantastic. बहुत ही बढ़िया. बहुत सुंदर देखा जाउची. आज कमेंट बॉक्स को जाली देला पुरा. शुरू हरे निया लाइक देला पुरा कमेंट बॉक्स रे. बहुत बढ़िया राइट आंसर होची. rubrics as a tool of assessment may be well used as both self evaluation device or external evaluation device. Thank you for this fantastic response from all of you. निया लगा परफॉर्मेंस आपको ही कुहा जाए. आज पर्यंत तो मुस बेकार गप गपुथि. निया लगा परफॉर्मेंस आज भी देछो तम माने. Co-curricular activities are also known as co-curricular activities are also known as other curricular activities. Yes. Evaluation is definitely it is more comprehension. How to get detailed than measurement. Yes. CCE stands for EG1 continuous and comprehensive evaluation. बहुत बढ़िया. एबे डिस्कस करिए. One recent trend in evaluation in school education is कोटा recently introduce है. Yes friends, आराम से कर दो. चलो बहुत बढ़िया. It is grading system. बहुत बढ़िया. Thank you. Development means a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience. Who said this? Development कहले progressive change, progressive series of changes, maturation of experience रू जहाँ से. एटा EV हरलक कहते. Which of the following statement is true about development? देखो कोटा true अच्छी development विषय रे. बहुत बढ़िया शाबाश. Right answer which development is caused by both heredity and environment. Yes, interplay between heredity and environment. Complex interplay. बहुत बढ़िया शाबाश. The one word which best characterizes adolescence is change. The change is physiological, sociological, and psychological. Who said this? Yes, friends.
Wiggy and Hunt is the right answer. C correct. Hero worship is a very aji podiche prominent in which stage of human development? Exactly. Copy paste. Hero worship. କୋଉ stage ରେ ପଢିଥିଲ? वाह अद्भुत. Adolescence is the right answer. चलो. Which of the following is not a need of adolescent? देखो केते केते कनेक्ट करी पारुछ तमे. आज आमे केते कम पाठ पढिछे and तारी भितरु केते क्वेश्चन आसिलानी देखो. हाँ, each and every question. Author of Frames of Mind published in 1983. Yes. So once it is done, it is done, right? This session is once done means your work is done. The important developmental tasks for different phases in lifespan have been given by. Memory based question to आसीबो ही, and एठी Vygotsky is the right answer. Full form of SMDC सबुठु सहज क्वेश्चन तुम सिलेबस रे डायरेक्ट लिखाइतला SMDC जदि आमे आज कवर करने. And it a very common thing. SMC, SMDC, School Management Committee and School Management Development Committee. नहीं कि? Yes. Girls as a group tend to be happier than boys during. को टाइम रे girls are happier than boys. ये गोटे एमबिया क्वेश्चन एमडी गोटे गोटे आसे. एठी चाइल्डहुड ही करिवो. कहीं गैंग एज को जीवाटा ही ठीक रहिवो एठी. Okay, gifted children are also called. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो राइट आंसर होची टैलेंटेड आमे कहबा. Gifted children are also talented. All gifted are talented, but all talented are not gifted. एटा जानी था. All gifted children are talented. All talented not gifted. All gifted are talented, but all talented are not gifted. नहीं. Okay. Ministry of Human Resource Development was created in which year? 1985. एबे कौन हो जाइछि? Ministry of Education. Which of the following is not a leadership skill? आम लास्ट पार्ट रे अच्छे. मु आउ थरे समस्त को रिक्वेस्ट करी जो मैंने भी वीडियो को लाइक करिनो निश्चित रूपे वीडियो को लाइक करदब एंड फ्रेंड्स मान सहित निहाती रूपे शेयर करिवो. एंड ता सहित जो मैंने नुआ अच्छे एक्सप्लोरिंग गोल्स रे सब्सक्राइब करदब बोली भाबुची यूट्यूब चैनल को, सो दैट यू विल गेट ऑल द इंपोर्टेंट क्लासेस नोटिफिकेशन वैकेंसी एंड सब ट्रिक्स एंड टिप्स मोटिवेशन जहाँ भी दरकार अच्छी टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल एंड टू अचीव योर टारगेट. Not a leadership skill. Right. High power hackering skill. Which of the following is not a function of educational management personnel? Educational management personnel मानकर function नुहे. Yes, right answer हबो taking decision, consulting the parents. Parents को consultation नहीं कि decision न बा educational management personnel मानकर काम नुहे. बाकी सब जिनस आसीबो. ओके, किए कहबो hankering skill कोन? What is hankering skill? Yeah. देखिए मतलब ये कहबो hankering skill.
ओके एंकरिंग कौन हाई पावर ह्याट करियो कि नहीं नहीं एटा अलग थियो एंकरिंग HANKER नहीं कि एंकरिंग स्किल माने होची स्ट्रांग डिजायर टू हैव और डू समथिंग ओके लीडरशिप स्किल रे हाई पावर डिजायर और स्किल पावर कोड बसियो लीडरशिप रे पावर आसी जो बोली किछ माने नाही स्ट्रांग डिजायर टू डू समथिंग बोली कहउछ ओके ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन एटा कहले हमें डी हबो वन इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें जानि छी एनसीईआरटी रो रोल कोन तो एनसीईआरटी रो इंपोर्टेंट फंक्शन ता कोन रहइबो यस टू डिस्क्रिमिनेट to disseminate improved educational techniques and practices in school तो स्कूल रे केमती भलो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आसो सेटा इंपोर्टेंट हो ओके UGC was formally established by government of India by the act of parliament in the year UGC केबे एस्टाब्लिश हला तो राइट आंसर 1956 करिवा एज स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जांपल ऑफ कॉमनली एम्प्लॉयड क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल देखो क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल जोटा कॉमनली यूज करा जाए participative non-participative observation which of the following is characteristic of a good test characteristic कहि छी एठी हां से स्टेप भीतर सेठी कैरेक्टर भीतर स्टेप पुरै थिला सेठी स्टेप भीतर कैरेक्टर पुरै छी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन यू कैन स्कोर मोर देन 45 आउट ऑफ 50 ट्रस्ट मी ताठू कमी बनी 50 रु 50 भी हे परिबो ओके and सबु जगह रे 100% you can score in pedagogy validity कहीं planning preparing trying out and evaluation are the steps of good test but steps of preparing a test but validity reliability objectivity usability ये सब जिनस कोन these are characteristics days and nights are caused by motion of the earth what kind of question is this dash motion fill in the blank देखो एठी असला आमको कंप्लीट करिवार अछि तो कंप्लीशन टाइप होबो एठी अलग किछ नै ओके which state is the largest producer of copper in India what type of question is this आज जहां डिस्कस है छी एवरीथिंग इज देयर एंड एक्चुअली देखो ये कौन से संजोग नो हमें जहां पढ़ी छे सेटा ऑटोमेटिक क्वेश्चन रे आछी बिकॉज़ वी हैव कवर्ड मच ऑफ द थिंग मोस्ट ऑफ द थिंग राइट राइट आंसर होची सिंपल रिकॉल टाइप हमें रिकॉल करछे केवल the test is said to be valid if it measures valid बोली केते बेले कहबा मु कहली validity रे what it intend to measure what it intend to measure and what is ought to measure yes यह कौन मेजर करबा पई तैयारी हेछि ताकू जदि ठीक रे मापी देला ताहले ताकू हम वैलिड बोली कहबा which of the following is not a guiding principle of NCF 2005 not a guiding principle of NCF 2005 अद्भुत अद्भुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन बहुत फैंटास्टिक रेस्पॉन्स समस्तंकर and 2-3 more questions to go and we will end the session हाँ इच्छा तो होनी सकाळ पर्यंत चलेबार इच्छा अछि बट राति 12:30 हवा को जाउची तेणु हाँ so yes friends right answer होची students need to appear in examinations regularly regular examination process टाको एनसीएफ मना कला पहला कनेक्ट करो आउटसाइड लाइफ आउटसाइड वर्ल्ड को रोट लर्निंग रो राइट लर्निंग को शिफ्ट करो मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल करो सब ठीक अच्छा रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेजरमेंट रो जहां रिजल्ट बाहरला मु बारंबार कहि छी कोन न्यूमेरिकल्स नहीं कि यस
हाँ दीप्सिता मोर भी उठिवार अच्छी, जल्दी उठिवार अच्छी, कल बहुत कम। Okay, the results of measurement are always expressed in numbers, numerical how. For the assessment of learning and behavioral performance at the hands of the peers, which of the following tools may prove quite beneficial? आराम से कर लो, देखिए। For the assessment of learning and behavioral performance at the hands of the peers, which of the following tool may be quite beneficial? It is questionnaire. बहुत बढ़िया, thank you. Process and task of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principle? The process and task of measurement and evaluation in the field of education. माने केते सुंदर लागुची आज मते लागुची तो तुम सब क्वेश्चन राइट आंसर कर देथिबो 50 रो। हाँ, the last one, the main objective of diagnostic test is, diagnostic test रो objective कौन? ओह मुश्किल अच्छो पूरा कौन छाड़ू न। हाँ, क्लास तो छाड़िलनी गोटे जगह रे नीरू प्रकाश लक्ष्मण रोजी प्रणति सुनांडा हैं कौन रही सागरी दीप्सिता जयंती अरे वाह अमृता पूरा रोजा विकास रुचिस्मिता विश्वजीता अंकिता जयंती स्वाति मधुस्मिता उज्ज्वल संध्या स्टाइलिश मनसून अमृकुल अरे वाह तनुजा प्रणति वर्षा बढ़िया रोजा सुभद्रा पूर्वी जयंती स्वाति कौन न कर wow, fantastic participation by all of you. To find out the nature and causes of learning problems of students and formulate a plan and केमिति remedial action नबा से मैं plan करिवा diagnostic test रू हाँ रतिकांत कौन रे श्रावणी प्रीतम अंकिता मधुस्मिता समस्ते निश्चय फ्रेंड्स मान सहित यहाँ शेयर कर वीडियो को समस्ते स्टाटस रे लगेब समस्ते सोशल मीडिया रे शेयर कर समस्ते लाइक सब्सक्राइब करने को भूलिबन। एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लिकेशन रे जदि जॉइन करियार अछि फॉर मोर एंड डिटेल प्रिपरेशन यू कैन जस्ट गिव मी ए व्हाट्सएप मैसेज इन दिस नंबर। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्तंकर दीपा राणी शुभश्री विकास संतोष चलो ठीक अच्छी लक्ष्मण सुभाषिष उत्कलिका तरुण वर्षा विश्वजीता प्रणति सागरी सुचिस्मिता जयंती दीपा प्रकाश प्रीतम स्वाति झरणा रोजी दुर्गेश्वरी दिव्य ज्योति सुभद्रा सुचिस्मिता चिकुन लक्ष्मण सुमन श्रावणी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन अन्नपूर्णा ओके 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 प्रभात थैंक यू निवेदिता रुचिका थैंक यू सुचिस्मिता विकास बढ़िया पार्टिसिपेशन लक्ष्मी प्रिया संध्या राणी स्वाति सुभद्रा बढ़िया बहुत बढ़िया धन्यवाद समस्त को मेनी मेनी थैंक्स मजा आसिला अच्छा एमती कथा ओके थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक रेस्पॉन्स पैशंस कंप्लीट कवरेज कोऑपरेशन कोलैबोरेशन चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक starting from Piaget to Howard Gardner of Howard University, Bloom's taxonomy to growth and development, individual difference to diversity in the classroom, teaching learning material to SMC SMDC. कौन आज न पढ़ आ या परे जस्ट क्वेश्चन को कंसंट्रेट करिकी जदि फुल कंसंट्रेशन रे आंसर कर ताले गोटे मार्क कोटी कटियार ना बुझिल ठीक अच्छे so most of the things we have done so hope you will do great in your examination and all the best for OSSTT and LTR examination that are coming soon all the best for B.Ed entrance CUET B.Ed entrance and all the upcoming examination where pedagogy education is a part. So hope you are doing great and thank you everyone for this
complete dedication and participation and the enthusiastic fire wala session. And बहुत धन्यवाद समस्त को from the bottom of my heart, and thank you Easy family. We are all together till we make 2025 the year of success. धन्यवाद, thank you, शुभरात्रि, good night, आराम से रेस्ट करो एंड सकाळु पुणी लागी पड़िबा हाँ काम रे जोरदार. धन्यवाद, take care, good night. This is I think the longest session ever. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା 5+ ଆୱାରର ଥିଲା, and this will be next to that, or ଏଟା ତାକୁ କ୍ରସ୍ ବି କରି ପାରେ. yes, it may cross that, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରେ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିବ. ସେ ଫୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଥିଲା, and this is the longest in pedagogy session, longest pedagogy session. Thank you everyone, take care, good night, जय जगन्नाथ.